क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 4
सूचीबद्ध दस्तावेजों को जितेंद्र समक्ष चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं। शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने में तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं। हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, Honorable members, please go back to your seats. Honorable members, please go back to your seats. Let the budget discussion start. The House stand adjourned to meet again at 2 p.m. Item number 2, Shri Piyush Goyal ji. Sir, with your kind permission, on behalf of my senior colleague, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name as serial number 2 in the revised list of business. Item number 3, Dr. Virendra Kumar. राष्ट्रपति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री प्रताप राव जाधव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने वरिष्ठ साथी श्री प्रताप राव जाधव की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची में उनके नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर सूचीबद्ध दस्तावेजों को पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, श्री जितेंद्र प्रसाद। Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 6, श्री कृष्ण पाल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7, श्री रामनाथ ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, श्री नित्यानंद राय। महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभापति पर रखता हूं। आइटम नंबर 9, श्री वी सोमन्ना जी। अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 12, श्री सुरेश गोपी जी। Respected Chairman sir, with your permission I rise to make this statement in the House listed against my name at serial number 12 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 13, श्री भगीरथ चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 13 में उल्लिखित कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2026-27 की निर्गत परिणामी अनुसरण रूपरेखा की प्रतियां हिंदी तथा अंग्रेजी संस्कृत सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 14, श्री जॉर्ज कुरियन। स्पीकर सर, परमिशन I rise to lay the papers listed against my serial number 14 in today's revised list of business. आइटम नंबर 15, श्री रॉबर्ट ब्रूस। An English version of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers as listed against my name in today's business of list. आइटम नंबर 16, श्री रॉबर्ट ब्रूस। Sir, I rise to lay a copy each of the Hindi and English version of 4 final action taken statement of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers as listed against my name in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 17, श्री जितेंद्र प्रसाद। So, respected sir, with your kind permission, I make the following statement. The status of implementation of recommendations contained in the 180th report of the Standing Committee on Commerce on comprehensive strategy to map major products and countries to maximize exports and minimize imports. Honorable members, please go back to your seats. Let us start discussion on budget. Sir. Speaker sir.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేపు మున్సిపల్ ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత జిల్లాలోనే ఈరోజు అనేక రకాలుగా దౌర్జన్యాలు చేస్తా ఉన్నారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఈరోజు కిడ్నాప్ చేస్తా ఉన్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థి ఈరోజు సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత జిల్లాలో దౌర్జన్యము, దోపిడీ, కిడ్నాప్లు, డబ్బులు అంచనాలు, ఈ రకంగా అత్యాచారం చేస్తా ఉన్నారు. దీని మీద సవాలు తీసుకొస్తున్నాను. ఖండించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. किरण राजू जी, सर ये बजट का समय है. मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए. हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं. नाम भी पुकारे हैं. शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है. वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने के तैयार है. कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं. हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं. पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं. नुकसान सबका हो रहा है. मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरीबा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है. बजट पे चर्चा सीधा सीधा शुरू होना चाहिए. अध्यक्ष जी, honorable members, please go back to your seats. Honorable members, please go back to your seats. Let the budget discussion start. The House stand adjourned to meet again at 2 p.m. Item number 2, Shri Piyush Goyal ji. Sir, with your kind permission, on behalf of my senior colleague, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name as serial number 2 in the revised list of business. Item number 3, Dr. Virendra Kumar. राष्ट्रपति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें. आइटम नंबर 19, केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा. डॉक्टर शशि थरूर जी. Thank you very much, Mr. Chairman. May I have your permission to speak seated? I am afraid I have a fracture on my foot. You are permitted, sir. Thank you, sir. Thank you for granting me the honor of voicing on behalf of the Indian National Congress my perspective on the union budget presented by the Honorable Finance Minister, whom I'm glad to see in the chamber. Last year, when I was standing in this very place, I had remarked that the 2025 finance bill reminded me of the garage mechanic who said, "I couldn't fix your brakes, so I made the horn louder." Looking at the budget this year, I am saddened to observe that though the horn has been muted, that there hasn't been enough movement. For this budget too appears to be a squandered opportunity, equivalent to rearranging the airbags on a crashing car while assuring the passengers that the chassis is sturdy and they will feel better afterwards. This budget is praised for prudence, but prudence without vision or fairness is hollow. It ignores unemployment, it ignores rising living costs, and it ignores inequality, offering little to address the real struggles and aspirations of the Aam Aadmi. The government speaks endlessly of welfare, but its spending tells a very different story. Behind flashy announcements like chronic underutilization and administrative failure. Media reports show that of over 5 lakh crore budgeted for 53 major welfare and infrastructure schemes last year, barely 41% was spent in the first 9 months of the fiscal year. Take the Jal Jeevan Mission, allotted 67,000 crores, it managed to spend an astonishingly low 31 crores in 9 months. The touted
PM Schools for Rising India scheme spent only 473 crores out of 7,500. More shocking of all, the Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyudaya Yojana, meant for the socio-economic upliftment of scheduled castes, utilized out of 2,140 crores, merely 40 crores. This is not governance, Mr. Chairman. This is headline management. Where promises are loud, like that horn, budgets are grand, but delivery is conspicuously absent. The budget this year has landed with a thud, not because of what it contains, but because of what it omits. Behind claims of fiscal prudence lie a more uncomfortable reality. The Indian state is shrinking, not by design, but by compulsion. Government expenditure as a share of GDP has declined over the past decade, briefly rising during the pandemic before reverting close to the 2016 levels, driven by stagnant revenue mobilization. Tax receipts have remained flat relative to GDP. Disinvestment has underperformed, and non-tax revenues increasingly rely on extraordinary transfers such as Reserve Bank of India dividends, an unsustainable substitute for a stable revenue base. More troubling is the shift in the tax burden towards individuals, bearing a greater share of the tax burden than corporations, despite sharp post-pandemic profit growth. To elaborate further, in fiscal year 2017, corporate taxes were 3.2% of GDP, personal income tax was 2.3% of GDP. In fiscal year 27, that is 10 years later, they are projected to be 3.1% for corporates and 3.7% for personal income tax of individuals. So your revenue is coming disproportionately from the individual taxpayers. Fiscal consolidation since COVID has been achieved largely through expenditure compression, presenting necessity as virtue and compulsion as choice. Within these constraints, the government has relied on low-cost measures such as tax simplification and targeted incentives, but the budget offers no credible medium-term framework linking spending to employment and productivity. Capital expenditure is emphasized, yet weak demand, stagnant wages, high youth unemployment, compressed welfare spending, and inadequate devolution to states all persist, leaving India fiscally disciplined but developmentally constrained, without the revenue capacity or strategic clarity to deliver real economic security for the Aam Aadmi. This is why, Mr. Chairman, this is what I call an underwhelming budget. Now let me look at specific sectors. M.S. Swaminathan had famously said, if agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right. And this, I believe, is as good a starting point as any. Mr. Chairman, it's high time we stop treating agriculture as some issue that will sort itself out, because 46.1% of India's workforce and 60% of our population depend on agriculture and allied activities. Despite agriculture contributing 16 to 17% of GDP, it receives only 3% of this union budget, 1.62 lakh crore, which is a 5.1% cut from last year's 1.71 lakh crore. Now, this underinvestment is all the more alarming, Mr. Chairman, given the existential threats facing Indian agriculture today. This sector, vital as it is increasingly threatened by climate change and misaligned farming practices. Nearly two-thirds of the country are prone to drought, and the toll of weather-related disasters has been severe. Yet the Fasal Bima Yojana, meant to protect farmers, has failed. Flawed assessments and opaque settlements have reduced compensation to token amounts. 1 rupee, 3 rupees, 21 rupees, as your minister himself has acknowledged, turning protection into systemic injustice. Matters are worsened by cuts that leave the scheme at its lowest budget allocation in 8 years, fueling fears that new initiatives will repeat a familiar cycle of announcement without commitment, as seen last year when Gradley announced missions on cotton technology, pulses, vegetables, fruits, and hybrid seeds, all quietly faded with zero funding in the revised estimates. These announcements are like modern courtships, promises without commitment. That's what this government does to us. At a time when farm distress is deepening,
the budget silence on revising the PM Kisan Nidhi disbursement speaks louder than any promise made elsewhere. हमारे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा तो आपसे पूरा हो नहीं पाया, कम से कम उनकी सम्मान निधि ही बढ़ा दीजिए। पिछले 6 सालों से ये सिर्फ 6,000 रुपए पर ही अटकी हुई है। While there is an imperative need for breakthroughs in research and development and AI-driven agricultural technologies, paradoxically, funding allocations for agricultural research and education have dipped by 4.8% from the previous year's 10,466 crore, that's down to 9,967 crore, decreasing precisely when the finance minister is announcing new AI schemes. And frankly, madam, touting a new AI app when the majority of our farmers can't afford fertilizers, harvesters, or tractors seems rather detached from reality, except of the virtual kind. Now, this budget speaks at length about crops from cashews to coconuts, yet ignores one of agriculture's most persistent concerns, pepper. Once hailed as black gold, the sector is now in distress in my state. In Kerala, which is one of the country's leading producers of pepper, output has fallen from 40,000 plus tons to 30,000 tons and is projected to decline by a further 28.7% in the foreseeable future. The uncomfortable truth, Mr. Chairman, is that our spice market faces such deep challenges today that if history repeated itself, the British might not even bother looting us for it. Next to unemployment. This House has had this conversation far too many times. We recite the same statistics, express the same concerns, and then move on, while unemployment quietly worsens. The data at the end of 2025 makes one thing unmistakably clear. Rural unemployment has stagnated at 3.9%, while urban unemployment continues to rise, ending at 6.7% in December. The crisis is now starting to concentrate where aspirations and frustrations are colliding in our cities. And yet even the centre's flagship responses have failed to rise to the moment. Under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, barely 41% of certified candidates secured placements. More than half of those jobs were concentrated in just 5 sectors. And of the 1,380 crores released, 278 crores remained unutilized. The Prime Minister Internship Scheme tells a similar story. Allocation 10,831 crores. Ministry spends 526 crores in the first 9 months. This pattern is recurrent, sir. In fiscal year 25, allocations were cut after large unspent balances, with actual spending at just 680 crores. So much for creating employment when we can't even spend the money allocated for the job of creating employment. And what of gig workers, the backbone of our new economy? There is no mention of them in the budget. Their welfare has been deprioritized at a time when unrest grows over the absence of clearly defined benefits, time-bound claims and appeals mechanisms, and mandatory disclosure of work hours, earnings and deductions. This silence further weakens the gig workers' access to social security in practice. Any discourse about the workers of our country stands incomplete without a discussion about Manrega, now replaced by the ambitious VBG Ramji Act. It increased guaranteed work days from 100 to 125, introduced weekly wage payments, but at the same time it hollowed out the legal employment guarantee. While Manrega was demand-driven, fully centrally funded for unskilled wages, and rooted in decentralized planning, the new Act caps central funding through state-wise normative allocations, shifts 40% of the costs, the wage costs, to most states, and allows the scheme to be paused for up to 60 days during the peak agricultural seasons, shrinking the real window of guaranteed work. Once a state's allocation is exhausted, workers' statutory right to employment effectively ends. This converts an open-ended rights-based program into a budget-restricted, centrally rationed scheme where fiscal ceilings override legal entitlements.
The VB Ramji scheme received a massive allocation of 95,000 crores in this budget, yet it has a major overlooked flaw that also needs to be addressed as soon as possible, Madam Minister. It attempts inclusion, but perhaps unintentionally drives technological exclusion. Manrega trusted the panchayats and gram sabhas to plan work based on local needs and community strengths. But the Ramji Act mandates dashboards with GIS tools, PM Gati Shakti layers, central digital stacks. Local priorities are filtered through a Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, making biometrics, geotagging, dashboards, and AI audits statutory requirements. Thus, for millions of tech workers, for rural workers, one tech failure will mean exclusion without appeal and work without skill considerations. Now, when you have millions struggling to find work, Mr. Chairman, the least the government can do is to ensure that they move freely across the country to seek opportunities. But here too, Mr. Chairman, we see a pattern of neglect that is as consistent as it is shameful. Nowhere, I might add, is this neglect of connectivity clearer than in Kerala. Despite repeated demands for new railway lines to decongest existing routes, the state finds no mention in the Finance Minister's much-touted 7 high-speed railway corridor initiative. One is compelled to ask, does strategic connectivity end where political inconvenience begins? The consequences of this neglect are borne daily by passengers and railway staff alike in my state. Chronic overcrowding has pushed passenger capacity to dangerous limits. Sanitation has visibly deteriorated. Even basic facilities remain inadequate. It's telling, Mr. Chairman, that locomotive pilots entrusted with the safety of thousands are forced to work without assured access to toilets. For passengers, the experience is no better. Overcrowded coaches, unsanitary conditions, and a steady erosion of dignity that no glossy brochure can conceal. These failures are structural, they're not incidental. The railway sanction strength across categories stands at over 2 lakhs, yet only about 1.59 lakh employees are in service. This staffing deficit compromises safety, delays operations, and stretches frontline workers beyond reasonable limits. A railway system cannot run on announcements alone. Continued underinvestment in capacity, personnel, and basic human conditions risks turning the nation's lifeline into a symbol of administrative exhaustion. And it's not just railways, Mr. Chairman. We hear of national corridors and maritime ambitions, but Viഴിഞ്ഞം Port, India's gateway to global trade, our only port that can host the world's largest container ships, is treated as a local afterthought, with no central support announced for the road and rail connectivity that is hampering its potential as a world-class transshipment port. Similarly, while 20 new national waterways are to be operationalized, it remains unclear how many, if any, will benefit Kerala. Ship repair ecosystems are promised in Patna and Varanasi, but not in a state with 44 rivers and a rich inland waterway network. Our coastal communities, Mr. Chairman, face the deadly peril of sea erosion that has already leached so much of our territory into the sea. But there is no money for the sea walls and groins so essential for coastal protection. I have been raising this repeatedly in the House over the last 15 years. The centre tells me it's the state's problem. The state says it has no money. So we continue losing our territory, our seafront, to the marauding ocean. The lives and livelihoods of our fisherfolk, mostly living below the poverty line, are apparently of no concern to our budget makers either. And if maritime connectivity disappoints, Mr. Chairman, should we rely on the air? The regional connectivity scheme, which promised to give wings to the armed Nagrik to lift aspirations off the ground, make the skies accessible to all, yet today, many of those promises lie grounded. Nearly a decade on, at least 11 airports launched under UDAN have seen flights taper off or disappear altogether. Runways without aircraft, terminals without passengers, skies conspicuously empty. Last year we were promised a modified UDAN with 120 new destinations and 4 crore passengers. But in this budget, Mr. Chairman, UDAN does not even earn a mention.
Not just that, but for fiscal year 24-25, a total of 81 airports owned and operated by the Airports Authority have incurred financial losses. Duopolies have led to declining service quality, with the Indigo fiasco exposing the vulnerabilities of our airline industry. When aviation policies cannot stay airborne beyond announcements, one must ask whether this government is still committed to democratizing the skies as it claims, or rather as the minister claimed last year. Mr. Chairman, if connectivity cannot move people physically, one would hope education might lift them socially and economically. But here too, we see a betrayal of promises. India speaks of global excellence while presiding over domestic neglect. The National Education Policy promised 6% of GDP for education. Years later, spending remains at barely 4%, with the Union government contributing only 0.4% and leaving states to shoulder an unsustainable burden. The consequences are visible and damaging. Over 1.5 lakh schools lack electricity, thousands lack toilets, ramps, or basic facilities for children with disabilities, and the foundations of learning continue to crumble even as we advertise world-class universities. This neglect hits the most vulnerable the hardest. For scheduled castes, enrollment falls from 99% at the preparatory stage to 70% at the secondary level. For scheduled tribes, from 99% to just 67%. These numbers reveal a system where poverty pushes students out of classrooms and into premature work. We are told artificial intelligence will shape our future, yet only 52% of government schools have functional computers, just 58% have internet access. Where is artificial intelligence going to come to these schools? Technology without access is not transformation, Madam Minister. It is exclusion by design. Continued underfunding paired with grand promises will not uplift our children. It will mortgage India's future at a discount. Mr. Chairman, if education is one pillar of development the government should care about, health is surely the other. Budgets may speak in numbers, but nations are built in flesh and blood. And any budget serious about India's economic potential must invest in human capital, because healthcare is not charity, it is foresight. Yet public health spending remains below 2% of GDP, missing even the government's own promise of 2.5% after COVID. An allocation of over 1 lakh crore to the health ministry may sound impressive, but ambition must be measured in proportion, not in numbers. The consequences are now visible beyond government hospitals. Since 2019, over 600 private hospitals have exited the Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana, revealing the fragility of coverage without delivery. Insurance that arrives late is merely distress deferred. Meanwhile, the fundamental determinants of health, clean air, safe water, nutritious food, and mental well-being continue to deteriorate even as disputes rise and mental health indicators worsen. A nation that seeks economic greatness cannot afford to economize on the health of its people. While you propose, Madam, exempting 7 additional rare disease drugs from import duties, your centers of excellence for rare diseases are few, unevenly distributed, and unable to utilize even the insufficient funds allocated, leaving thousands of patients to die every year for lack of treatment. And nowhere is this pattern of neglect more glaring than in the case of the long-promised AIIMS in Kerala. First year of the NDA government, the promise was announced. The promise still remains unrealized. A state with one of the strongest public health records in the country continues to wait, while this budget, like its predecessors, offers neither clarity, nor timelines, nor urgency. 22 AIIMS have been sanctioned across India, Mr. Chairman, but when it comes to Kerala, the silence is deafening. And AIIMS that is not even a dot on a map is not institution building, it is institutional disregard. Kerala does not lack need, capacity, or credibility. What it lacks, it seems, is visibility in this government's priorities. Why, Mr. Chairman, is Kerala invisible to this government? I'd like to know. Equally telling is the silence on air pollution. After months of public outrage and choking headlines, the finance minister's speech found space for everything except the air we breathe.
The National Clean Air Program still runs on 2009 standards, weaker than the WHO's PM 2.5 norms, even as pollution control funding has been cut from 1,300 crores to 1,091 crores this year. A budget that saves on rupees but ignores the air its citizens breathe reduces development to bad arithmetic, not good progress. Mr. Chairman, the announcement of 3 new National Institutes of Pharmaceutical Education and Research, or NIPA, raises a troubling question of balance and intent once again. I'm sorry to return to my state, but Kerala, despite one of the country's strongest public health ecosystems and a proven record in healthcare delivery, once again went unaddressed, even as NIPAs are concentrated and clustered in northern and eastern India, and a single institute in Hyderabad is expected to serve the entire south. This imbalance is not new. I flagged it 2 years ago when I was chairman of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers. At a time when over 60% of India's 8,500 MSME drug units lack support to adopt even good manufacturing practices, such skewed institutional allocation risks shrinking rather than strengthening our manufacturing base. It also does little to reduce our dependence on China for nearly 2/3 of key active pharmaceutical ingredients, or to correct India's anemic R&D investment of just 0.64% of GDP, with even large pharma firms spending under 1% of net sales on their research. The result is predictable: limited innovation, continued reliance on low-cost biosimilars, and life-saving biologics priced far beyond the reach of most Indians, where public health spending remains so much below the GDP target of 2.5%. Without correcting regional imbalance and backing institutions with serious R&D support, this NIPA initiative risks sounding visionary while delivering exclusion. Now, all of these shortcomings in the sectors I've surveyed, in infrastructure, education, healthcare, might have been bearable if at least the economic burden were distributed equitably. But as per the UNDP Inequality Adjusted Human Development Index, India ranks the lowest of all BRICS countries at 130. The silent shock absorbers of this economy are the middle class. They are now cracking under the strain. The symbols of success we see today, smartphones, cars, lifestyle assets, are only sustained by EMIs, Mr. Chairman, for the middle class, leaving the Aam Aadmi little room for health insurance, for savings or medical emergencies. Credit cards are once a luxury or a convenience. They've now become a lifeline. Defaults rose 28% last year to 6,742 crore rupees, not because Indian households are reckless, but because they're running out of room to breathe. With 2.9 lakh crore rupees in outstanding dues and 10.5 crore cards in circulation, borrowing has become the price of staying afloat. Even as households struggle, the tax burden has quietly shifted onto them. Personal income tax now contributes over half of all direct taxes, while the corporate share declines, as I mentioned earlier. And while last year's budget at least acknowledged middle-class housing stress through the Swami Fund, this budget offers only silence. Inflation may look subdued on paper, but for citizens, the cost of living has merely been shifted. When the state fails to provide clean air, safe water, and uncontaminated food, households are forced to buy privately what should be public goods: air purifiers, water filters, basic safeguards. This burden is unequal, Mr. Chairman. The privileged can protect themselves, while the poor remain exposed. A nation cannot grow by exhausting the very people who sustain it. The Aam Aadmi, who are financing this government, are being sent deeply troubling signals on taxation. A one-time concession allowing special economic zone manufacturing units to sell domestically at reduced duties is little more than tokenism when the SEZ ecosystem itself is collapsing, with hundreds of zones shut and employment in free fall.
More disturbing still is the withdrawal of income tax exemption on disability pensions for defense personnel. This move weakens social protection for disabled veterans who risk their lives for our country and draws an indefensible line between service-related disabilities and abdication of the state's moral duty to those who have made such sacrifices for the nation. Now, I'd like to acknowledge that amid this disaster and disorder, there has been some measure of fiscal discipline. The fiscal deficit has edged down from 4.5% to 4.4%. Minister speaks of a further reduction to 4.3%, and that sounds reassuring on paper. But I've been in this House long enough, Mr. Chairman, to remember when her predecessor, the late Arun Jaitley, as Finance Minister, set a target of 3.5%. We're nowhere near that benchmark today, yet we seem eager to applaud for settling at a much higher number. Perspective matters, sir, and without it, these figures lose their meaning, especially when they fail the only test that truly counts, whether the Aam Aadmi has more money in his pocket, whether he has wages that keep pace with prices, whether he or she has a life that is becoming easier. Fiscal prudence cannot be celebrated in isolation when household budgets remain under strain and economic security is elusive for millions. In this budget, the Union government has once again doubled down on an infrastructure-led growth strategy, raising capital expenditure to 12.2 lakh crores on the assumption that public capex will crowd in private investment and generate jobs. But this promise has yet to materialize. In fact, it hasn't materialized at all during this government's tenure. Private investment has throughout remained sluggish. Labor-intensive sectors are crowded out by capital-heavy projects. Welfare spending has been compressed, and key subsidies and social sector allocations fall short of stated goals. The burden has increasingly been pushed onto the states without adequate devolution of tax revenue. Meanwhile, unemployment, particularly amongst educated youth, remains distressingly high, and capacity utilization continues to remain below levels that would trigger a genuine private investment cycle. In this context, the capex-centric approach appears less like a strategy for inclusive growth and more like a gamble that ignores weak demand, joblessness, and the lived economic distress of the ordinary citizen. Mr. Chairman, no nation can develop on slogans or headlines alone. India's investment in research and development remains stuck at 0.6% of GDP, not only below advanced economies, but even below several emerging ones. China invests about 2.4%, Brazil even over 1%, the US 3.5%, South Korea 5% of GDP. A country that aspires to be a manufacturing and knowledge powerhouse cannot afford to treat research and development as an afterthought. I would urge the Minister to elevate R&D as a national priority. Now, on urban cities, on our cities, it should be pointed out that the hesitancy in innovation is reflected in the Smart Cities mission, which has become a reminder of unfulfilled promises. A decade after Smart Cities was announced, deadlines have been repeatedly extended from June 23 to December 25, no real change on the ground. Claims of 96% completion certainly ring hollow for somebody from Thiruvananthapuram or Warangal or Silvassa or Port Blair, because they're all incomplete. Large parts of the northeast continue to lag, leaving even the Parliamentary Standing Committee unconvinced. Instead of transforming urban life, the mission has largely polished a few elite enclaves, while basic services for millions remain untouched. I can't not mention the new interim trade agreement with the United States, sir, because that has just come out after the minister's speech. It looks less like a free trade agreement than a pre-committed purchase agreement that overturns every principle of reciprocity. How can we speak of a reciprocal tariff of 18% on one side and 0% on the other? At a time when India's total bilateral trade with the US stands at roughly $130 billion, and we have a trade surplus of only $45 billion, we have surprisingly promised to buy $500 billion worth of American goods over 5 years. This effectively converts a surplus into a long-term deficit by executive assurance rather than by market demand. No major economy has ever neutralized its own trade leverage in this manner.
While the US continues to impose import tariffs of up to 18%, we have committed ourselves, apparently according to this joint statement that I've been seeing here, joint US-India statement, to impose tariffs up to 18% on Indian exports, and we to slash tariffs to near zero levels, open agriculture, dilute data localization, soften intellectual property safeguards, and even redirect strategic energy imports, especially away from Russia, to meet purchase targets. Now, this is not strategic balancing, it is economic preemption. Parliament has neither been told how farmers, MSMEs, and domestic industry will be protected, nor why India has voluntarily surrendered its negotiating power without securing proportional market access. Without securing proportional market access or policy space in return. I know the government will say, wait for the final agreement, it's coming in mid-March, but let them be aware these concerns exist right now, sir. Yes. The government's claim that India has secured a better deal than China, Vietnam, or other Asian economies does not withstand scrutiny. While India has obtained a tariff reduction of 1 or 2 percentage points from them, no East Asian economy has agreed to deliberately dilute its trade surplus with the US through guaranteed purchase commitments. On the contrary, China, Vietnam, and several ASEAN countries have actually expanded their trade surpluses with the US, even amid heightened trade tensions. And this ambiguity, Mr. Chairman, has a direct budget on the credibility of, has a direct bearing on the credibility of the budget itself. When both the Minister of Commerce and Industry and the Minister of External Affairs were questioned on these commitments, they were really offered no clear explanation of their scale, timeline, or fiscal implications. Now, the reason I mention this in the context of the budget is that key budgetary assumptions on trade balances, external financing needs, and overall macroeconomic stability rest on information that the Parliament does not possess and has not been given. A budget framed amid such uncertainty is not just incomplete, it asks this House to approve numbers without knowing the obligations that may soon overtake them from this trade agreement. Now, I do want to say that when the two ministers play ping pong with each other, saying it's not in their mandate to answer the question, each one attributes it to the other, then that looks like a rather disappointing game, because when no minister claims ownership of something like this, accountability disappears, and Parliament is left staring at a budget that conceals obligations that the government seems to lack the courage to admit openly. In short, Mr. Chairman, the real weakness of this government's budget lies in its implementation, where rhetoric is not matched by reality. Let me quote that famous verse once again by Mirza Ghalib, which I think perfectly captures our reality today as reflected in this budget and its aspirations. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है. That seems to be what we have had inflicted upon us. We know the reality behind these claims, these tall promises, these narratives of model governance, but they're not policies grounded in outcomes, they're carefully curated illusions. Glossy schemes, utopian projections, they might soothe the imagination, dil to behlata hai, but everyday life for the ordinary citizen of India has remained unchanged. Hope is repeatedly sold, but delivery remains perpetually deferred. Viksit Bharat by 2047 is an admirable ambition, safely more than 2 decades away. This budget offers no credible pathway to reach it. Instead of narrowing the gap, it widens it. Unemployment continues to rise. Poverty hardens. Jobs remain scarce. Wages remain stagnant. Small businesses, already gasping for relief, are smothered under layers of compliance, while informal workers, gig workers who sustain our economy with their labor are pushed further into invisibility and insecurity. Government promises railways, yet stations crumble. They speak of flight, yet Udan has flown away. Our pepper, once celebrated as black gold, withers under neglect. Our long coastline stretches endlessly, but is ignored when it comes to protecting it. Education is curtailed precisely when it should be expanded, while the rhetoric of world-class technology and AI grows louder. 1.5 lakh schools still function without electricity, yet Viksit Bharat is spoken of as if the lights are already on.
When vision is severed from reality, it ceases to be aspiration and becomes merely an illusion. A truly Viksit Bharat will not be built on slogans, Mr. Chairman, not built on speeches or symbolism, but on delivery that reaches the last citizen of India. Turning promises into outcomes is not a favor, it is not a choice. It is our kartavya, it is your kartavya, may I say to the government. Thank you, Mr. Chairman, and Jai Hind. माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी। It is my pleasure and privilege to talk about the Union budget for the financial year 26-27. Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity. At the outset, I commend Honorable Finance Minister Madam Nirmala Sitharaman for giving to this country of 1.4 billion people her 9th consecutive budget, a budget which reflects her commitment, the commitment of the government, the conviction of the government, and the consistency of the government. As I stand here to speak, I am reminded of a few words from Rigveda, the oldest of our Vedas. Sangachadvam sangvadadvam sangvo manansi janatam. हम साथ बोले, हम साथ चलें, हमारी भावना और हमारी सोच एक दिशा में हो. My dear colleagues, we are all moving towards one and only one goal in the country, and the goal is to make India Viksit Bharat by 2047. And I can say with all conviction at my command that this particular budget of the financial year 26-27 is definitely a very strong step in our common journey. For the sake of clarity, I must say, my dear friends, that our Finance Minister, Madam Nirmala Sitharaman, framed the blueprint around 3 kartavyas. Number 1, to accelerate and sustain economic growth. Number 2, to fulfill the aspirations of the people and build their capacities. And number 3, to align with our core objective of Sabka Saath, Sabka Vikas. बंधुगण, यह ऐतिहासिक बजट सिर्फ संख्याओं का संकलन नहीं है, यह विकसित भारत की यात्रा में हम सब के लिए एक माइलस्टोन है, एक निर्णायक मील का पत्थर है. यह हमारी आर्थिक स्थिरता, सुधार और हम सब के सामूहिक आत्मविश्वास का दस्तावेज है. My dear colleagues, this particular budget of the Union government comes at a time when India is actually moving fast in its growth trajectory, and we must accept and acknowledge this. This is the first budget of the second quarter of 21st century, and that's why it's a very important budget for all of us, for all 1.4 billion Indians. Friends, we are aware of the fact that in 2014, we were the 10th largest economy, and at this juncture, our macro fundamentals are very strong. We are the 4th largest economy, bypassing Japan. We are going to be the 3rd largest economy, bypassing Germany very soon, and our forest reserves are very high. Our exports have gone beyond $800 billion, and I must say here, we have been all listening about inflation rate. The inflation at this juncture, December 25 figure, we are at 1.7%. And here while I say this, I must say that between 2011 and 2014, the average inflation of this country was 9.8%. I must say this, and I think all of us sitting in this house must appreciate this. Friends,
The unemployment rate, all of us have been talking about the unemployment rate. It's declining every day, and at this juncture it is 4.8%. We must realize this. हमारा देश वैश्विक निवेशकों, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य की तरफ उभर के आया है, और हम सबको समझना होगा कि इस तरह की जो आर्थिक स्थिति है, जब विश्व में हमारी प्रशंसा हो रही है, हम मजबूत जमीन पर खड़े हैं, यह कोई संयोग नहीं है। यह हमारे अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, संरचनात्मक सुधारों और स्पष्ट नीति का प्रमाण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच, की दूरदर्शिता और मार्गदर्शन को मैं नमन करती हूँ। The analysis of the budget of financial year 26-27 makes it abundantly clear that the Indian government has chosen the path of long-term growth. And this is not growth by impulse, this is not short-term stimulus. This is possible because of sustained, continuous investment in infrastructure, in institutions, in industrial capacity and upskilling. We must realize this. And these four things which I talked of are extremely important when a country aspires to become a developed nation. As was told by Honorable Madam Sitharaman in her speech, the expenditure today stands at 53.5 lakh crore. We must remember this. And the fiscal deficit stands at 4.3% of the GDP. My dear friends, we are in a very difficult global settings. I think all of us are aware of this. All my esteemed colleagues who are present in this house, it's an age of global uncertainty. And in this age of fractured global order, the government of India has decided to keep building. Charai veti, we must remember this. There is a massive scale up in public capital expenditure. I remember in 2014 it was just 2 lakh crore. We must appreciate this. Rupees 2 lakh crore in 2014-15 has gone up to 11.2 lakh crore rupees in 2025-26, and now with all pride, with all happiness as a citizen of the country, I can say that the public capital expenditure has gone up to 12.2 lakh crore rupees, which is 4.4% of the GDP, and it registers a 10% increase over the last year. And friends, we are aware of the fact that if the capital expenditure grows, then it definitely has a large multiplier effect on the economy. Urban transformation. Urban transformation is a very significant pillar of the budget. Madam Sitharaman talked about engines of growth. The cities, the big towns are today the engines of growth. And a wonderful concept was brought about and placed before all of us, the city economic region. City economic region focusing on tier 2 and tier 3 cities have been thought about by the government. Rupees 5,000 crore will be given to this city economic region, every city economic region, over a period of 5 years to build infrastructure. And we know what will happen. Less reduce pressure on the mega cities and fostering balanced development in the process. All of us know that no country ever can actually become a developed nation without having manufacturing competitiveness, and our government has tried to give a substantial push to the manufacturing competitiveness idea. This will not only create jobs, but also in the long run help promote our exporting community. The allocation of rupees 10,000 crore to the biopharma sector will not only help our people take care of their healthcare needs, but also lead to huge exports. Similarly, there was mention of many important areas which I think we must be talking about wherever we are. India has really advanced forward.
there is focus on semiconductor mission 2.0, nuclear sector, rare earth corridors, data centers and electronics components mission with a whopping 40,000 crore as the allocation. And I'm sure these investments will lead to less import dependency and make India future ready. I think these are things that we are thinking about our country, and I underscore the fact that we are intending to become Viksit Bharat by 2047, and that is why we have to be future ready. The provision of 4,000 e-buses is definitely going to enhance regional connectivity. My dear friends, 20 new national waterways, expanded road networks, freight corridors, 7 high-speed rail corridors and multimodal logistics system. These are giant leap towards a more competitive, resilient, confident and self-reliant Viksit Bharat by 2047. We may like it, we may not like it, but we need to accept it. My dear friends, I take this opportunity to convey our immense gratefulness to our Honorable Prime Minister for going for almost 9 free trade agreements and trade deal with a couple of countries in the last couple of years. Again, there would be critics, there would be naysayers, but I know to every action of Prime Minister Modi, there is an equal and opposite negative reaction from my right side. Free trade agreements and trade deal have been signed with New Zealand, UK, Oman, Australia, European Union consisting of 27 nations, and very recently with the US. And this is an indication of a particular thing which I think we need to appreciate. This is an indication of the fact that the government of India under the leadership of our Prime Minister knows how to navigate in a difficult world order. I talked about difficult global settings. We are aware of that. And in this difficult world order, the government of India for the past couple of years, about 10-12 years, have acquired the ability, the capability, the talent to navigate successfully. In this budget, a number of customs duties and import duties have been withdrawn, and this is for good. This is to help the exporting community. Friends, I would like to give certain examples which I think all of us need to appreciate. We have allowed duty-free import of ingredients by seafood exporters, allowing 3% of freight on board value of exports to be imported duty-free by textile and leather goods, and allowing SEZ units to sell in domestic tariff area at concessional duty, and these are extremely progressive and pragmatic ways of strengthening our exporting community. My dear friends, our Prime Minister and our Finance Minister have been talking all the while about the micro, small and medium enterprises. I would say they are the backbone of Indian economy, extremely important, and they contribute 35.4% of the manufacturing output. About 49% of India's total exports and around 31% of the national GDP. Now with 7.47 crore MSMEs in the country employing around 33 crore people, MSME has emerged as the second largest employer after agriculture. And our government, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, recognizes this. And that is why rupees 10,000 crore have been allocated as SME Growth Fund. And there is a great concept, and the concept is nurturing the champion MSMEs. I think this is something very interesting, very innovative, and we all need to stand together and appreciate.
Friends, a healthy India is a prosperous India. And here I must like to inform all of you, or rather help you recall, that Madam Nirmala Sitharaman allocated rupees 1.06 lakh crore for the Ministry of Health and Family Welfare in this budget. And this is a staggering 194% increase over the 2014-15 levels. In order to make our healthcare affordable and even accessible to many people, you know, the customs duties, the import duties have been withdrawn from 17 cancer drugs and drugs of many diseases which are rare by nature. I think this is something for which our government, Prime Minister Modi's government, needs to be commended and complimented. Now, my dear friends, could anybody think about AVGC, animation, visual effects, gaming and comics? This government is planning to raise about 2 million professionals by 2030 in AVGC sector. Absolutely out of the box idea, you may like it or not, but this is highly innovative and an out of the box idea of our government. Now here, the government will be supporting the Institute of Creative Technologies Mumbai to raise these professionals and to actually establish content creator labs in about 15,000 secondary schools and 500 colleges. It is very easy for me to read out, as my dear friend just did. When you are convinced about what your government is doing, you know, you need not read out from the papers. I know what our government is doing and how my government is ensuring that India moves forward. I don't have to look into papers for data and statistics. We are convinced that the government is moving forward, and this confidence is coming out when we speak about the government's good works. Friends, there is a very interesting thing. Ma'am, kindly ensure... Ma'am, kindly address the chair. Yeah, thank you. To ensure sustained economic growth and also at the same time to keep fiscal deficit in check is an interesting phenomenon. It's a challenge. And I'm extremely happy to inform the House that we recognize, we appreciate that this government has been doing that. Our growth momentum has been sustained, and at the same time, fiscal deficit is low, 4.3%, as I told earlier. This is a challenge which has been taken on by the government. The budget of financial year 26-27 is definitely pragmatic, pro-people and balanced in nature. हमें सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। बंधुगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच, उनके दिग्दर्शन, उनकी सकारात्मकता के सामने हम सब नतमस्तक हैं। मैं नमन करती हूं और उनके लिए दो पंक्तियां। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, मंजिल जाने तक का जरिया भी बदलता हूं, और अगर बदलता नहीं कुछ तो सिर्फ अपना लक्ष्य नहीं बदलता हूं, अपना पक्ष नहीं बदलता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कहना आसान है, करना कठिन, लेकिन हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में आगे बढ़ती जा रही है। आइए हम सब संग छद्वम संग वदध्वम संग वो मनांसी जानताम, हम साथ चले, हम साथ बोले और हम सब की सोच और भावना एक दिशा में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री अखिलेश यादव जी। मैं सबसे पहले सभापति महोदय आपका मैं धन्यवाद देता हूं
कि मुझे आपने बजट पे बोलने का समय दिया है। मैं तीसरा सदस्य इस पे बोल रहा हूं। मैं अभी में से पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय शशि थरूर जी जो बात कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। सभापति महोदय, वही मिलते जुलते आंकड़े हमारे पास भी हैं। जब कभी जवाब आए तो शायद उन आंकड़ों का जवाब भी आए। और जब वो अपनी बातों को खत्म कर रहे थे तो वो एक शेर पढ़ के गए हैं, मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ के गए हैं सभापति महोदय। सभापति महोदय, यही शेर अगर बीजेपी को पढ़ना होता तो बीजेपी कैसे पढ़ती? अगर यही शेर बीजेपी को पढ़ना पड़ता तो वो पढ़ते कि हमको मालूम है स्वर्ग की सच्चाई, लेकिन दिल को बहलाने के का गालिब ये ख्याल की जगह सोच अच्छा है। सभापति महोदय, यही फर्क है। सबका साथ, सबका विकास। सभापति महोदय, बोलने से पहले मैं जब बजट को देख रहा था और अक्सर सरकार को पिछले कई सालों से चलता हुआ मैं देख रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। सभापति महोदय, बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरा देश और पूरे देश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका को लेकर के डील होने जा रही है। सभापति महोदय, मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूंगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। और सभापति महोदय, का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों के उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? और ये डील नहीं है जो हम आप सब समझ पा रहे हैं, शायद सत्ता पक्ष के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि हमने अपना बाजार एक बार और खोल दिया है। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा, हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा?
हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्षी मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। सभापति महोदय, भाजपा का समझौता गणित क्या यह है कि 18 0 के बराबर है? क्या 18 हमारा 0 के बराबर है? देश के किसानों, दुकानों, उद्योगों को बचाने के लिए खोखले शब्दों के अलावा भाजपा के पास कोई और सुरक्षा कवच या संरक्षण योजना है कि नहीं है? इसलिए मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये बजट दिशाहीन है। इस बजट में कोई विजन नहीं है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। और हम जैसे लोगों को, समाजवादियों को तो सरकार से पहले ही उम्मीद नहीं थी, और जिस सरकार से उम्मीद न हो उसकी बजट से क्या उम्मीद होगी। इस बजट में पीडीए के लिए कुछ भी नहीं है। कोई योजना दलित, पिछड़ा, महिला, गरीब, अल्पसंख्यक या नवयुवक के विकास के लिए नहीं लाई गई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। और अगर जीडीपी हमारी 7% है और नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ केवल 8% है, जो कि लगभग 12% होनी चाहिए थी, इसके कारण लोगों के हाथ में कम पैसा है। और कारण यह भी लगता है कि हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो जानकारी हमारे पास है, वो आंकड़ा यही कहता है कि $3000 के लगभग प्रति व्यक्ति आय हमारी है। और अगर हम दुनिया से जब इतना ही जुड़ गए हैं तो 2025 की जो रैंकिंग है, हमारा स्थान 144 में 144th है। तो जहां हम इतना 10, 11, 12 साल से हम इतने बजट ला रहे हैं, क्या हमारे पर कैपिटा इनकम लोगों की नहीं बढ़ पाई? और सदन में, इसी सदन में कई बार ये पूछा गया कि जो लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, कम से कम उनकी पर कैपिटा इनकम क्या, ये तो बताना ही चाहिए सरकार को। और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विजन नहीं दिखता इस बजट में। जैसे जब बजट आता है तो बजट में ढूंढते हैं हम लोग कि हमारे स्टेट के लिए क्या और खास नया आया होगा। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां पर डबल इंजन की सरकार को बहुत कुछ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, हम विकास भी डबल करेंगे, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना ऐसी नहीं आई है जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कुछ मुख्य धारा से जोड़ा जाए। वैसे तो बड़े बड़ी योजनाएं बताई जा रही हैं कि हमारे कई फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, भविष्य में जो बनेंगे एक्सप्रेसवे, लेकिन भारत सरकार के बजट से कोई भी अभी एक्सप्रेसवे वहां पर नहीं बना। अगर कोई बना हो, नया बन रहा हो, बड़ा बन रहा हो तो बताएं। और जो बने भी हैं वो उस मानक, उस क्वालिटी के नहीं हैं जिस क्वालिटी के आज विकसित भारत के एक्सप्रेसवे होने चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार पे बड़े बड़े सवाल उठाते हैं, वो कम से कम अपनी सड़कों को देखें, अपने एक्सप्रेसवेज को देखें कि उन्होंने क्या बना करके खड़ा इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। इनके सबसे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम से कोई एक्सप्रेसवे बन रहा था। सभापति महोदय, हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा, कई लोग स्टेटमेंट भी देते हैं कि हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। उनके नाम से बनने के साथ साथ उनका नाम भी बदल दिया। पहले वो चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा था, फिर अटल जी के नाम से एक्सप्रेसवे बन रहा था।
लगता है वो जमीन पर नहीं उतरा, वो केवल कागजों पे बन रहा था। तो ये तो एक्सप्रेसवे की बात हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान को लेकर के इन्होंने कहा कि किसान की हम आय दोगुनी कर देंगे। आज हमारा किसान इस उदारीकरण में कहां खड़ा है? जिस किसान को लेकर के पूरे देश के सभी राजनीतिक दल चिंतित रहते हैं, इस डील के बाद हमारे किसानों का हाल क्या होगा? और जब सब कुछ विदेश से ही आएगा तो हमारा किसान भारत में क्या उगाएगा, जमीन पर क्या उगाएगा और क्या बेच पाएगा? सभापति महोदय, सरकार ने बड़ा बड़ा बजट पेश किया, कहा कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मंडियां तैयार करेंगे, बाजार तैयार करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। हमारे किसान जब काले कानून के खिलाफ लड़ रहे थे, बड़ी संख्या में जान चली गई, उसके बाद सरकार कहीं पीछे हटी और उन्होंने काले कानून वापस लिए। लेकिन आज भी किसानों को जो कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए वो अभी तक एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार नहीं दे पाई है। और जो 23 क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप और दूध को लेकर के सरकार दावा करती कि हम सब्जियां इतना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमारी इतनी ग्रो कर गई हैं, हम दुनिया में इतना पैदा कर रहे हैं। दूध के जब आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हम दूध का उत्पादन इतना कर रहे हैं, और अगर आपका बजट ही विकसित भारत का बजट है तो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और जो हमारा किसान दूध का उत्पादन कर रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है, उसके लिए एमएसपी की गारंटी कब देंगे आप लोग? और गारंटी हम लोग इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उसको घर कैसे बनाएगा, घर कैसे चलाएगा, अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपनी बेटियों को हंसी खुशी विदा कैसे कर पाएगा? और इधर तो जहां फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, सभापति महोदय, सोने के भाव कहां पहुंच गए हैं? पहले गरीब सोचता था जब हम अपनी बेटी की विदा करेंगे तो कुछ सोने का एक सामान खरीद करके दे देंगे उसको। जैसे जैसे बीजेपी की सरकार चली और आगे बढ़ती गई, 12 साल ऐसे हैं आ गए कि अब तो चांदी तो दूर, अगर यही सरकार चलती रही तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर भी गरीब अपनी बेटी की विदाई नहीं करा पाएगा। कैसे अपने भविष्य के लिए 2 पैसे जमा कर पाएगा? मतलब आज क्या खाएगा, कल के लिए क्या बचा पाएगा? ये किसानों के बड़े सवाल हैं। भाजपाई किसानों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये किसी और को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। कुछ अदृश्य लोग हैं जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इनका बजट, जो बजट बनाते हैं वो आम जनता का ना उसमें जिक्र है ना फिक्र रहती है। और अगर फिक्र होती उनको तो किसान की खाद समय पर मिल जाती, उनको बीज समय पर मिल जाता, सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाती, सिंचाई या सिंचाई मुफ्त हो जाती थी। और मुझे याद है सभापति महोदय, समाजवादी सरकार में हम लोगों ने किसानों की सिंचाई मुफ्त करने के भी फैसले लिए। कीटनाशक दवाइयां कितनी महंगी हैं और सरकार ने किसानों को अपने हाल पे छोड़ दिया। मंडियों पे कहीं कोई खरीद नहीं है, और अगर खरीद हुई है तो सरकार बताए कि धान, आलू या गेहूं की खरीद में तो मिल जाती है उसको कीमत, लेकिन धान और आलू जैसी फसलों पर कोई सरकार कीमत नहीं दे पा रही है। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में न छूट देना, टैक्स शोषण है। अमीरों के काम कारोबार और घूमने फिरने पर 10 तरह की छूटें दी गई हैं, लेकिन बेकारी बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली खाली है। मध्यम वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शोषित, वंचित, गरीब व्यक्ति जहां था वैसे भी नीचे जाता दिख रहा है। इस बजट ने उसके चादर में पैबंद लगाने की जगह उसे और चिथड़ा कर दिया है।
क्योंकि सामाजिक सुरक्षा केवल शब्दों की औपचारिकता रह गई है। किसान, मजदूर, श्रमिक, कारोबारी, छोटा दुकानदार अपने लिए मिली राहत को दूरबीन से देखकर ढूंढ रहा है और इसीलिए भाजपा का हर बजट 1/20 का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए ही होता है। अच्छे बजट की होती हैं 3 पहचान: गरीब की तरक्की, खुशहाली और मुस्कान। शायद इस बजट ने तीनों चीजों को छीनने का काम किया गरीबों से। दूसरा विषय, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत हमारा गरीब समय समय पे परेशान रहता है। स्वास्थ्य को लेकर के जो ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए वो सभापति महोदय सरकार नहीं उठाती दिख रही है, और जितना भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप होती चली जा रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बता सकता हूं, मुझे याद है सभापति महोदय, पहला जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार को मिलकर के पहला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का बना था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री और मैंने मिलकर के उसका उद्घाटन किया था। उसके बाद जो प्रचार में तो ये बहुत आगे हैं, प्रचार में तो ये कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, ऑपरेशन के लिए कहां जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। और जिस तरीके से अभी जिन लोगों ने इंश्योरेंस या LIC में किस्त दी होगी वो जानते होंगे कि महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ी है, किस्तें बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के एम्स के लिए 5,600 करोड़ रुपए और आयुष्मान भारत के लिए पूरे देश के लिए सरकार ने जो बजट रखा है वो 4,700 करोड़ रुपए है। सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी, कलियों का तो कहना ही क्या, मिट्टी में खुशबू आती थी। ये भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों के रंग ढंग अपनाएं, माली तुम ही फैसला कर दो, हम किसको दोषी ठहराएं। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां पर प्रधान संसदीय क्षेत्र है। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। केवल मंदिर नहीं तोड़े गए सभापति महोदय, एक एंटीक बेल डोनेटेड बाय नेपाल नरेश, जो घंटा बजता था, सभापति महोदय, जो घंटा बजता था, नेपाल नरेश जिन्होंने गिफ्ट किया था, वो घंटा भी लापता है। केवल घंटा ही लापता नहीं है, सभापति महोदय,
नमामि गंगा को लेकर के हमारे कानों में अभी भी वो बातें गूंजती हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। क्या बात है कि पिछले 11 साल से माँ गंगा ने बुलाया ही नहीं किसी को। माँ गंगा बह रही हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स को हर दिन नापा जाता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन, सीओडी, बीओडी और तमाम पैरामीटर्स आज किस हालत में है मां गंगा। कोई कह रहा था कि अब गंगा बहकर के दूर तक जाएंगी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते होंगे कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है। तो उल्टी बहेगी तो यूपी के आते आते आप बाहर हो जाएंगे। सभापति महोदय, नमामि गंगा, मां गंगा में जुड़ने वाली नदियां, वरना नदी को एक संरक्षण कैसे हो, ब्यूटिफिकेशन कैसे हो, रिवर फ्रंट कैसे बने, उसकी शुरुआत की थी। लेकिन सभापति महोदय, इनकी बुलडोजर सरकार ने उसका काम रोक दिया। काली नदी किस हालत में है। यमुना के बारे में दिल्ली की सरकार जब बनानी थी तो कहा कि हम दुनिया का सबसे बेहतर रिवर फ्रंट बनाएंगे यमुना पर। इसी राजधानी में कहा गया। आज बताइए यमुना की हालत क्या है। और अगर यमुना दिल्ली में गंदी हो रही है तो ये बह करके जब यूपी जाती है तो मथुरा में भी गंदी है। और थोड़ा बहुत साफ गंगा इसलिए हो जाती है क्योंकि जब चंबल का पानी उसमें जुड़ता है, थोड़ी बहुत यमुना साफ हो जाती है। उसके बाद यमुना में भी कोई सफाई का सरकार ने इंतजाम नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूं, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट अगर कहीं बना है तो लखनऊ में बना है, गोमती रिवर फ्रंट। जो लोग ये कहते हो कि दूसरा रिवर फ्रंट अच्छा है, मैं उनसे कहूंगा कभी लखनऊ के रिवर फ्रंट पर भी घूम करके आइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रिवर फ्रंट क्या होता है। 26 जनवरी इसी वर्ष मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार को पढ़ा और उसमें देखा मैंने कि हाई यूरेनियम इन इंडियाज ग्राउंड वाटर सैंपल्स लिए गए हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि सेवरल हेल्थ रिस्क हैं उससे। लेड पॉल्यूशन अलार्मिंग इन 69 रिवर्स इन इंडिया कंटेमिनेटेड, रिवर्स आर कंटेमिनेटेड। हमारे पानी में पेस्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अनसेफ है ड्रिंकिंग के लिए। हमारी नदियों में मरकरी है, डेंजरस लेवल। और जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स के आसपास, सब में टॉक्सिक है, मरकरी है, बड़े पैमाने पे डेंजरस है पानी वहां का। और कई जगह इंडस्ट्री का सीधा सीधा वेस्ट जा रहा है। आर्सेनिक लेवल का सोच ही नहीं सकते हम लोग, जो मानक है उससे कई गुना ज्यादा है। ये तो हमारे देश का पानी है जो नदियों में बह रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर बन रहा है हमारा। ठीक ही कहा हमारे माननीय सदस्य ने कि जो संपन्न है, प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग तो पानी साफ करने की मशीन खरीद सकते हैं। हमारा गरीब क्या खरीदेगा। गरीब की हेल्थ को कितनी परेशानी और रिस्क है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हमारे देश को भी सुनना पड़ा एक प्रतिष्ठित चैनल पर कि आपके देश में इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा, क्योंकि वहां आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी हवा खराब है। सोचिए, देश का पानी खराब हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पानी खराब सरकार को मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको अपना पानी बेचना है, तो वो बता रही कि आपके भारत के पानी में क्या क्या है। और ये बात गलत है तो सरकार ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं कि इस तरह अपनी कंपनियों का सामान बेचने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। जो चर्चा होने लगती है हवा खराब है, हालांकि उत्तर प्रदेश आते आते सरकार की भी हवा खराब हो जाती है। सरकार सबको डराती है, लेकिन सरकार को कोई नमस्कार न करे उसको नहीं डरा सकते। हमने तो कहा कि तुम लखनऊ से गए हो, लखनऊ का जो अदब है, लखनऊ का जो हमारी पहचान है,
कम से कम अगर नमस्कार नहीं कर सकते तो आदाब तो कर ही देते वहां जाकर। जो लोग पिछड़े पीडीए उनके पक्षधर बनते हैं, आरक्षण को लेकर के कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, उनकी सरकारों में क्या अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। मुझे याद है इससे पहले जब बहस हुई थी सदन में, वहां से बात निकली थी कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। मैं उसी पे कुछ कहना चाहता हूं। ये अपनी अपनी किस्मत है, कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती हैं झुके झुके जीवन भर भू पर। माना बदकिस्मत है, लेकिन क्या वे महक नहीं सकती हैं? अगर मिले अवसर अंगारे सी क्या दहक नहीं सकती हैं? जिस तरीके से आरक्षण पर खिलवाड़ हो रही है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विकसित भारत तभी विकसित भारत माना जाएगा जब हमारे पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को बराबर का हक मिलेगा। और जब तक हक नहीं मिल रहा उनको, तब तक शायद विकसित भारत का देखने का सपना आधा अधूरा है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है माइग्रेशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को एक फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट का लाभ लिए अगर अनारक्षित वर्ग से ज्यादा नंबर प्राप्त करे तो उसे अनारक्षित वर्ग में सेलेक्ट किया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है? हमारे सरकार की भी नियत है कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए जिनका हक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम पिछड़े हैं। हमारे दूसरे नंबर के नेता, क्योंकि उन्हें सनातनी बनना था, अपना धर्म बदल के दूसरा धर्म लिख लिया उन्होंने। तो कम से कम पिछड़ों का तो ख्याल करिए आप। जब पिछड़ों का ख्याल करोगे तभी आपका देश विकसित बनेगा, भारत विकसित बनेगा। अगर आप पिछड़ों को छोड़ देंगे, दलितों को छोड़ देंगे, आदिवासियों को छोड़ देंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को छोड़ देंगे, तो आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे? एक आर्थिक बराबरी है, दूसरी सामाजिक बराबरी है। और मुझे लगता है बजट से न आर्थिक गैर बराबरी दूर हो रही है, न सामाजिक गैर बराबरी दूर हो रही है। और इनकी सरकार में कितना भेदभाव है। सभापति महोदय, केवल चुनाव जीतने के लिए सोचिए। एक 72 साल के बुजुर्ग पर मोहित खान साहब, आप जानते होंगे आपके क्षेत्र में मदरसा टाउन एरिया। सभापति महोदय, बीजेपी का लक्ष्य केवल है चुनाव जीतना। इन आंकड़ों से क्या मतलब? और आंकड़ों के अगर ये ठीक आंकड़े होते सभापति महोदय, तो इन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन हम 1 लाख करोड़ की बनाएंगे। आज बुलेट ट्रेन 2 लाख करोड़ की कैसे हो गई? सभापति महोदय कहा कि हम 1 लाख करोड़ में बनाएंगे बुलेट ट्रेन। और बुलेट ट्रेन केवल संपन्न स्टेटों में क्यों? हमारे बंगाल, बिहार और यूपी में क्यों नहीं? और अगर आप हाई स्पीड बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं तो 1 लाख करोड़ का बजट दिया था, 2 लाख करोड़ बजट हो गया। यूपी में जब बनेगा तो पता नहीं कब बनेगा, कौन जानता है कब बनेगा। चुनाव जीतने के लिए इनकी सरकार के लोगों ने झूठा फंसाया। ये सब जुमला है, जुमला। झूठा फंसाया, और इसलिए फंसाया कि वो मुस्लिम है, इसलिए फंसाया। 72 वर्ष के बुजुर्ग को 19 महीने जेल में रखा गया। समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया, और केवल इसलिए कि चुनाव जीत जाए आप, अयोध्या का चुनाव जीत जाए, क्योंकि अयोध्या का चुनाव हारे थे आप लोग। मैं अयोध्या की महान जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स का समापन किया है। वो विकास के रास्ते पे जाना चाहते हो। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, आपका विकास अयोध्या का तो मैं जानता हूं कैसा है, क्योंकि लोगों ने काशी को क्यूटे बनते नहीं देख पाए। अगर हम सब सदस्य हैं और हमारे प्रधान सांसद के संसदीय क्षेत्र को अगर हम क्यूटो न बना पाए, आप विरासत मिटा रहे हैं। वहां पर कई सौ पुरानी दाल मंडी, जिसमें केवल
वोट नहीं मिलता, इसलिए दाल मंडी को आप डिमोलिश कर देंगे आप। बनारस और इसको अयोध्या को जीतने के लिए 72 वर्ष के एक व्यक्ति को झूठा केस लगाया, झूठा फंसाया, जेल भेज दिया। और न केवल उसको जेल भेजा बल्कि उसकी दुकानें और उसकी बेकरी पर भी बुलडोजर चला दिया आपने। क्या डेमोक्रेसी में हमारे बुलडोजर का कोई स्थान है क्या? हाई कोर्ट कहता है कि आप फैसला सुना सकते हैं क्या? कोर्ट कहता है कि आप कौन हो गए फैसला सुनाने वाले लोग? और फिर आप लोग कहते हैं कि हर घर जल और नल। सभापति महोदय, इन्हीं के विधायक ने मंत्री जी को घेर लिया, इन्हीं के विधायक ने मंत्री जी का अपहरण कर लिया और ये कहते हैं कि हम तो, हमारे कोई अराजकता नहीं है। ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम एमओयू साइन करेंगे। सभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, एमओयू साइन किए गए, लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए। और एमओयू साइन होने के बाद जमीन पर कितना उतरा ये बताए सरकार। एमओयू के बाद सरकार बताए कितना जमीन पर उतरा है। इन्होंने जब कश्मीर का 370 हटा रहे थे सभापति महोदय, हाँ ना, बजट ही है ये एमओयू में, क्योंकि इंसेंटिव अगर नहीं देंगे तो कौन आपका इन्वेस्टमेंट लाएगा? ये राज्य का विषय नहीं है सभापति, राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं। और आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हमने देश में कहा कि हमने 1000 किलोमीटर मेट्रो बिछाई है। आपने देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्यों नहीं मेट्रो बिछाई? क्यों नहीं बिछाई आपने? आपने देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र को एक्सप्रेस वे से क्यों नहीं जोड़ा आपने? क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के आपने नाम से एक्सप्रेस वे क्यों नहीं बनाया? बताइए आप, ये बजट नहीं है आपके पास। अयोध्या एयरपोर्ट घोटाला, एयरपोर्ट बनते ही पानी टपकने लगा। एयरपोर्ट तो दिल्ली का है, बजट तो दिल्ली ने दिया होगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन, हमारे कन्नौज का रेलवे स्टेशन बनते ही गिर गया और गिरने के बाद अभी तक नहीं बन पाया। तो ये बजट का हिस्सा नहीं है क्या? आप वाटरवेज बात कर रहे हैं, गंगा साफ नहीं है, आप पानी का जहाज कहां ले जाएंगे? बिहार में जाकर के रुक जाएगा। पिछली बार भी एक पानी का जहाज चला था, बनारस से जाते ही बिहार में रुक गया, जाकर के पटना भी नहीं पहुंच पाया। रामपथ, सीवर लाइन स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। आपका स्मार्ट सिटी कैसा है? इंदौर में पानी पीने से कितने लोगों की जान चलेगी सभापति महोदय? और कोई शहर बता दीजिए जहां कूड़ों का ढेर ना हो। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया हो और उसके बाद भी कहीं कूड़ा ना हटे सभापति महोदय। भजन संध्या स्थल घोटाला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाया, उसमें भी पानी गिर रहा है। लाइट सजावट की चाइनीज आई हैं। हमारे देश का कारोबार कैसे उलझा दिया आपने? चीन और अमेरिका और थोड़ा बहुत रशिया, विदेश नीति तो असफल हुई है, लेकिन हमारा बाजार को भी पूरा बेच दिया। और चीन के सवाल पर सभापति महोदय, चीन हमारी जमीन पर भी निगाहें रखे हुए है और हमारे बाजार पे भी। इसलिए जो सरकार फैसला ले बड़ी सावधानी से ले। मैं कितनी बातें बताऊं, वहां पर सेना जमीन ले लिया, जमीनें जाने कहां चली गई हैं। इसलिए सभापति महोदय, ये बजट दिशाहीन है। ये 2047 में हमारा विकसित भारत तो नहीं बनेगा। और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी को लेकर के जो चिंता रही, हमेशा रहती थी, और जो सरकार ने बड़े बड़े फैसले भी लिए थे, जानकारी दी थी कि हम बेरोजगारी ऐसे दूर कर लेंगे। मेक इन इंडिया का जो सपना दिखाया था, आखिरकार मेक इन इंडिया का सपना कहां पूरा हो पा रहा है? मेक इन इंडिया का जो शेर था वो जंग खा रहा है सभापति महोदय। जो योजना लेकर के आए थे, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, सरकार बताए कि हमें कितना उसमें लाभ पहुंचा है।
2024-2025 के बजट में इन योजनाओं के लिए 33,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन खर्च कितना हुआ? 1,700 करोड़ रुपया केवल। एक आपने पिछली बार सपना दिखाया था कि इंटर्नशिप की योजना, इंटर्नशिप वाली योजना जो घोषित की, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे आपने, लेकिन उसमें खर्च कितना हुआ है? 500 करोड़ रुपया। और जो लक्ष्य रखा था आपने रखा था 5 साल में 1 करोड़ लोगों को, लेकिन इसमें आए कितने? 1,65,000 लोगों ने फॉर्म भरा, ऑफर दिया उन्होंने, लेकिन फाइनली जिसमें ऑफर, जिसका सिलेक्ट हो, वो केवल 16,000 लोगों को काम पहुंचा है। सोचिए, हमारा देश इतना बड़ा, जहां करोड़ों को आप इस योजना से जोड़ना चाहते थे, केवल 16,000 लोग जाएंगे उसमें। ये आपको बेरोजगारी खत्म करने की योजना है आपकी। माननीय वित्त मंत्री जी के सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसमें गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार मिलता था, राइट टू वर्क के अनुसार थी। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहां नहीं बैठा सकते, आपको यहां बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय वीपी राम जी, आप कृपया, देखिए वित्त मंत्री राम जी को ही नहीं जानती हैं। अखिलेश जी, हे भगवान, अखिलेश जी आप कृपया बजट पे आ जाइए। आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय बजट पे आइए, बजट पे आइए। एक मिनट में क्या बोले? फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं, सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब आप बताइए सभापति महोदय, बीबी राम जी नाम बदल दिया आपने। यूपी जैसा बड़ा स्टेट, उसको क्या मिलेगा अब, जहां पर 1,000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं। जब 1,000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं और 40% व्यय प्रदेश सरकारों पर डाल दिया गया है, ये स्कीम कैसे चलेगी आपकी? मैंने पहले ही कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े सरकार के पास होंगे कि किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है। जिन्होंने ये कहा कि 2022 तक हम दोगुनी आय कर देंगे। आप बताइए, आलू की पैदावार की क्या आय दोगुनी हो गई? धान की पैदावार करने वाले की आय दोगुनी हो गई। आपको गाय से बहुत प्रेम है। हमारे क्षेत्र में खुद एक काऊ मिल्क प्लांट बना, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट। आपकी सरकार ने उसको बंद कर दिया। आप कहते गाय की सेवा करो, लेकिन पहला यूपी का काऊ मिल्क प्लांट वो आपसे बंद हो गया। अगर शायद हम ऊंट के मिल्क की चॉकलेट बना रहे होते उस प्लांट से, तो वो प्लांट चलता रहता। आय दोगुनी कितनी हुई है बताएं सरकार? मत्स्य पालन और पशुधन विकास की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का कहना है कि वित्त अच्छी हुई है, लेकिन क्या कारण है कि एफडीआई में लगातार कमी आ रही है? विदेशी इन्वेस्टर्स क्यों बाहर ले जा रहे हैं? भारत में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं इच्छुक हैं? और शेयर मार्केट क्यों इतनी जल्दी गिर जाता है? रुपए के मूल्य में डॉलर के विरुद्ध निरंतर गिरावट आ रही है। और इसके बाद सभापति महोदय, इस डील और ढील के बाद हमारा रुपया कहां होगा, ये सरकार जरूर बताए हमें। मैन्युफैक्चरिंग में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अभी भी हम जीडीपी के 15% पर मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग के शेयर मेक इंडिया के अनुसार अभी तक 25% होना चाहिए था। इससे स्पष्ट लगता है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई योजना सफल नहीं हो पाई हैं, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे नौजवानों को रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकार
उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा लेबर कोड्स लाए गए हैं, जिन लेबर रिफॉर्म्स के रूप में दर्शाया जा रहा है वो लेबर कोड एम्प्लॉयर के हित में है, लेबर के पक्ष में नहीं है और मजदूरों के नहीं है। अब अधिकांश उद्योगों द्वारा लेबर को कोई भी नौकरी से निकाला जा सकता है। इतना तानाशाही होगी कि जब चाहेंगे तब निकाल देंगे। उनके 8 घंटे से अधिक काम कराया जा सकता है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की है सरकार ने। सोचिए, यही सरकार है कि सबका साथ सबका विकास। एयर पॉल्यूशन को लेकर के मैं पहले ही कह चुका हूं और शहरी विकास तो इनका मैंने क्यूटो को मैं देखा है, इसलिए उस क्यूटो के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के केवल 10% और 14.2% बजट बढ़ाया गया है, जबकि पिछले वर्ष का पूरा बजट इन दोनों मदों में खर्च ही नहीं किया गया है। आखिरकार सरकार बताएगी खर्च क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है, किसकी वजह से खर्च नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में 40,000 करोड़ रुपए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गांव गोद लिया था, वो लगता है उस गांव को अनाथ छोड़ दिया प्रधानमंत्री जी ने, वो गांव ही अनाथ छोड़ दिया है। आरबीआई के डेटा के अनुसार इनकम में जो नीचे 80% हैं, उनकी इनकम का शेयर 36% से घट करके 32% हो गया है और हर वर्ष में रियल वेजेस 2% कम हो रही हैं। आखिरकार इसका कारण क्या है? मुझे उम्मीद है सरकार बताएगी कि इसका कारण क्या है कि जिसकी वजह से लगातार गिरावट होती जा रही है। मैं रैंकिंग में नहीं जाना चाहता हूं कि हमारी रैंकिंग कहां है, गैर बराबरी की रैंकिंग में हम कहां पहुंच गए हैं, हम कितना नीचे पहुंच गए हैं। जो तरह तरह की रैंकिंग समय समय पर आती हैं, उन रैंकिंग के बारे में सरकार को जरूर पता होगा कि हम एजुकेशन इंडेक्स में कहां हैं दुनिया में, हम हेल्थ इंडेक्स में कहां हैं दुनिया में, और जो एयर क्वालिटी के इंडेक्स है उसमें हम दुनिया में कहां हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बजट दिशाहीन है। 2047 तक विकसित भारत तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारे गरीबों के साथ बहुत अन्याय होगा। जिस तरह एआई पे बात की गई है, एआई अगर अच्छाई और भलाई के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी पे कितना रिसोर्सेज हैं कि एआई और जितना भी हमारा वो है जो बजट है वो सबसे ज्यादा खर्च वो करते हैं दूसरों को बदनाम करने के लिए। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बजट को गरीबों की तरफ मोड़ेगी, पीडीए के लोगों की तरफ मोड़ेगी, जिससे वो भी मुख्य धारा में खड़े हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अभी हम केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा में हैं। अगला माननीय स्पीकर माननीय श्री अभिषेक बनर्जी जी। Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on the general budget. Sir, I rise here today not merely just a member of the opposition, but as a voice of billion Indians who were promised Achhe Din and who today struggle to survive under the weight of soaring costs. So this union budget was presented on Maghi Purnima, a day which is ideally meant for clarity, renewal of purpose and moral responsibility. Yet, sir, this budget offers none of these. It does not heal the economy, rather this budget curates headlines. It speaks loudly in slogans, but softly in solutions. So this is a budget that rewards those who can avoid taxes through privilege and punishes those who pay them honestly through compulsion. With all due respect to the Honorable Finance Minister, I think the Honorable Finance Minister is
appearing to practice the Robin Hood model in reverse. She drains the poor through taxation and inflation while rewarding the rich with concessions and privileges. Sir, even a cup of tea today comes with GST, but relief for the common man comes with condition, clauses, terms and regulation. This is not a simple tax regime. It's a maze where only the powerful knows the exit and the honest taxpayer keeps paying the entry fee. Sir, Akhilesh ji was speaking before me. He was saying, यूपी के लिए क्या मिला है मैं इस बजट में देखना चाह रहा था. सर 85 मिनट्स का फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच था. बंगाल was not even mentioned once. Even the freight corridor from Dankuni, referenced in this very budget, was originally announced by the then railway minister in 2009, which was Mamata Banerjee, who is now the chief minister of West Bengal. The constitution promises equality among states, but this government practices preference. Allies are funded while opponents are starved. So this is not a model of cooperative federalism. This is a model of subscription-based federalism. So the budget and the manner in which the government chooses to function forces us to confront a truth that we as citizens have been avoiding for too long. So in November 2021, on a stage thousands of miles away at the Kennedy Center, Veer Das, a young stand-up comedian from India, spoke of two Indias. Many laughed, some were offended, few paused to listen. But what he offered was not comedy. It was a warning, a prophecy, a mirror held up to a nation standing at the edge of its own contradictions. Because I too, sir, come from two India. And I come from an India which proclaims Ek Bharat, Shresth Bharat. And I also come from an India where mother tongue becomes a marker of suspicion, where speaking Bengali makes you a Bangladeshi and eating fish makes you a Mughal. Sir, I come from a part of India that gave birth to revolutionaries and wrote courage in blood. And I also represent an India where saying Joy Bangla or singing Amar Sonar Bangla is enough to strip you and brand you a labeled Ghuspetiya. Sir, I come from an India that thunders Sabka Saath, Sabka Vikas from every podium. And I come from an India where West Bengal's rightful dues to the tune of 1,96,000 crores are frozen in cold bureaucratic silence. Sir, what is withheld is not just money. What is withheld is dignity. What is withheld is constitutional promise that every Indian, every state stands equal before the union. This is not governance or federalism, sir. This is a message that you stand in line or you'll be made to pay the price. And that is the tragedy of our time. India has two faces, but that one India is being asked to kneel before the other is the truth that we all are facing today. Sir, I come from an India where the finance minister proudly declares with absolute confidence that India is the fastest growing economy in the world. And I come from another India where Bengal, after contributing 6.5 lakh crores in taxes in just last 7 years, is systematically denied its rightful share. So despite repeated requests and appeals, we have been denied employment under Manrega, housing under PM Awas Yojana, road connectivity under Gram Sadak Yojana, even basic drinking water under Jal Jeevan Mission is being stopped. So I come from an India that boasts of maximum governance, minimum government. And I also come from an India where governance means abandonment, where the poorest are forced to fight for roti kapra makan, where wages are held hostage, where houses are sanctioned on paper but erased in practice, where even drinking water becomes a bargaining chip in a political vendetta. I come from an India where farmers are stopped
at the national capital with nail embedded in the roads with concrete barricades. And I also come from an India where terrorists can enter the national capital and carry out blasts killing 15 innocent people. I come from an India where we are told, and I quote, India's borders are safe and they cannot be violated. A promise that is made from the highest office. And I also come from an India where that promise lies in ruins. Terrorists crosses our border, infiltrated heavily guarded militarized zones like Pahalgam, and gunned down 26 innocent civilians under broad daylight. And Honorable Sir, all of these, the abandonment, the broken promises, the selective cruelty, it's not random, it's not accidental. It flows from a single unmistakable principle of this budget. So this budget is built on a single unmistakable principle, that is triple, teen. A writer once said, there are three kinds of lies. Lies, damned lies, and statistics. Modern India lives with three certainties: pressure that mounts, taxes that multiply, and trust that is betrayed. So today, India lives under triple pressure, triple taxation, and triple betrayal. Triple. So let me place before this august house my 10 principles of triple. सर पहले है ट्रिपल टैक्स ट्रैप. एक आम इंसान को लगता है मैं एक बार इनकम टैक्स दे रहा हूं, बट आई विल एक्सप्लेन टू द चेयर एंड शेयर विद दिस ऑगस्ट हाउस दैट हाउ a common man is being taxed 3 times over, not once, twice, but thrice. So the first blow is the income tax. The salaried citizen pay tax even before the salary reaches his bank account. There is no escape, no negotiation, no adjustment made for inflation. In today's India, honesty doesn't pay, it costs. So number 2 is GST. From the first biscuit with the morning tea to a school notebook, from sugar and spices in the kitchen to the electricity bills, from hospital expenses to medical expenses, from soap in the bathroom to the software at work, indirect taxes follows everywhere. सर जहां सरकार की वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंचती है वहां भी जीएसटी पहुंच जाती है. The government celebrates record GST revenue, but this number do not reflect growth or prosperity. They reflect a system squeezing revenue from consumption, often from necessity, not choice. So third tax is inflation, the most silent tax of all. The tax that rises without permission and collects without responsibility. It's a slow leak in the common man's wallet. For the middle class, inflation feels like the salary comes on time, but it doesn't last the month. The same grocery list costs more, the same school fees feel heavier, and the same electricity bill shocks more than even before. Nothing extra is being bought, yet money disappears faster. It quietly eats into savings meant for children's education, family travel, medical emergency, or old age. Sir, I come from an India that proudly calls itself a Vishwa Guru. And I also come from an India that is teaching the world how to extract triple tax out of a single citizen. So my triple number 2, triple pain of proving your existence. So let us be honest. Voting today is no longer considered enough. Having one's name on the electoral rolls for decades is no longer enough. Even service to the nation is no longer enough. You may be a decorated soldier, a Nobel laureate, a sitting High Court justice, or even a member of this august house, and still you have been asked to prove that you belong. This strikes the heart of Article 326 of the Constitution, which guarantees adult citizens the right to vote. Sir, in Bengal alone, 150 lives have been lost in the last couple of months, and nearly 1 crore people are today being treated as suspects. If electoral rolls are so unreliable that every citizen must continually reprove their legitimacy,
then by that same logic, sir, the legitimacy of this very house formed on the basis of this very electoral rolls is itself questionable. Yes. So my triple number 3, and I'll talk of 3 betrayal. First betrayal is where the global crude oil prices crash. Indian citizen sees no benefit. Instead, the common man is generally offered ethanol mixed petrol at a premium, paying extra for a policy experiment he neither demanded nor benefits from. My second betrayal, the government boasts of bullet trains, which Akhilesh ji is also mentioned. While fancy trains make the headlines, only 4% of the network is safeguarded with Govt, leaving ordinary travelers exposed to risk. Third betrayal. So the ordinary Indian doesn't ask for any miracle. They ask for clean air to breathe, clean water to drink, safe roads to return home, and affordable health care while life falters. Even these simple hopes remain uncertain. An ordinary citizen pays income tax to buy a vehicle. Or for example, an ordinary citizen pays income tax to earn, a road tax to buy a vehicle, and toll tax to drive it on the road, often broken, unsafe and unfinished. So 3 payments on one journey. अगर एक इंसान इनकम टैक्स दे रहा है तो एक गाड़ी को सड़क पे चलाने के लिए सर उसको 3 बार टैक्स देना पड़ता है. एक है इनकम टैक्स, दूसरा है रोड टैक्स, तीसरा है टोल टैक्स. दैट इज व्हाई आई से 3 betrayals. So now I'll come to 444, triple bonanzas for the rich. So this budget reveals a clear pattern. First, a triple bonanza for the elites and a triple lock on the poor. So top 10% of this country now corner 57% of nation's income and 65% of its wealth, while the bottom half survives on just 6.4%. In this economy, money earns money, but survival earns nothing. Second, so if you look at taxation and support, foreign cloud giants are handed tax holidays, while Indian MSME, the very backbone of employment, are left empty-handed. Sir, relief exists on paper, but in actual distress exists on the ground. Third, corporate India gets red carpet, easier property rules, wider equity access for NRIs and massive infrastructure promises, but the result of these government policies is not competition, it is concentration. Oligopolies flourish, entry barriers rise, and ordinary entrepreneurs are kept outside the gate, watching cronies grow richer with the union's support. Sir, I come from an India where wealth is applauded as a virtue, and I also come from an India where survival itself is treated as ambition. I come from an India where policy quietly opens the gates for the powerful, and I also come from an India that stand outside those gates with hands folded, backs bent, hearts heavy, and eyes raised, hoping that one day these gates will open for them too. Now my 555, farmers. So the budget completes a cycle of betrayal. Every day, nearly 30 farmers dies by suicide. Not because they failed, but because policy failed them. 5 years after the historic farmers movement, which saw 700 lives lost, the union government has still refused to legalize MSP. Promises were made at protest sites, assurances were echoed in parliament, but delivery never followed. And now, adding salt to the injury, the government has now announced a trade deal with the United States that will open Indian markets to heavily subsidized American farm produce. The deal may benefit American farmers, but it will depress prices, destroy competitiveness, and further marginalize Indian farmers who struggle without MSP protection. So this is not a trade policy. This is an abandonment of our Annadata. Sir, I have a tweet right in front of me which I want to show or place before you. Sir, Secretary
Brooke Rollins, who is the Agricultural Secretary of the United States, she said, and this is 5 days back, on the day when the trade deal was announced, she's clearly saying, new US-India deal will export more American farm products to India's massive market. In 2024, America's agricultural trade deficit with India was 1.3 billion. India's growing population is an important market for American agricultural products, and today's deal will go a long way to reduce that deficit. So this is not my tweet. She clearly says, thank you, President of the United States, for once again delivering for our American farmers. If the government doesn't agree with a tweet, so where is the disapproval letter, or where is the communication that the government has sent in protest to the tweet that has been sent out 5 days back? सर, अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कह रहा है इस डील से अमेरिका का किसानों का फायदा है, इसीलिए हम अमेरिका का सभापति का धन्यवाद करता है. And the Indian government of the union has not written a line in protest of what the agriculture secretary has tweeted. So now I come to youth. So the much publicized PM internship scheme was allocated over 10,800 crores. Less than 5% of the amount has been utilized. Similarly, the PM Young Achiever Scholarship, which was meant to uplift the talented students from marginalized backgrounds, saw 31% of its fund go unused in financial year 25-26. Sir, if I speak of women, more than 86 women are raped every day in this country. A number that reflects systematic collapse, not isolated crime. Sir, Bengal exercised its constitutional authority and passed the Aparajita Bill, a stringent anti-rape law providing the strongest deterrence against crime against women. So the bill was duly sent to the union through the governor about 18 to 19 months ago. For a year and a half, it has remained pending without any decision. So when a democratically passed law maintained to strengthen protection is left in a limbo, it expresses a lack of intent. This reminds me that I come from an India that promises to double farmers' income. And I come from an India where 1,11,174 farmers and agricultural laborers, brothers and sisters have been forced to commit suicide. I come from an India which launched Beti Bachao, Beti Padhao. And I come from another India where every 16 minutes a rape or a crime against women is being reported. So now I come to 3 cracks in the constitution. Number 1, so hatred has now been normalized. It has moved from margin to the mainstream. So if I talk about cases registered for promoting enmity between religious and social groups, the number of cases has doubled between 2021 and 2023. And this rise didn't happen in silence. It happened alongside political speeches, public rallies, and calculated dog whistles. When hate goes unpunished, it spreads. When it spreads, minorities pay the price. Second, hate is no longer whispered. It has become a broadcast. So our country has documented more than 1,300 hate speeches in a single year. When such volume of hate fills public space, the government refuses to act decisively, swiftly, then the message is clear, sir. Intimidation is tolerated and silence is the union's policy. Third, the education empowerment scheme under the Ministry of Minority Affairs has just used 8% of its total funds, while the 35% of the ministry's allocation, 27% under tribal affairs and 28% under scheduled tribes remain unutilized. So even schemes like or scholarship like Maulana Azad National Fellowship, pre-matric scholarship,
and Paro Pradesh have been hollowed out. So now I come to 777, which is the triple power grab. Over the last decade, the government has treated institutions as the government's own personal property. So the parliament is silenced, debates are curtailed, scrutiny is abandoned, and even the deputy speaker's post is kept vacant because dissent is inconvenient. So investigating agencies no longer investigate, they intimidate, chasing the opposition with raids and arrests. While convictions become negligible, as independent institutions weakened, public institutions are put on the auction block. Air India, BPCL, the shipping corporation, built by generation with public money, are being sold like distressed assets, hastily, without any sort of accountability. So this is described as reform, but it is actually a managed handover. When institutions are bent to serve power and national assets are reduced to headlines and handover, the constitution is not broken in protest, it's torn apart. So I come from an India where the Honorable Prime Minister says, na khaunga, na khane dunga. And I also come from an India where questioning the washing machine that gave reprieve to 23 of the 25 leaders who joined the BJP makes you the most corrupt one. So now I come to triple jumla on finances. Agriculture. So the budget waxes eloquent about coconut, cocoa, cashew, sandalwood, fisheries and AI advisories, but remains silent on MSP assurances, procurement expansion. There is no price stabilization fund, no diesel support, no fertilizer relief, and no electrical subsidy. This is diversification without security, and it leaves the majority of Indian farmers, trapped in distress. So even the PM Kisan scheme has been stuck at 6,000 rupees since December 2018. Despite soaring input costs and record diesel prices, so in actual, if we see real terms, farmers are earning less each year. A rupee in 2018 is not a rupee in 2026. So if I speak of healthcare, the government spends less than 0.26% of the GDP. And they might have questions on my source of information. If the need be, I will place all the sources before the table by 8 p.m. tonight. The government spends 0.26% of GDP on public health even today. The national health policy promised 2.5% of GDP. What we get instead is postponement, excuses, and under-allocation. In a country where illness is still the fastest road to poverty, this budget chooses flyover over first aid, optics over oxygen, and announcement over actual care. So if I speak of infrastructure, the smart city mission promised transformation in 100 cities with over 2 lakh crore. Yet a decade later, what we have is half-dug roads and half-built homes. Instead of finishing the job, this budget announces new economic regions. So under the Jal Jeevan mission, funds were cut by 74%, forcing states to pick up the bill. In higher education, 55,000 crore is spent on management, but 2.68 crore on infrastructure, not even enough to build a world-class lab. So now I come to my 999, the triple truth trap. And what I mean by truth is, the accountability on the government side primarily rests on 3 pillars. One is the RTI Act. But when I speak of transparency, it diluted the RTI Act by expanding personal information as a ground for refusal. Sir, if you speak of PM Cares, the PMO claims it lies outside the purview of RTI because it's a private fund. A fund that is created by public authority in a public office with the money of the people is being claimed as a private fund. There is no accountability. Sir, NFHS and NCRB data has been frozen because welfare still runs on census 2011. Sir, if I am to summarize the budget from the perspective of 3 stalwarts,
B.R. Ambedkar warned us. What is the moral verdict of the budget? If we have to look at it from the perspective of Dr. Ambedkar, Gandhi ji, or Swami Vivekananda, Dr. Ambedkar warned us that democracy is not just institutions. It is a constitutional morality. Gandhi ji taught us economics divorced from ethics is violence. Swami Vivekananda reminded us that a nation cannot rise by crushing the weakest. Well, this budget violates all three. In today's India, sir, tax does not follow income. Tax follows life. आज के भारत में टैक्स कमाई के पीछे नहीं, जिंदगी के पीछे है, चलता है सर. I will give you a small example. A baby is born, his milk and diapers are taxed. He grows, his education is taxed. He studies, his books, pencil and mobile data are taxed. He starts earning, his income is taxed. He saves for future, his savings are taxed. He spends to survive, his survival is taxed. He goes to work, his fuel is taxed. He falls sick, his illness is taxed. He grows old, pension and healthcare are also taxed. And Honorable Speaker, even after his death, the family still pays tax. बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स, कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स, सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स, जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स, काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स, बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स, और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है. दिस समराइजेस द बजट. सर, आई एम एड्रेसिंग द चेयर. I'm sure the finance minister will have a reply ready. When she is given the opportunity to speak, she can quote me, and if I am misleading the house, she can take my name and then place her arguments. Sir, from a baby's first milk to a citizen's final farewell, this government taxes life at every step. जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक हर कदम पर टैक्स. ये रिफॉर्म नहीं सर, ये लाइफ टाइम टैक्स ट्रैप है. सर, नाउ आई कम टू 1010, मेरा लास्ट ट्रिपल. मैंने 9 ट्रिपल का बात किया, अब 10वां कर रहा हूं. सर, आई विल एंड विथ 3 dates, 3 moments of history: 2016, 2021 and 2024. 3 elections, 3 verdicts, 3 decisive defeats for the BJP in West Bengal. And after this triple defeat, a 4th one is no longer a warning. It is approaching. Sir, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं. Let me come straight. Sir, the government want to punish Bengal. Let them proceed. We won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. मैं क्यों कह रहा हूं persist? क्योंकि पीएम आवास से लेके, सड़क से लेके, मनरेगा से लेके सारे पैसे बंगाल के पिछले 5 साल से ये सरकार ने रोक के रखा है. प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात किया है, हम स्वनिर्भर बंगाल क्या होता है काम करके दिखाया है. So you want to punish Bengal? Proceed, we won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. You want to profile and persecute our youth? We will protect them. You want to starve our schemes? We will sustain our people. Bengal's spine was not ever bent by surrender, nor softened by sermons of hate. It is forged in struggle, tempered in sacrifice, and is not for sale. Go ahead, send your audits. We will answer them. Unleash your agencies. We will confront them. Delay our clearances. We will chronicle every day stolen, every stolen day. But remember this: files can be frozen, funds can be stalled, voices can be suppressed, but memories can't be erased. And when the people rise and the ballot breaks the silence, we will settle the final account. You will wear the mask of the union, we will raise the mirror of the people. And when truth looks back, power will bend and we'll have to blink first.
So this reminds me again that I come from an India that celebrates labor as a backbone of the economy, the hands that build our highways, factories, ports, cities, this parliament. But I also represent an India where that very labor, when it travels from Bengal, is no longer seen as a labor, he's seen as a suspect, punished for the language he speaks. I come from an India where Northeast is proudly called Ashtalakshmi, and I also come from an India where Manipur bled for 864 days and the Prime Minister found no time to visit. I come from an India that derives its vocabulary from Ishwar Chandra Vidyasagar, and I also come from an India where Vidyasagar's bust was vandalized by ruling party at the center. I come from an India where we worship Ma Durga as Supreme Shakti, and I also come from an India where Ma Durga's ancestry is questioned by BJP leaders. So I really come from two India. And honestly, I'm tired of explaining this house which India I belong to. Because the truth are, they both exist. And until and unless we acknowledge the second one exists, we will never be able to be the first one we claim to be. So budgets can divide, politics can polarize, power can pretend, but there's something deeper than budgets, older than governments, and stronger than fear, which is the moral imagination of the people. When institutions weaken and language loses its faith, it is our literature, our culture, our shared memory that rises to remind the nation of who it is and who it must never cease to be. So I finally return to the Constitution. When you open the Constitution, it opens with the words, "We, the people of India." It's not a ceremonial phrase. It's a declaration of sovereignty. It's a reminder that power flows upward from the people, not the other way down. That governments may rule, but people remain the supreme. That sentence is not meant to be recited, it is meant to be lived. And as long as people remember it, no fear can last, no injustice can endure, and no republic can ever truly be taken away. And thus today, I do not end with slogans, I end with conscience, and I end with voice of Bengal. এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না, এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না, এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না, এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না। আমি আমার দেশকে ফিরে কেড়ে নেব। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। Thank you. Next speaker, Sri T.R. Baluji. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity to discuss on the subject matter of budget estimate 26-27. First of all, I would like to congratulate Madam Nirmala Sitharaman ji for having brought the budget estimates for the consecutive 9th time. Thanks to Sitharaman, who has also done the same thing in the same parliament. Sir, Finance Minister claims she aims at develop India by 2047. India has programmed like artificial intelligence, biopharma, semiconductors, critical minerals, and they are given lot of priority and importance. But the question is, how efficiently Madam Nirmala ji is going to implement them with a sustained push. So strategy of the government is said to be reducing revenue expenditure and increasing capital expenditure. It is also claimed that revenue expenditure has fallen by 11% in the last 10 years. That is from 88% in 2014-15 to
to 77%, 26-27. It is also stated that reduction of the revenue expenditure included 7% of subsidies. But what is the reality? The usual practice is reduction of subsidies in the budget is made, and in the next 6 months you come up with additional demands for subsidies through supplementary demands. That is what I have also mentioned in the last supplementary demands in 25-26. Within 6 months things became haywire. Now at the end of the current fiscal year, you are saying that the revenue receipts shortfall is around 78,086 crores. Decrease in revenue expenditure is 1,05,503 crores. The fall in capital expenditure is 1,44,376 crores. It's a very huge fall. It gives no hope of credibility. Budget 26-27. Expenditure estimated is 53.43 lakhs crores. Expenditure proposed in 25-26 was 50.65 lakhs crores. Now FM is asking 3 lakh crores more in upcoming fiscal year. Usually the government used to announce big schemes in the budget, but even after several months, no progress is the result. Last year, 15th August, Employment Linked Incentive (ELI) scheme was announced, an incentive to labor and industry to provide additional 3.5 lakhs crores, 5 crores jobs, with the outlay of 99,446 crores was launched, but the scheme has not taken off. Another non-starter is Research and Development Innovation RDI scheme, announced with the effect from 1/7/25 and was said to be implemented with a corpus of 1 lakh crore, and provision of 20,000 crores was made in 25-26 budget. But no progress has been achieved in this effort. Also, this was also properly responded by the Honorable Minister during his reply in the Lok Sabha. Coconut production in Tamil Nadu. Tamil Nadu is the second largest coconut production state. 12 lakh acres are under cocoa cultivation next to paddy. Besides Pollachi, Pattukottai, Tiruchi, Dindikkal and others, southern districts are major coconut producing districts. It has got high export potential to an extent of 3,500 crores per year. The production has fallen because of the root diseases, but Government of India has not taken care and the root diseases still remain. Economic survey pointed out that the agricultural growth has slowed down to 3.5% in 25-26 from 4.4%, nearly 1.1% fall. The tariff and trade agreement unilaterally announced by USA bound to open floodgates to import of agricultural products into India. This will be disastrous for farmers and farm sector. The finance minister said in her speech that rich value crops like coconut, cocoa, sandalwood, cashews, etc. will be given special support. But the allocation was just 350 crores only. The farmers' organization are condemning this announcement of government is nothing but a naive rhetoric. Banana is another crop that requires special attention and support from Government of India. Tamil Nadu is #1 in banana cultivation and exports around 4,000 crores every year. Government of India should come forward to give special intensive to banana cultivation to boost exports. Union government has been giving stepmotherly treatment to Tamil Nadu, and there has been no special scheme or financial allocation so far. Even the prestigious projects like Sitharaman, which were
implemented by UPA has been shelved on political grounds. UPA government had gifted 69 large projects and very important projects in all sectors during 2004 and 2014. The last of the schemes included the Tamil as Sammuri, Chennai port as to Madurai elevated bridge of 21 kilometers, abolition of Sanwa to protect textile industry, new railway station, new railway division at Salem, Thiruvarur Central University, IEM at Trichy, Indian Maritime University at Chennai, etc. On the contrary, it lasts 12 years. For the past 12 years, one project has come, that is Ames Madurai. Not yet taken up. Ames Madurai is still under the ground. It has not yet been taken up. Tamil Nadu CM had also stated during UPA, Tamil Nadu was allotted 11% of plan expenditure, and now Tamil Nadu is given 0 only. Government of India is not funding Metro Rail Project number 2. Samagra Shiksha fund to the tune of 3,548 crores, not at release. Madurai and Coimbatore Metro which has been provided 21,000 crores, and project submitted to the Central Union Government has not given approval. But at the same time, small towns like Agra, Bhubaneswar, Navi Mumbai and Indore have been permitted. Jal Jeevan Fund rupees 3,112 crores had not been released. Railway schemes 289.73 crores to Thiruvananthapuram Kanyakumari not released so far for the land acquisition. Further, to purchase 931 hectares of land, funds have not been provided. CM Tamil Nadu has also urged that the devolution from the divisible pool from taxes should be increased to 50%, but it has fallen on deaf ears of the union government, and at present 41% is retained. I also urge the Government of India that cess and other taxes which are not being shared with the state should be abolished immediately, or they should be brought under the divisible pool. Such anti-federal attitude and exploitation must be ended. What happened to the promises made by the Honorable Prime Minister of India? 2 lakhs jobs per year. What has happened? 15 lakhs per family. What has happened? Nobody, it's all dumbfounded. For this question, always for the past 10 years, Government of India, the people of Government of India representing the Government of India, they are keeping lukewarm position only. Much talked about MSP not implemented. Double the agriculture income not implemented. And Dr. Swaminathan's recommendations have become only slogans to every election. People of the industry, business, the middle class, and even the ordinary men on the street have expressed dissatisfaction and said your budget is nothing but rhetoric of a sloganeering government with little use to the common mass. Before I conclude, how are you going to arrest the jet speed depreciation of rupee against US dollar? It is already around 92 per dollar. Prime Minister has lauded this budget as a historic. There is proverb in Tamil, Kakaki Tampunjam Pungunji. It means to a crow, its offspring is golden. Thank you very much. Thank you very much. Next speaker, Sri B. Nagaraju. Respected Speaker, sir, మన గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క దూరదృష్టి నాయకత్వాన్ని ప్రశంసిస్తూ 2026-2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ముందు చూపుతో మరియు ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి కేంద్ర బడ్జెట్ను సమర్పించినటువంటి గౌరవనీయులైన ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారిని అభినందిస్తూ వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరపు బడ్జెట్ను 3 కర్తవ్యాల ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుంది అధ్యక్ష.
అందులో భాగంగా మొదటి అంశం వచ్చేసి ఆర్థిక వృద్ధిని వేగవంతం చేయడం, రెండవ అంశం వచ్చేసి సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం, మూడవ అంశం సమగ్రాభివృద్ధిని నిర్ధారించడం. ఈ 3 అంశాల ఆధారంగా ఇది స్పష్టమైన మ్యాక్రో ఆర్థిక దిశను నిర్దేశిస్తా ఉంది అధ్యక్ష. ఇకపోతే ఈ బడ్జెట్లో ముఖ్యంగా అధ్యక్ష నాన్ డెబిట్ రిసిప్ట్స్ కోసం 36.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలను మరియు మొత్తం వ్యయంలో 53.5 lakhs కోట్లను అంచనా వేయబడింది అధ్యక్ష. మూలధన వ్యయం వచ్చేసి 12.2 లక్షల కోట్లకు పెంచబడింది అధ్యక్ష, ఎన్నడూ లేని విధంగా. అంతేగాక ఇది వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్లో మౌలిక వసతుల మరియు ఆధారిత వృద్ధికి ప్రభుత్వం యొక్క కట్టుబాటును చూపిస్తా ఉంది అధ్యక్ష. ఇకపోతే ఆర్థిక లోటు వచ్చేసి జీడీపీలో 4.3% తగ్గించబడింది. రుణం మరియు జీడీపీ నిష్పత్తి 55.6%కి తగ్గేలా అంచనా వేయబడింది అధ్యక్ష. ఈ సంఖ్యలన్నవి అభివృద్ధి మరియు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ మధ్య సమతుల్యతను ప్రతిబింబిస్తా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష ప్రతిపక్షాలు ఇంతసేపు వారి యొక్క స్పీచ్లో ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా గవర్నమెంట్ మీద నిందలు మోపుతూ బడ్జెట్ మీద ఇది చేస్తామన్నది సరికాదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే భారత్ అనేది తయారీ రంగంలో మేక్ ఇన్ ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ వ్యూహాత్మక రంగాలకు పెద్దపీట వేయబడింది అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా బయోఫార్మా శక్తి కోసం 10,000 కోట్ల రూపాయలను మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ భాగాల తయారీకి 40,000 కోట్ల రూపాయలను, కార్బన్ క్యాప్చర్ సాంకేతికలకు 20,000 కోట్ల రూపాయలను మరియు ఛాంపియన్ ఎస్ఎంఈల కింద 10,000 కోట్ల రూపాయల నిధిని ఈ బడ్జెట్లో ఏర్పాటు చేశారు అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక యుగంలో పాశ్చాత్య దేశాలతో పోటీ పడుతూ టెక్నాలజీని ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజలకు అవసరాల కోసం ఏ రోజుకి ఆ రోజు పోటీ పడుతూ ఈ బడ్జెట్లో 7 హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లను ప్రతిపాదించబడ్డాయి అధ్యక్ష. అంతేగాక 20 జాతీయ జల మార్గాలు అభివృద్ధి చేయబడుతున్నాయి అధ్యక్ష. మూలధన వ్యయం కింద చరిత్రాత్మక స్థాయిలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఉపయోగిస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇకపోతే ఇది సాధారణ బడ్జెట్ కాదు అధ్యక్ష, ఇది నిర్మాణాత్మక సంస్కరణల బడ్జెట్గా భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష. సరఫరా గొలుసులను మరియు బలోపేతం చేయడమే కాకుండా ఎగుమతులను పెంపొందించడం మరియు సూక్ష్మ మరియు మధ్య తరహా పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా రైతులకు మద్దతు ధర ఇవ్వడంలో మరియు భారతదేశాన్ని గ్లోబల్ పోటీలో ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో భాగంగా ముఖ్య ఉద్దేశంగా ఈ బడ్జెట్ను రూపొందించారని తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఈ బడ్జెట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఎలా ప్రయోజనం చేకూర్చిందో ప్రత్యేకంగా 2 విషయాల్లో ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. 16వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి 64,320 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించబడ్డాయి అధ్యక్ష. విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్ర వాటా 4.21%గా పెరిగింది. ఇది రాష్ట్ర అభివృద్ధి అవసరాలను గుర్తించిన నిర్ణయంగా భావిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ విషయంలో మేము గౌరవ నిర్మలా సీతారామన్ మేడం గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ విషయంలో డెడికేటెడ్ రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ కారిడార్ల ప్రకటన మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చారిత్రాత్మక అవకాశం కల్పించినటువంటి అవకాశం మరియు ఖనిజ సంపద ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా మేము తవ్వకాల దశను దాటి విలువ ఆధారిత పరిశ్రమల వైపు అడుగులు వేస్తూ ప్రాసెసింగ్ మరియు పరిశోధన ఆధునిక తయారీ వైపు ముందుకు సాగుతున్న విధంగా పనిచేస్తా ఉంది అధ్యక్ష ఈ బడ్జెట్ అన్నది. ఏపీలో వచ్చేసి అధ్యక్ష మాకు తీర ప్రాంతం సుదీర్ఘంగా ఉంది అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా మత్స్య మరియు ఎగుమతులకు క్లస్టర్లకు మద్దతు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ రూపొందించారు అధ్యక్ష. అంతేగాక డ్యూటీ ఫ్రీ దిగుమతుల పరిమితిని 1% నుంచి 3% వరకు పెంచడం వలన వ్యయం భారం తగ్గుతుంది అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా భారతదేశ ఈజెడ్లో చేపల వేటకు ఇచ్చినటువంటి మద్దతు మా మత్స్యకారులకు ఆదాయం పెంపుకు దోహదపడుతుంది అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష ట్రైబల్ ఏరియాలో భాగంగా అరకులోయలో సస్టైనబుల్ మౌంటైన్ ట్రైల్స్ ను మరియు పులికాట్ సరస్సు యొక్క పరిసరాల్లో ఈ పక్షి వీక్షణ మార్గాలను ఆంధ్రప్రదేశ్కు పర్యావరణ పరంగా పర్యాటక పరంగా కేంద్రంగా నిలబడుతున్నాయి అధ్యక్ష. ఇవి కాక ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడమే కాకుండా గిరిజన ప్రాంతాలకు మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నట్టుగా ఈ బడ్జెట్లో కేటాయించారు అధ్యక్ష. ఇకపోతే ముఖ్యంగా అధ్యక్ష 600 కోట్లతో నైపుణ్య మరియు రూపాంతర పైలట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపిక చేయడం చాలా గర్వంగా ఉంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే యువతకు పెద్ద అవకాశంగా మారుతా ఉంది అధ్యక్ష. ఇది మా యువత ఉద్యోగార్థులనే కాకుండా ఉద్యోగ సృష్టికర్తలుగా మార్చే దిశగా ఇది సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష మా ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముఖ్యంగా ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్లో భాగంగా హైదరాబాద్ టు చెన్నై టు బెంగళూరు
ఈ హై స్పీడ్ కారిడార్ అనేటివి మా రాష్ట్రానికి చాలా చాలా ఉపయోగంగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ హైదరాబాద్ టు చెన్నై అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా మా అమరావతి అనేది టచ్ అవుతుంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈ బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ అనే కార్యక్రమంలో మా సొంత పార్లమెంట్ అనేటువంటి కర్నూలు ముఖ్యంగా ఉంది కాబట్టి చాలా చాలా గర్వంగా ఉంది అధ్యక్ష. అంతేగాక ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్లో అధ్యక్ష మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ జీవనాధారమైనటువంటి పోలవరం జీవనాడు లాంటిది అధ్యక్ష. అది 2027 కల్లా కంప్లీట్ చేయాలనే ప్రతినిశ్చయంతో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఈ జలవనరుల శాఖకు ముఖ్యంగా అత్యధికంగా నిధులు కేటాయించడం చాలా చాలా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అంతేగాక అమరావతి నిర్మాణం అనేది మాకు స్టేట్ క్యాపిటల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అధ్యక్ష. ఆ స్టేట్ క్యాపిటల్ నిర్మాణంలో భాగంగా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి పట్టణాభివృద్ధి శాఖ కూడా నిధులు పుష్కలంగా కేటాయించినందుకు నిర్మలా సీతారామన్ మేడం గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అంతేగాక ఈ బడ్జెట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ను భారతదేశ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా గుర్తించింది అధ్యక్ష మా స్టేట్ను. ఇకపోతే అధ్యక్ష మా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులైనటువంటి గౌరవనీయ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క దూరదృష్టి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఈ కేటాయింపులు అన్నటివి వేగవంతమైన అభివృద్ధిగా మార్చగలవు. ఈ పెట్టుబడులను ముఖ్యంగా పరిశ్రమలకు మరియు ఏపీ యొక్క భవిష్యత్తును మార్చగలని చెప్పేసి భావిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష ఫైనల్ గా ఇప్పుడు నా నియోజకవర్గం కర్నూలు పార్లమెంట్ గురించి 2 విషయాలు తెలియజేయాలని తెలుసు అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్ లో మా కర్నూలు పార్లమెంటుకు హైదరాబాద్ బెంగళూరు కారిడార్ లో భాగంగా కర్నూలు పార్లమెంట్ అనేది మధ్య ప్రాంతంలో వస్తుంది అధ్యక్ష. మాకు చాలా సునాయాసంగా 2 రాష్ట్రాల మధ్యన 2 మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ మధ్యన మా కర్నూలు పార్లమెంటుకు మెట్రో ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ వస్తున్నందుకు చాలా చాలా గర్వంగా ఉంది అధ్యక్ష. అంతేగాక ఈ రోడ్ మినిస్ట్రీలో భాగంగా ఈ రోడ్ మినిస్ట్రీకి అత్యధికంగా డబ్బులు కేటాయింపులు జరిగినాయి అధ్యక్ష ఈ బడ్జెట్ లో. అందులో భాగంగా మా కర్నూలు బళ్ళారి నేషనల్ హైవే వేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. అంతేగాక ముఖ్యంగా అధ్యక్ష గత బడ్జెట్ లో మా కర్నూలు ప్రాంతంలో ఓర్వకల్కు ఇండస్ట్రియల్ లోడ్ ఇచ్చినటువంటి గంట కూడా ఎన్డీఏ కూటమి అధ్యక్ష. అందులో భాగంగా మాకు పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద ఆ ఓర్వకల్ హబ్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ హబ్స్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మా అంతా వెనకబడ్డ ప్రాంతం అధ్యక్ష. ఈ పూర్వోదయ స్కీమ్ లో భాగంగా మంత్రాలయం రైల్వే కనెక్టివిటీ కూడా వేయాలని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం అధ్యక్ష. అంతేగాక ముఖ్యంగా అధ్యక్ష అటల్ భుజన్ యోజన కింద, ఎందుకంటే మా రాయలసీమ ప్రాంతం అంతా చాలా డ్రాట్ ఏరియా, ఆ ప్రాంతంలో గ్రౌండ్ వాటర్ డెవలప్ చేయాలంటే అటల్ భుజన్ యోజన పథకం కింద సెలెక్టెడ్ కాబట్టి మా జిల్లాకు ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. రెస్పెక్టెడ్ స్పీకర్ సార్, చివరిగా ముఖ్యంగా మా గౌరవనీయ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల యొక్క నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పరిపాలనా సామర్థ్యం మరియు సాంకేతిక దృష్టి మరియు సంస్కరణాత్మక పాలనలో నిరంతరం ముందంజలో నిలిచి ఉంది అధ్యక్ష. అలాగే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సమన్వయం ఉన్నప్పుడు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ప్రజలకు స్పష్టమైన ఫలితాలని అందిస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి స్పీకర్ గారికి మరియు నా కర్నూలు పార్లమెంట్ ప్రజలందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను అధ్యక్ష. నమస్కారం అధ్యక్ష. Thank you very much. Next speaker, Sri Anil Desai ji. Thank you, Deputy Chair, sir. So, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 26-27 in this House on auspicious day of Maghi Purnima. Lot of expectations were there from the Indian population, common people and all alike. The total expenditure estimate of 53.47 lakh crore, that is 7.7% higher than revised estimates of 25-26 that was presented. In this, interest payments account for 26% of the total expenditure and which is 40% of the revenue receipts. Whereas the total receipts other than borrowings are estimated to be 36.51 lakh crores, which is 7.2 higher than the revised estimates of 25-26. Revenue deficit in 26-27 is targeted at 1.5% of the GDP, which is the same like revised estimate of 25-26. It is unchanged. Fiscal deficit of 26-27 is targeted at 4.3% of the GDP, which is lower than the revised estimates of 4.4 of GDP of 25-26. So as far as debt is concerned, government aims to
reduce its outstanding liabilities to around 50% of the GDP by 2031, that is in 5 years. In 26-27, outstanding liabilities are estimated to be around 55.6 of the GDP, 55.6% of the GDP. This budget 26-27 emphasized the need for fiscal consolidation, targeting a reduction of debt to GDP ratio to 50% plus or minus 1% by year 2030, that is in 5 years, which is now 55.6% of the GDP. So fiscal consolidation is being pursued by cutting total expenditure by 5%, but no significant growth momentum is expected, with only 10.9% of the growth in capital expenditure in terms of GDP. There is no corresponding increase in capital expenditure. So there is marginal increase in union government revenue expenditure, which shows at 39.44 lakh from 25-26 revised estimate to 41.25 lakh crores in 26-27. That is a growth of around 4.5%. There is only a marginal increase in transfer towards centrally sponsored schemes, rising from 5.42 lakh crore in 25-26 to 5.49 lakh crore in 26-27. That is just an increase of 1.28%. So it is to be noted that Finance Commission grants have declined from 1.32 lakh crore in 25-26 budget estimates to 1.29 lakh crore in 26-27 budget estimates. So as far as revenue receipts are concerned, only marginal increase is there in revenue receipts from 34.30 lakh crore in 25-26 to 35.33 lakh crores in 26-27. That is rise of around 2.90%. There is no estimate of GST compensation cess collection, and budget is silent about the future of GST compensation cess. I think I would request Honorable Finance Minister to shed some light on this aspect, because we would like to know how the compensation cess stands and what is the future course of it. The share of the states has fallen from 14.22 lakh crore in 25-26 to 14.22 lakh crore in 25-26 to 13.93 in 25-26 RA, which is decline of minus 2.07 for year 26-27. The estimated tax share to states in rupees 15.26 lakhs crore, which is only 7.3 higher than the previous year. Even after considering the 16th Finance Commission tax devolution, the centre's tax share to states amounts to 34.65 instead of which is mandated of 41%. 16th Finance Commission recommended state share in divisible pool at its present level of 41%. For horizontal devolution, there is a change in the criteria and weights from 15th Finance Commission. The major change is the criteria inclusion of contribution to GDP, that is 10% weightage is given, and demographic performance by each state. With regard to revenue deficit grants, the 16th Finance Commission has not recommended that the same be granted to the states. When states fall of revenue deficit, they try to get revenue deficit from something from the center to carry on with their projects like development or wherever it is needed. But this time around, Finance Commission has regretted, it has negatived the recommendation, which will put the stress on the states, because states are not able to generate any kind of significant revenue, as GST has already subsumed all taxes and there are hardly any avenues left for the center to generate revenue of its kind. My state of Maharashtra contributes the maximum to the central exchequer. In recent years, we've seen, sir, that we've been contributing more than 5 lakh crore, 5 to 5.5 lakh crore to the central exchequer, but what we get in return is hardly around 3 lakh crore. Though Maharashtra CM
Sri Fadnavis has said, and he has praised the entire budget, substantiating the facts that around 1 lakh crore will come to the state of Maharashtra, out of which 98,000 crores will be in the form of devolution or the tax returns what we'll be getting by it, and 12,000 crores for various projects which are there in Maharashtra which have come up, that 26-27 allocations have been made for different projects. Now, Maharashtra is expected to receive close to rupees 1 lakh, but the basic thing, if we go by the budget, whatever has been stated by the CM and whatever has been praised, I mean, the reality is far from what the picture exists on the ground. The projects which have been funded or projects which have been allocated, good amount of, as far as infrastructure is concerned or urban projects are urban development projects are concerned, the projects which have been there in the pipeline, projects which have been initiated and which are in progress, they have been exorbitantly cost escalation has taken place, the overvaluation is being done, and it is favoring the contractors, which comes from to the government, and it gives suspicion for a lie or for suspicion to raise our doubts as far as corruption is concerned in Maharashtra. So whatever projects which are there, Mumbai-Aurangabad high-speed rail, that is 6,103 crore has been provided for that corridor. Mumbai metro projects, 1,702 crore has been provided for that. Mumbai urban transport project MUTP 3, 462 crores have been allocated. Now green mobility projects in MMR region, that is Mumbai metropolitan region, 155 crores have been allocated. Intelligent transport system ITS on Samriddhi Mahamarga, that is 680 crores. Now these are, and Pune Metro Rail project, that is 517 crores. These projects which ought to have been completed by now, but it is not yet completed, that escalation is on, overvaluation is being done, and this non-completion is not only proving inconvenient to the people, but it comes as a hindrance in the progress of Maharashtra. And who is benefiting out of it? Only contractors are benefiting out of it, and that is in connivance with the government officials or the politicians who are there and the treasury benches of Maharashtra. So these are the things, I mean, not leveling the charges, but this is what is seen by the people, felt by the people, and people feel that progressive state like Maharashtra, why it is taken back seat. Now, sir, finance and economy is concerned, as far as this budget is concerned, high-level committee on banking for Vikasit Bharat it is been proposed. Now, banking sector, that is the backbone of Indian economy. Now, this public sector, which had the strength, yesterday only or today only in the papers it has come, that State Bank of India has registered a 31,000 crore profit in the last quarter. So that is the strength and that is the capacity potential what our public sector banks, insurance or whatever public sector units are there. Instead of strengthening them, the government steps are going in the direction of weakening them. Why are we going for disinvestment? Why are we coming with the disinvestment plan? Every year we present the budget. Last year's, I think 75 to 80,000 crores were meant to be recovered in the revenue was to be received by way of disinvestment. But what has happened? Not even 40,000 crores came our way. And today, banks like IDBI, which is just, IDBI employees are worried that why it is being thought or why it is being put on the panel that it will be privatized. Private banks are not going for the people, they are not going for the employment, they are not going to help you. Now in the banks, instead of having where the potential is so large, when you have good profits, banks which were shouldering the responsibility of addressing the unemployment issue in the country, now they are not, because government has tied their hands. Whenever we talk to managements, they are saying we are not getting clearance from the finance ministry. So if this be the case, where would the people go? When we call that brain drain is happening day in, day out from India, where the youth would go if they are not finding, despite having good qualifications, they are not having any chances to get employment into banks or public sector, this thing where they would make their future. If that is so, they have no alternative but to leave the country.
And this is a sad situation when we talk of creating employment. On one side, wherever employment opportunity, capacity is there, employment is not given. Even this is happening in case of insurance companies also. Insurance companies who were doubted that one day all three general insurance companies were to be made one, or they were to be by way of disinvestment, they were to be decided. But now that, their solvency ratio and everything which has come up with the employees' hard work, now the government's stance is, fortunately it has changed. But these are the things, which we need to look. Labor and employment, what has happened to the labor code? Labor code has given, enough of opportunity, or it is one lopsided labor code is been developed, which is benefiting the employers, and there is absolutely no say for the employee, no say for the labor. Today, what is the situation? When we have started saying that gig economy, why it has come? In this gig economy, people who are working, those poor who are working there, they are slogging day in, day out, all 24/7. Who are they? They are engineers, they are chartered accountants, they are lawyers. They are not getting that kind of employment. Self-profession is easy to say that you can give jobs to others. You have the capacity to give jobs to others, but when the question comes of sustenance, the job is required for the people who have gained some kind of qualification, which is not so. Where policy is going wrong, government needs to think over this and really think for the youth of the people. Now skill training, lot many things are coming up, but where the things are going. So 2 minutes. Education. Now government, the new national education, new education policy, it has a lot of flaws. What about the teachers? What about the students? There is a wide gap between urban and rural teaching, rural institutions, where you don't get teachers, and teachers also are facing that problem is not yet addressed, that TET, Teachers Education Eligibility Test. Those who joined as a teacher long back when this law wasn't there, even they are made to appear for that TET, Teachers Education Test. So this flaw should be removed so that a society is built, because teachers we look up to, that they educate the society. So as far as health is concerned, whatever provisions and allocations are there, they are not up to 2.5% as declared by the government, not provision of 2.5% to the GDP. Now what is the situation in the state, my state of Maharashtra? If you see the plight of the government hospitals, no one would dare to go, no doctors, there is no medicine, patients are lying there are no beds for patients to accommodate on the beds, they are lying on the corridors. And this kind of things which is happening not only in rural areas in the city like Mumbai also. Now please try to conclude. Once. And agriculture, we are giving a 10,000 crore credit line, everything is spelled out, everything is there on the paper, but what is the reality? The suicides which are becoming suicides has become a pattern. By the day numbers are increasing in the state of Maharashtra. What is happening? Why it is happening? Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, really is it working? It is on the paper. Why, when a farmer is paid a claim of rupees 3 and 6, you can imagine how that working is, what the formula is, who is formulated that, and what is the agency is doing, what are the people doing. And a poor farmer his dreams are finished, he has nothing to look up to, and they are finishing their lives because there is nothing, no tomorrow for them. So last but not the least, the main is Manrega. Now it is renamed as VBG Ramji. But what is the basic character of this scheme itself is changed. Now it is the government, if needed, the central government was funding 90% of it, 100% of it. But now if it is needed by the state would request the guarantee of days, which shown that it is 108, it is extended from 100 to 125 days. What is the use of it? You have changed the character, killing the Manrega, killing the poor labor in the country. Yes, and thank you. To conclude, I'm just concluding, I would say that when we think that robots and AIs will be the future of tomorrow, Viksit Bharat, but see, government should ensure that people who are living human beings in India, they are taken care of before the AIs rule over. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Sri Dileswar Kameti. Please. Dileswar Kameti.
मुझे वर्ष 2026-27 के आम बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं कि उनकी अगुवाई में एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम किया। महोदय, समावेशी विकास का यह आम बजट वाकई में राष्ट्रहित और जनहित के लिए अमृत एवं संजीवनी के रूप में कार्य करेगी। महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियां एवं योजनाओं जो समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गों को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, यह बजट भारत के किसानों, युवाओं एवं महिलाओं तथा सभी वर्गों के उत्थान तथा विकास के लिए है, किंतु हमारे साथी को यह सब दिखाई नहीं पड़ता है। न जाने उन्हें यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, उनके चश्मे में इस तरह दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। महोदय, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने किसान भाइयों के लिए कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को प्राथमिकता देते हुए परिवर्तनकारी राष्ट्रीय सहकारिता नीति जैसी योजनाओं को कार्यान्वित किया है। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए रोजगार पाने वाले विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं नियोक्ताओं की सहायता जैसी योजनाएं शामिल किया है। महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समावेशिता के मार्गदर्शन प्रेरणा से ईंधन के रूप में हमारे सुधार का उपयोग कर कृषि, एमएसए, एमबी, निवेश और निर्यात जैसी 4 शक्तियां इंजन गति प्रदान कर रही है। यह बजट कृषि क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्चतर समृद्धि और उत्पादकता की ओर अग्रसर है। युवाओं का सशक्तिकरण हमारी समृद्धि युवाओं को पर्याप्त रूप से साधन संपन्न करने और सशक्त बनाने पर निर्भर करती है। एनडीए की सरकार ने विकास के प्रति मानवोचित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया, जो पिछले 11 वर्षों में इन विकास कार्यक्रमों ने रिकॉर्ड समय में सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस, सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के लिए सेवाएं सुलभ कराई है। वहीं करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराकर गरीबी की चिंता समाप्त कर दी है और रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। इसमें सभी जातियों और सभी स्तरों के लोग शामिल हैं। हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लोगों की क्षमता में वृद्धि करनी होगी और उन्हें सशक्त बनाना होगा। गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता, उनकी आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश की प्रगति होती है जब वे प्रगति करते हैं। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल सहित बिहार के सभी किसान भाइयों के हित से संबंधित मुख्य अति आवश्यक मांगों के लिए आग्रह करता हूं। वर्ष 2008 के प्रलयकारी बाढ़ की तबाही के बाद कोसी क्षेत्र के किसान भाइयों ने बहुत ही कष्ट सहन कर मखाना के साथ मक्का एवं जूट की खेती करना शुरू किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा मखान बोर्ड की स्थापना की गई है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के साथ बिहार के सीमावर्ती कोसी एवं मिथिला क्षेत्र में देश के कोने कोने से मखाना के साथ मक्का एवं जूट की खरीदारी हेतु व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है, जिसके लिए बड़े स्तर पर
व्यापार केंद्र अति आवश्यक एवं अपेक्षित है, जिसमें चौड़ी सड़क, रेलवे का कंटेनर डिपो, देश के सभी महानगरों के साथ रेल कनेक्टिविटी, भारी वाहन पार्किंग, उच्च क्षमता का भंडार, कोल्ड स्टोरेज, राष्ट्रीयकृत बैंक, भोजनालय, शौचालय के साथ अतिथि गृह का निर्माण हो, जिससे किसानों एवं व्यापारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल एवं बिहार के कोसी मिथिला वासियों के लिए एक केंद्रीय कृषि अनुसंधान महाविद्यालय की स्थापना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक एवं उपेक्षित है, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण संबंधी सभी विषयों का पठन पाठन हो सके। आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान महाविद्यालय की स्थापना की जाए। रेलवे बनी बिहार के विकास की धुरी है। 2019 से 2014 रेलवे बजट में औसतम 1132 करोड़ बजट था, जबकि 2026-27 में रेलवे बजट बढ़कर 10,370 करोड़ हुआ। बढ़ा हुआ बजट सीधे सीधे परियोजनाओं, रोजगार और बेहतर सेवाओं में तब्दील होता दिख रहा है, जिसका सीधे लाभ बिहार को मिल रहा है। महोदय, अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल में रेलवे संबंधी मुख्य अति आवश्यक समस्याओं का समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत सीतामढ़ी जयनगर भाया निर्मली तथा ललितग्राम वीरपुर नई रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास कर यथाशीघ्र निर्माण कार्य शुभारंभ कर तथा रेल परिचालन करने की कृपा की जाए। गाड़ी संख्या 15949 और 15950 डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन गलगलिया अररिया रेलखंड होकर फारबिसगंज सरायगढ़ दरभंगा के रास्ते करने की कृपा की जाए। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली भाया कटिहार, बरौनी एवं भाया कटिहार हाजीपुर होकर 3 राजधानी ट्रेन का परिचालन किया जाता है। उन तीनों में से किसी एक राजधानी ट्रेन को नवनिर्मित गलगलिया अररिया रेलखंड होते हुए फारबिसगंज राघोपुर तथा दरभंगा के रूट से परिचालन करने की कृपा की जाए, जिससे बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को इसका लाभ मिल सके तथा समय एवं दूरी भी कम होगी। छात्रों, युवाओं, किसानों, व्यापारियों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, कोर्ट कचहरी की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे के त्रिवेणीगंज से पटना भाया सरायगढ़ दरभंगा होते एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन रात्रि में दोनों तरफ से किया जाए। साथ ही सुपौल से सियालदह कलकत्ता के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाए, जिसे क्षेत्र के व्यापारियों तथा उस क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र के जनता को इसका लाभ मिल सके। बिहार राज्य के सुपौल जिला अंतर्गत NH 387 सुपौल से बरिया मंच होते हुए भाया मरौना एवं मधेपुर होते हुए दरभंगा तक सड़क एवं उप सड़क के मध्य कोसी नदी में पुल का निर्माण करने की कृपा की जाए। अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं 2026-27 के आम बजट का समर्थन करते हुए बिहार के समस्त जनता एवं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री बजरंग सोनेवानी जी। मुझे आपने बोलने का मौका दे दिया। मैं एनसीपी शरद पवार पार्टी से हूं। आदरणीय शरद पवार साहब से कृपा से मैं ये सभागृह में हूं। मुझे बहुत खेदजनक बात ये बजट पे बात करते टाइम पे बोलना है कि महाराष्ट्र के वित्त मंत्री जो डेप्यूटी सीएम थे, उनका निधन 14 दिन पहले हो गया। ये सभागृह के सदस्य थे। पहले मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सन 2026-27 या अर्थसंकल्पावर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभारी आहे। महोदय, यावेळच्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारचा कोणता स्पष्ट दृष्टिकोन, ठोस धोरण किंवा देशवासियांसाठी काहीतरी करण्याची ठाम इच्छाशक्ती दिसून येत नाही। हा अर्थसंकल्प घाईघाईत कोणताही सखोल विचार न करता जमिनीवरील वास्तव्यानं समजून तयार करण्यात आलेला नाही।
नेहमीप्रमाणे यालाही अर्थसंकल्पना म्हणता सरकारचा आणखी एक जुमला बजेट म्हणणे अधिक योग्य होईल. महोदय, मी या सभागृहापुढे काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडू इच्छितो. मागील अर्थसंकल्पात मांडलेले मुद्दे यावेळेस केवळ रंगरंगटी करून नव्या स्वरूपात पुन्हा सादर करण्यात आलेले आहेत. महोदय, माननीय अर्थमंत्री महोदयांनी सुधार एक्सप्रेस या संकल्पनेची मोठ्या गाजावाजात घोषणा केली आणि सरकारने 350हून अधिक सुधारणा केल्याचे सांगितले. मात्र 350 सुधारणा नेमक्या कोणत्या याचा तपशील देण्यात आलेला नाही. जीएसटी सोडल्यास कोणताही ठोस सुधारणा झाली हे स्पष्ट होत नाही. जीएसटी सारखा विषय गोरगरिबांना लुटण्याचा विषय जीएसटी मध्ये होतो. जीएसटी मध्ये बरेच काही बदल केले, हे बदल सुद्धा चुकीच्या पद्धतीने आहेत असं माझं मत आहे. महोदय, जीएसटी बाबत सांगायचे झाले तर हा कर घाईघाईत रात्री 12 वाजता घंटा नाद करत लागू करण्यात आला. विरोधकांनी वारंवार सूचित केले ही सर्व संबंधित चर्चा करून विचारपूर्वक हा कर लागू करावा, पण सरकारने कोणतीही सूचना मान्य केली नाही. आज सरकार स्वतःच्या चुकीच्या निर्णयामुळे निर्णय झालेल्या अडचणी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न सुधार एक्सप्रेस या नावाखाली करत आहे. माझा सरकारला थेट प्रश्न आहे की तुमच्या चुकीच्या जीएसटी धोरणामुळे ज्या व्यापाऱ्यांचं, उद्योजकांचं आणि सामान्य नागरिकांचं नुकसान झालं त्या सर्व लोकांना सरकार नुकसान भरपाई देणार आहे का? महोदय, एमएसएमई क्षेत्रासाठी दरवर्षी आश्वासने दिली जातात, पण वास्तव्य असे आहे की काही सरकारच्या काळात लघु मध्यम उद्योग दिवसेंदिवस अडचणीत सापडत आहेत. अनेक छोट्या उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी सरकारकडे कोणते स्पष्ट धोरण नाही. सरकार याच्यासाठी कुठलीही पावले उचलत नाही. त्याच्यामुळे उद्योजक अडचणीत येत आहेत. आपल्या देशातील उद्योजक सक्षम आहेत, पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ते आज अडचणीत सापडलेले आहेत. उत्पादन क्षमता असूनही बाजार व्यवस्थेसाठी ठोस धोरण नसल्यामुळे देशाची उत्पादकता कमी होत आहे आणि परिणाम भारत हा फक्त एक मोठा उपभोक्ता देश होत आहे आणि याचा फायदा परदेशी देश घेत आहेत. हीच सरकारची नीती आणि नियत म्हणावी लागेल. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारने बरेच काही धोरण राबवले. मागच्या काळामध्ये सरकारने या देशामध्ये साखर उद्योगासाठी इथेनॉल प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम राबवली आणली. इंटरेस्ट सबमिशन या नावाखाली करोडो रुपयाचे प्रोजेक्ट उद्योजकांनी उभे केले, साखर कारखानदारांनी उभे केले आणि त्याचा परिणाम काय झाला तर मागच्या 2 वर्षापूर्वी 7 डिसेंबर 2023 ला रातोरात एक 2 वळीचं पत्र काढलं आणि सांगितलं इथेनॉल प्रोडक्शन बंद करा. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अर्थ मंत्री जी के कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष अर्थ मंत्री जी ने ये करने से जो उद्योजक है उनका कितना घाटा हो गया, ये कभी सभागृह को बोलना चाहिए, देशवासियों को बोलना चाहिए. परिणाम क्या हो गया तो ये देश के जो किसान है, किसान का जो माल पैसा मिलने वाला था, किसान का पैसा उनको कम मिल गया क्योंकि ये रातों रात बंद कर दिया. ये बहुत बड़ी बात है. इथेनॉल प्रोजेक्ट 200, 400, 500 करोडचे उभे केले आणि 500 करोडचे इथेनॉल प्रोजेक्ट उभे केले तर त्याचा इंटरेस्ट सबमिशनची जी स्कीम आहे त्याच्या ती बंद तर झालीच, पण त्यांचं जे इंटरेस्ट सबमिशनचं जे पैसे आहेत जे सरकारनं वाटायची हमी दिली 2-2, 3-3 वर्ष त्यांचे पैसे मिळत नाहीत. ही सरकारची नियत उद्योजक संपवायची आहे असं माझं मत आहे. त्याच्यामुळे सरकारने त्याच्यावर सुद्धा काहीतरी ठोस पाऊल उचलला पाहिजे. एवढंच नाही तर किसान जे ऊसाचे शेतकरी आहेत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साखरला एमएसपी लागू करायची. दरवर्षी एफआरपी वाढली जाते पण एमएसपी वाढत नाहीये. जर एफआरपी तुम्ही दरवर्षी वाढवता खूप आनंदाची गोष्ट की शेतकऱ्याला एफआरपी पण पैसा मिळाला पाहिजे, पण साखरेची एमएसपी कोण वाढवणार? सरकारला आपल्या माध्यमातून मी एवढीच विनंती करणार आहे की तुम्ही एमएसपी पण वाढवा. आज या कृषी प्रधान देशामध्ये ऊसाची शेती असो, आलूची शेती असो, गव्हाची शेती असो, बटाटा असो, सगळ्या शेतकऱ्यांना एमएसपी दिली पाहिजे. ही काळाची गरज आहे, पण हे सरकार एमएसपी देत नाही. ही दुर्दैव आहे. आणि सरकारने सांगितलं कृषी प्रधान देशामध्ये की आम्ही
शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, पण शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट न होता निमपटीवर येत आहे, याच्यासाठी सरकारनं ठोस निर्णय घेतला पाहिजे अशी माझी सरकारला विनंती. महोदय, या अर्थसंकल्पात व्यापाऱ्यांना पुन्हा कर्ज घेण्याचा सल्ला देण्यात आला. याचा अर्थ सरकारला प्रत्येक व्यापारी कायम कर्जाच्या ओझ्याखाली राहावा असं वाटतंय. महोदय, बनारस पाटणा येथे जलमार्गावरील जहाज दुरुस्ती कारखान्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र नद्यामधील पाण्याची पातळी कमी असल्याने हे जलमार्ग प्रकल्प आधीच अपयशी ठरत असताना अशा घोषणा कितपत व्यावहारिक आहेत, यात हाच प्रश्न मला पडतो. महोदय, आरोग्य क्षेत्रावर बोलताना आरोग्य क्षेत्राबाबत मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, पण आज ही देशातील अनेक रुग्णालयामध्ये पुरेसे डॉक्टर नाहीत, नर्सेस नाहीत, कर्मचारी नाहीत आणि आवश्यक उपकरणाची कमतरता आहे. विद्यमान आरोग्य पायाभूत सुविधाकडे सरकारचे लक्ष आहे असं वाटत नाही. कारण माझ्याच मतदारसंघातील बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालय हे 5 ते 6 जिल्ह्यांमध्ये एकमेव आधार आहे. दररोज जिथं 2,500 ते 3,000 रुग्ण ओपीडी साठी येतात, पण तिथे आजही डॉक्टर, स्टाफ, नर्सर, कर्मचारी यांची आवश्यकता असून व उपकरणे तीव्र कमतरता आहे. त्याच्यामुळे सरकारने नवीन घोषणा करण्याऐवजी आधी उपलब्ध असणाऱ्या पायाभूत सुविधा सक्षम कराव्यात अशी मागणी मी या सभागृहाच्या माध्यमातून माननीय अर्थमंत्र्यांच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की माझ्याकडं हे जे माझ्या जिल्ह्यामधलं रुग्णालय, या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ज्या पूर्वी 50 विद्यार्थ्यांचा स्टाफ होता त्याची मर्यादा वाढवली, 50चे 100 केले, 100चे 150 झाले, पण स्टाफ मात्र जे नर्सेस डॉक्टर्स जे आहेत ते फक्त 50 प्रमाण आहेत. आज 150 संख्या जर झाली असली विद्यार्थ्यांची आणि ओपीडी पहिली जिथं 500 होती तिथं आता 5,000 ओपीडी झाली, पण तिथला तुमचा जो स्टाफ आहे ते वाढत नाही. त्याच्यामुळे औषधाची कमतरता आहे. त्या समितीचा अध्यक्ष पण मी जिल्ह्यात आहे, पण त्या समितीचा अध्यक्ष असताना सुद्धा मला तिथं सांगितलं जातं की औषधं नाहीत. याच्यासाठी सुद्धा सरकारनं गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे असं मी सरकारला विनंती करतो. या अर्थसंकल्पातील सर्वात हास्यास्पद बाब म्हणजे शहरी आर्थिक क्षेत्र क्रमांक 39 तब्बल 11 वर्षानंतर सरकारला टियर 2 व टियर 3 शहरी देशाच्या प्रगतीत योगदान देऊ शकतात हे कळले. याचा अर्थ गेली 11 वर्ष नागरिकांना शहरी नागरिकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्यात आली, हीच सरकारची अप्रत्यक्ष कबुली आहे. महोदय, माझा जिल्हा तसा विचार केला किंवा मी ज्या जिल्ह्यातून येतो तो जिल्हा ग्रामीण भागात आहे. महोदय, माझ्याकडे माझी जी ओळख आहे कि किसान का बेटा बोल के मेरी पहचान है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर की शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. कृषी प्रधान देशामधल्या माझ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे ही माझी मागणी. काजू आणि चंदन अशा सर्व चर्चेला उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला. काजू हा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे आणि चंदन उत्पादक दक्षिण भारतातील शेतकरी आपल्या मालाच्या विक्रीसाठी त्रस्त आहेत. ही किती लाजिरवाणी घटना आहे की आपल्याला जे तुम्ही लावायला सांगताय, प्रोत्साहन देताय आणि परत पुन्हा माल विक्रीला तुम्ही चालना देत नाही किंवा माल घेत नाही, हे अत्यंत खेदजनक बाब आहे. माननीय महोदय, माझा जिल्हा ग्रामीण आहे, माझा मतदारसंघ ग्रामीण भागाचा येतो. ग्रामीण भागाच्या ह्याच्यासाठी आपण जर विचार करायचा झाला तर आमच्याकडे आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महोदयांनी 14 ते 19 या काळामध्ये सरकार होतं त्यांचं, त्यावेळेस त्यांनी वॉटर ग्रेड ही योजना मी माझ्या बीड जिल्ह्यासाठी आणेल अशी एक घोषणा केली. पण आज तब्बल 11 वर्ष झालं तरी पण काहीही नाही. माझ्या या जिल्ह्यासाठी वॉटर ग्रेड नाही, पण आहे त्या प्रोजेक्ट मधून पाणी द्या, गावोगाव ते पाणी आलं पाहिजे. माझं उजनी धरणातलं पाणी आमच्या मांजरा धरणात आला पाहिजे, मांजरा धरणाचं पाणी जिल्ह्यात फिरलं पाहिजे. याच्यासाठी लागणारा निधी माननीय अर्थमंत्र्यांनी या बजेटमध्ये माझ्या जिल्ह्याला द्यावा ही माझी विनंती आहे. महाराज अध्यक्ष महोदय, लखपती दीदी योजना केवळ निवडणुकीपुरती केंद्रीय घोषणा ठरली आहे. देशातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मात्र अजूनही त्यासाठी सरकारचं कोणतंही ठोस पाऊल नाहीये, कुठलं धोरण नाही. महिलांसाठी अन्याय, महिलांसाठी अत्याचार, दर दिवस रेप्स एवढे प्रकार घडतात, सरकार त्यांना कुठं ठोस असा निर्णय घेऊन त्यांना संरक्षण देत नाही. महोदय, एवढेच नाही तर सरकारच्या बऱ्याच योजना आहेत. आता अर्थमंत्री गेलेत, मला त्यांना विचारायचं आपल्या माध्यमातून की सरकारची PMJSY म्हणजे ग्रामीण विकास या अर्थसंकल्पात प्रचंड कमतरता है. सर 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं प्लीज.
पीएमजीएसवाय नावाची योजना जी सरकारची आहे, या पीएमजीएसवाय योजनेचा टप्पा 3 एकाही कामाला मंजुरी नाहीये. आज 2 वर्ष मी खासदार होऊन झाले, एकाही कामाला मंजुरी नाही. वन सिंगल वर्क, नो सैंक्शन. सर इसलिए मैं कहता हूं कि सब जल्द से जल्द ये देना चाहिए. सर सरकार की और एक घोषणा है, हर घर घर जल और नल. ये योजना के अंदर 50 करोड़ रुपया पिछले बजट में से खर्चा नहीं हुआ और मेरे जिले के अंदर 1 रुपया ही नहीं दिया. सर क्यों? अगर 50,000 करोड़ तुम्हारा टैक्स होता है और मुझे 1 रुपया ही नहीं मिलता, ये खेदजनक बात है. क्योंकि अपोजिशन वाला एमपी है बोल के नहीं दिया क्या? ऐसा मेरा सवाल सरकार से, मेरा रिक्वेस्ट है सर. सर 2 मिनट में समय है मेरे पार्टी का, उतना दे दीजिए प्लीज. और सर मेरे जिले के अंदर टेक्नोलॉजी पे आप बोल रहे 21 भारत, अभी क्या क्या करना है? भारत 1 नंबर पे लाना है, कौन से टाइप पे लाना है सर? ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मेरे अर्थ संकल्प है, इसमें मेरा जो जिला है, जिले के अंदर सर प्लीज 2 मिनट सर, प्लीज 2 मिनट. मैं जो मेरे 400 गांव खेड़े हैं वहां अभी भी बीएसएनएल का टावर नहीं है और दूसरे कौन से के कंपनी का टावर नहीं. मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जिले के अंदर वो देना चाहिए. रेल के बारे में बहुत जिक्र किया सर, रेल बुलेट ट्रेन ले लिया. बुलेट ट्रेन 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ का बजट 2 लाख करोड़ कर दिया. क्यों? और मेरे इधर कुछ क्या किया है? हमारे महाराष्ट्र के अंदर खाली अर्बन के लिए सरकार चलती है, रूरल के लिए क्यों नहीं है? मेरे जिले के अंदर जो मेरा एक सेकंड, मेरे जिले के अंदर एक ही प्रोजेक्ट की मांग थी मेरी, और सरकार से, अर्थ मंत्री से मेरे रिक्वेस्ट है, मेरा जो धाराशिव से लेके बीड़ से लेकर संभाजीनगर का रेल मार्ग, इसी के लिए कुछ ना कुछ बजट की तरतूद होना चाहिए. और ये गरीब के किसान के बेटा के जो मतदार संघ है उसी के लिए अर्थ मंत्री दे देंगे. सर लास्ट सेकंड, लास्ट सर, यह अर्थसंकल्प देशाच्या, मी लास्ट बोल रहा हूं, शेवटी एवढंच म्हणेन की या अर्थसंकल्प देशातील जनतेला पूर्णपणे निराश करणारा आहे. जुन्या घोषणाचे मिश्रण करून घाईघाईत तयार करण्यात आलेला आहे. अर्थसंकल्प आम्हाला या गोष्टीतून काहीच मिळणार नाही. मी माझ्या सर एक लफ्ज खाली एक सरकार के लिए. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं आज आपका धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया है. अध्यक्ष महोदय, तथ्यों के साथ खड़ा हुआ हूं, सुर्खियों के साथ नहीं. सरकार के अपने ऑडिट खाते, बजट, व्यक्तित्वों और संसदीय उत्तरकों के साथ जब इन्हें एक साथ पढ़ा जाता है तो एक पैटर्न साफ दिखता है कि घोषणाएं आगे दौड़ती हैं, नतीजे पीछे रह जाते हैं और जवाबदेही सदे हुए शब्दों की ओट में गायब हो जाती है. अध्यक्ष महोदय, यूनियन बजट 2025-26 में आकर समाप्त होते होते हम सरकार ने फ्लैगशिप स्कीमें, बड़ी बड़ी हेडलाइंस एलोकेशन के जरिए बार बार बेचने की कोशिश करी. पिछले कितने बजटों को चेक करेंगे तो हर बार कुछ न कुछ बजट में नया आता है, पर कोई कंपैरेटिव उसका कोई चार्ट नए पार्लियामेंट में कभी पेश हो पाता है कि क्या स्कीमें लॉन्च हुई और उनका आज पब्लिक एट लार्ज में, फील्ड में उनका क्या इम्पैक्ट रहा है. लेकिन मैं आपको एक स्टार्टिंग शुरुआत करनी चाहूंगा पीएम पोषण स्कीम के साथ में. एक भारत सरकार की बेहतरीन प्रोग्राम अच्छा है, पोषण को हम इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छा एक जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल अगर आप डैशबोर्ड भी चेक करो तो 21-22 के अंदर इस प्रोजेक्ट के इस स्कीम के लिए जो बजट एस्टीमेट थे वो 11,500 करोड़ पे थे, जबकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़ के आसपास ही हुआ. फिर 23-24 में ये 11,600 करोड़ बढ़ा दिया गया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 8,400 करोड़ हुआ. 24-25 में 12,500 करोड़ कर दिया गया, एक्चुअल रिलीज 9,900 करोड़ हुआ. और 25-26 में बजट एस्टीमेट 12,500 करोड़ हुआ और एक्चुअल रिलीज 6,170 करोड़ पे हुआ. सर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार स्कीमों के साथ में जब बजट एस्टीमेट अनाउंस करती है, रिवाइज एस्टीमेट होते हैं मिड ऑफ द ईयर के अंदर, वहां आधा दम तोड़ जाता है और जब ये एक्चुअल में लागू होती हैं तो उनकी हालत और भी दयनीय हो जाती है. और ऐसा ये नहीं कि किसी एक स्कीम के साथ है, अनेकों स्कीम के साथ में है. आज की तारीख में भी जो हम डेटा देते हैं एनएफएचएसए का जो डेटा देखेंगे तो हमारी कितनी ही बच्चियां आज की तारीख में हम स्कूलों के अंदर आयरन जिंक की टैबलेट्स दे रहे हैं, एनेमिक बच्चियां हैं. और पीएम पोषण प्रोग्राम की रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बजट भी पूरा अपना स्पेंड नहीं हो पा रहा. ऐसे ही आप देखेंगे अनेकों स्कीमें. अभी स्कूल शिक्षा के बारे में बात करते हैं, समग्र शिक्षा एक अभियान चला, उसके अंदर 31,000 करोड़ पे 21-22 में सैंक्शन किए गए, 30,000 भी खर्च नहीं हुए. 23-24 में 37,400 करोड़ सैंक्शन हुए और वो पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ. हालत ये है कि राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के ऊपर एक अपना
राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना वक्तव्य दिया है कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 56% ऑफ स्कूल्स के जो रूम्स हैं वो जर्जर हालत में हैं, अनयूजेबल हैं और मेजर रिपेयर्स मांगते हैं। राजस्थान के अंदर एक स्कूल के अंदर बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मृत्यु हुई। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने आनन फानन के अंदर पूरे स्कूल के राजस्थान के स्कूल्स का डेटा कलेक्ट करवाया और डेटा कलेक्ट करने के बाद मालूम पड़ा कि स्कूल के अंदर 2,83,780 रूम तो ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है और उनके पास में उनमें कमरों में बैठने की बच्चों की स्थिति नहीं है और 2,19,000 ऐसे कमरे हैं जिनको मेजर रिपेयर वर्क्स चाहिए। और गवर्नमेंट हाईकोर्ट ने साथ साथ में ये भी कहा और एक रिपोर्ट जो सामने आई कि गर्ल्स राजस्थान के स्कूलों में पानी कम इसलिए पीती हैं क्योंकि राजस्थान में वर्किंग टॉयलेट्स तक नहीं और समग्र शिक्षा अभियान की हालत यह है कि उसके लिए बजट नहीं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अकेले में 1600 से ऊपर कमरों की रिक्वायरमेंट है सर, पर गवर्नमेंट के पास में कहीं कोई पैसा नहीं। स्टेट सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट के ऊपर बात घूमती रह जाती है। ऐसे कितने स्कूल हैं सर, चूरू लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, 50 डिग्री का टेम्परेचर टच करता है, आज भी बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, पर सरकार के पास में विकसित भारत का विजन के अंदर बच्चों के लिए कोई विजन नजर नहीं आता कि कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे, कैसे ये बच्चों के स्कूल की प्रॉपर रूम्स मिलेंगी। ये हालत समग्र शिक्षा अभियान की है। अभी सरकार ने बहुत अच्छा एक नया अनाउंसमेंट किया है, हर बार अनाउंसमेंट होता है। अभी इस बार के बजट में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोली जाएंगी, एनिमेटेड विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स की लैब्स खोली जाएंगी, 15,000 लैब्स खोली जाएंगी। बड़ी अच्छी उम्मीद है, पर कहां से इनकी हम ट्रेनर्स कहां से लेके आएंगे, ट्रेनर्स को हम स्किलिंग कैसे देंगे, कैसे इनके इक्विपमेंट्स आएंगे, कौन रख रखाव करेगा। अटल टिंकरिंग लैब्स खुली, आज उनका असेसमेंट कहीं हमारे पास में नहीं है। अनाउंसमेंट के बाद में अनाउंसमेंट है, पर कहीं भी ये चीज समझ में नहीं आता कि कैसे स्कूली शिक्षा के अंदर आगे बढ़े। सर राजस्थान के अंदर हालत तो ये है कि आज की तारीख में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 83% स्कूल्स में हम बच्चों को आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, मात्र 17% ऑफ स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ साइंस और कॉमर्स है। उन 17% स्कूलों में से 53% स्कूलों के पास में कोई वर्किंग लेबोरेटरीज नहीं है। कौन सा बच्चा डिजिटल एज की हम बात करते हैं, हम एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कैसे बच्चे तैयार होंगे। शिक्षा के प्रति सरकार की इतनी जबरदस्त उदासीनता है जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के अंदर 1960s में एक स्कूल का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। इनकी सक्सेस रेट आज भी 95-97% से ऊपर जाती है, पर इस सरकार की उदासीनता के कारण आप देखो कि 13 पिछले अभी ऑफिशियल डेटा के अनुसार केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में 12,000 से अधिक टेक्निकल पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई हैं। बच्चों के एडमिशंस घटते जा रहे हैं, जहां 1,95,000 20-21 के अंदर बच्चे केवी में एडमिशन लेके बैठे हुए थे, आज वो फिगर घटते घटते हमारा 1,39,000 के ऊपर आ गया है। यही हालत हमारे नवोदय स्कूल्स की है। मेरा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात करी, उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल खत्म होने की पोजीशन के ऊपर सेंटर्स आगे हैं। सिर्फ और सिर्फ न तो कोई एक डेटा के अनुसार 41% बच्चों को, ट्रेन बच्चों को गवर्नमेंट प्लेसमेंट दिला पाई, और प्लेसमेंट होने के बाद में इन बच्चों के साथ में आज की तारीख में सिर्फ ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम रह गया है। अनेकों ऐसी समस्या। अभी पीएम इंटर्नशिप की बात कर लीजिए, पिछली बार बहुत हा हुल्ला के साथ में स्कीम लॉन्च करी गई और 10,831 करोड़ रुपए का बजट भी सैंक्शन किया गया, पर रिवाइज एस्टीमेट देखिए 526 करोड़। 10,000 की अनाउंसमेंट के बाद में 526 करोड़ रुपए का ही बजट सैंक्शन हुआ और इस साल 4788 करोड़ रुपए की बात करी गई है। यही हालत एआई मिशन की है। 2000 का बजट एस्टीमेट, 800 करोड़ रिवाइज एस्टीमेट, इस बार फिर 1000 करोड़। तो शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता, और मैं ये मानता हूं कि मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगा, वित्त मंत्री महोदय बैठी हुई हैं, मैम स्कूल एजुकेशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज राजस्थान जैसे में बहुत समय बाद में एनरोलमेंट्स बहुत बड़े हैं, बट वी आर लैकिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू बी फंडेड बाय समवन। एज अ मैं पार्लियामेंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहा हूं तो एक इस डिमांड है स्कूल में रूम्स की। रूम्स लाए कहां से? 1800 रूम्स की रिक्वायरमेंट मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पर देयर इज नो वे आउट। स्टेट के पास पैसा नहीं, सेंटर पे आते तो स्कीम नहीं। कुछ अलॉटमेंट्स होती हैं, आई कांट डिनाई दैट, बट द अलॉटमेंट हैज टू बी इंक्रीज टू अ सब्सटेंशियल नंबर वेयर द पीपल स्टूडेंट्स कैन एटलीस्ट सिट इन द क्लास। That is my point to you, I would like to address for the education. इसके बारे में सर वहां पे भी नहीं बोलने दे रहे, यहाँ पे भी नहीं बोलने दे रहे हो, कहीं तो बोलने दो। सर जल जीवन मिशन के बारे में बात चली है,
67,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट एस्टीमेट में था हमारे BE 25-26 के अंदर। रिवाइज एस्टीमेट 17,000 करोड़ रुपए को, इसका मतलब 50,000 करोड़ रुपए का हम जो बजट खर्च नहीं कर पाए या बजट को हमने चेंज करने की कोशिश करी। हालत राजस्थान की यह है कि राजस्थान के अंदर आज भी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी राजस्थान में ऐसे कितने ही टेंडर्स हैं जो जल जीवन मिशन के ओपन तक नहीं हो पाए हैं। आज की तारीख में अवार्ड हुए वर्क 2021 के अंदर और उनका डेविएशन आ गया 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में 70 करोड़ रुपए का डेविएशन आ गया और उस डेविएशन के अंदर आज सरकार के पास 2 साल से फाइल पड़ी हुई है, पर सरकार के पास 70 करोड़ रुपए नहीं है। अभी किसान हमारे रतनपुरा के धरने पे बैठे हुए थे और उनको पीने के पानी की सरकार के पास में कोई सिस्टम नहीं। जल जीवन मिशन को बंद करने का काम कर दिया गया है। कहीं सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है, पानी के लिए पैसा देने के पास सरकार के पास कोई विजन नहीं। और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे अभी तक उन प्रोजेक्ट्स को सैंक्शनिंग करने के लिए फाइल 2 साल से ऑफिसर्स के पास पड़ी है। निशिकांत जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी बोलिए कि जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट को जो 21 से स्टार्ट हुए आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे। मैं सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करता हूं। 19,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन की थी, 11,000 रुपए बजट एस्टीमेट को रिवाइज करके रिवाइज एस्टीमेट में 11,000 करोड़ रुपए लेके आ गए। आज भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो फोर्थ फेज चल रहा है उसमें सिर्फ बचे हुए गांवों की रिक्वायरमेंट नहीं रही है मंत्री महोदय। गांव की रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आज पंचायतें इतनी बन गई कि पंचायत से गांव जुड़े कैसे। राजस्थान के अंदर गांवों की, हिंदुस्तान में भी मैं मानता हूं कि एक गांव से दूसरे गांव, एटलीस्ट अपने गांव से पंचायत हेडक्वार्टर तक जोड़ने का भी प्रावधान होना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग रोड्स पहले बनी हुई थी, जो फेज 3 में थी, जहां पे आप रोड का चौड़ाईकरण कर रहे थे, उन रोड्स को भी शामिल करने की बात करिए। मैं मनरेगा के बारे में बात करूंगा। मनरेगा के अंदर आपने ये बात कही है कि 40% शेयर VBG रामजी बिल के अंदर 40% शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने पिछले साल 4800 करोड़ रुपए नरेगा में खर्च करे। राजस्थान गवर्नमेंट अपने बेसिक डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए लोन लेना पड़ता है। क्या राजस्थान की सरकार 2,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से दे पाएगी? मनरेगा की शुरुआत, खात्मे की शुरुआत हुई है इस नए बिल के साथ में। जो एक आखिरी व्यक्ति गांव में बैठा हुआ था, उसको पीने की, उसको जो काम, उसको रोजगार मिलता था, उस रोजगार को छीनने का काम सरकार करने जा रही है। मैं जल जीवन मिशन के साथ में सिंचाई के पानी की बात करता हूं। आज की तारीख में भी एक हाल ही में जो रिपोर्ट नहीं आई है, एनवायरमेंट एंड वाटर की एक इंडिपेंडेंट स्टडी के अनुसार इंडिया की ट्रीटेड वाटर, वेस्ट वाटर रेस्क्यू कैपेसिटी अभी बहुत कम है और सिर्फ 10 स्टेट्स के पास फॉर्मल रीयूज पॉलिसी है, जबकि ट्रीटेड वेस्ट वाटर 2050 तक दिल्ली के क्षेत्रफल के 26 गुना के बराबर की क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है और वास्तविक आर्थिक मूल्य पैदा कर सकता है। फिर भी इस सदन का कोई नेशनल प्लान नहीं दिखाई गया, न टाइमलाइन, न बजट, न टारगेट्स, ताकि वेस्ट वाटर को भी कैसे रीयूज किया जाए, वाटर स्कैरिसिटी को केंद्रीय स्तंभ बनाया जा सके। क्यों नहीं हम वेस्ट वाटर जो सचमुच बहकर बर्बाद हो रहा है का उपयोग करें? क्यों नहीं कर सकते, जबकि वह खेतों की सिंचाई कर सकता है? राहुल जी, I was allotted 10 minutes, sir. Yeah. Only 3 minutes, sir. Already 11 minutes over. Sir, another 2 minutes, sir. Sir, मेरा सरकार से ये कहना है, हम ईस्टर्न हमारा जो पानी है, जो आज की तारीख में हरी के बराज से हमारी तीनों नदियों का पानी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता है, 2 MAF पानी जिसकी कैपेसिटी 10 से 15 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की है, उसके ऊपर सरकार की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इरिगेशन के अंदर, इरिगेशन के ऊपर अनाउंसमेंट होती, हम एक तरफ 50 लाख टन दलहन और तिलहन विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ हमने इरिगेशन के लिए कोई भी बजट सैंक्शन नहीं किया है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, जहां पे हमारा नागौर, चूरू, झुंझुनू और बाड़मेर, बीकानेर से क्षेत्र, जहां पे इतना बड़ा लैंड मास पड़ा हुआ है, अगर इरिगेशन की फैसिलिटी मिलेगी तो उनके बहुत बड़ा उसका फायदा मिलेगा और इरिगेशन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस करना। सर लास्ट 2 पॉइंट करना चाहूंगा सर। यस सर 2 मिनट सर, मैं वहीं से आ रहा हूं सर जहां से आप बोल रहे हो। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करूंगा सर। नेशनल हाईवे के अंदर
हर साल बजट बढ़ रहा है, पर सर हम हमारे स्टेट्स जो हाईवेज हैं उनकी ओवर कैपेसिटी हमारी यूटिलाइजेशन हो रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। सर डिजाइन जो हाईवे की, सर एक एग्जाम्पल देता हूं, जयपुर से लेकर किशनगढ़ का हाईवे राजस्थान के अंदर है सर, 50,000 पीसीयू के लिए डिजाइन हाईवे आज 1,26,000 पीसीयू पे वो कर रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, अभी पिछली बार इलीगल कट्स पे एक्सीडेंट होने पर 100 से ऊपर लोगों की जान गई। सर सरकार के पास में नए हाईवेज के लिए कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। राजस्थान को सर इस बजट में राजस्थान का नाम तक भी नहीं लिया गया। सर सर रेलवेज के लिए कहना चाहूंगा, न्यू रेलवे लाइंस के लिए बजट एस्टिमेट 32,000 करोड़ रुपए का था, 30,000 करोड़ खर्च करे। सर मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी चूरू के अंदर सर सीकर से नोखा, खाटू श्याम जी से करनी माता वाया मुकाम नोखा बिदासर होते हुए सरदार शहर से नौहर, सरदार शहर से मांगड़ और साधुपुर तारानगर गजसिंहपुर की रेलवे की लाइन की डिमांड बहुत ज्यादा है। मैम हर बार जब हम सर्वे करवाते हैं आरओआई नेगेटिव आती है, राजस्थान में फ्रेट नहीं है, सो देयर हैज टू बी सम वायबिलिटी गैप फंडिंग। धन्यवाद राहुल जी। मैं आखिर में लास्ट सेंटेंस सर प्लीज सर आपने बिल्कुल बोलने नहीं दिया सर। बोल दे भाई, अब बोलिए ना सर। ये सर निशिकांत जी हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, सर सभी को करते हैं, आप मुझे भी कर रहे हैं। सर डॉक्टर साहब बैठिए, डॉक्टर साहब बैठिए। सर वादों की दुकान सस्ती रही हर साल, पर गरीब की थाली रही खाली की खाली। कागज पर चमकते हजार, कागज पर सपने चमकते हजार, जमीन पर मगर सिसकता परिवार। पिछले बजट के हिसाब नहीं और इस बजट पर विश्वास नहीं, राजस्थान का हिस्सा नहीं तो विकसित भारत सिर्फ एक नारा है और एक नारा ही रहेगा। धन्यवाद मैडम जी, पुरंदेश्वरी जी। Thank you, Chair, for giving me the opportunity to participate in this very important discussion on the budget that was presented by the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, I would first like to begin by congratulating her on her 9th consecutive budget that she had presented in the Parliament. Sir, the budget gives us a clear message about India's long-term priorities, and it also emphatically states, sir, where India intends to position herself in the unfurling global economic scenario. Sir, it also clearly states that the budget intends to balance growth and macro stability. So the challenge before the Honorable Finance Minister, as she was charting out the budget, was that she had to ensure momentum alongside building resilience. Sir, we had a growth of around a GDP of around 7%, inflation being low, and a fiscal deficit in the right direction. This was the momentum that was there in the country, sir, but we needed to build our resilience against the global trade which was in a flux. Sir, the fiscal deficit of 4.3%, which is marginally lower than the 4.4%, only emphasizes that the focus of the finance minister has been on continuity rather than ambition. So since the pandemic, the slow rate of fiscal deficit reduction, sir, it only highlights that the focus has been on stability rather than dramatic consolidation. With the global uncertainty looming large and also the rupee under pressure, the budget, sir, that was presented is nothing short of prudent macro economics. Sir, above all of this, the real story is in the increase of allocation for capex at 12.2 lakh crores as against the 11.2 lakh crore, which is about 4.4% of the GDP. And this clearly underlines, sir, that the focus is on investments rather than consumption subsidies. This is what we would call fiscal prudence over populism. Sir, the EU trade or the European Union Free Trade Agreement would most probably come into operation by 2027, and we also have the US tariff uncertainties looming large. Sir, under these circumstances, we need to build our domestic capacities to protect our country from supply chain disruptions. Sir, against this backdrop, the industrial
strategy that has been spelt out in the budget, sir, reveals a resolve to move up the value chain. It could be the 10,000 crore allocation for the Biopharma Shakti initiative, or the 40,000 crore allocation for the electronic component manufacturing, or this India's semiconductor mission 2.0. They together emphasize, sir, that India would want to become Atmanirbhar or self-reliant in these strategic sectors on which India was until now import dependent. Sir, there is also renewed emphasis on service sector, and we know that the contribution of service sector to our GDP is around 55%, and it dominates our exports as well. So common safe harbor margins of 15.5% and the threshold enhancement from 300 to 2,000 crores only emphasizes that India's software, they still remain our reliable foreign exchange earners. So the proposed Education to Employment and Enterprise Standing Committee aiming at 10% of the global service market underscores this, and the expansion of Ayush and Khelo India mission only reveal the intent of extending or diversifying service exports beyond technology. Sir, there has also been emphasis on rare earth mineral corridors. Today, sir, we are faced with an external environment in which trade as well as multilateralism is in danger, and access to supply chains are being disrupted. Hence, sir, we need to strengthen, if not protect ourselves against these external shocks. Therefore, the manufacturing of rare earth permanent magnets, or REPM, is vital to meet our upstream industries, growing demands of the upstream industries like electronics, electric vehicles, aerospace, defense, and the likes. So the need for securing our supply chain arose when China, the world's largest, if not the only supplier of REPM, curbed its exports, giving rise to global shortage and disrupting industries. So this shock emphasized the need for indigenization, and today, by indigenizing REPM, India could position herself as a global hub of sustainable manufacturing. So the proposed scrapping of custom duty on monazite from the present 2.5% is a welcome measure, because this would only attract more investments in REPM and also improve the employment opportunities for our own children. So the states in which monazite is largely found is Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, Jharkhand, Maharashtra, Gujarat, and West Bengal, with Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, and Orissa contributing 89% of the 12.73 million ton monazite reserves in our country. Sir, I would only request the Honorable Finance Minister here, sir, that we would need to work closely with the states for the single window clearances as well as land subsidies, because this is largely in the control of the states, and this would also hasten and quicken investments into our country in REPM. Alongside, sir, I would also request the Honorable Finance Minister to consider applying PLI or performance-linked incentives for the mining of rare earth minerals, because as the very name states, sir, they are rare earth minerals, and we need our efficacy to improve in mining of rare earth minerals, and also apply PLI to REPMs too. So the budget further, sir, it simplifies customs tariff by rationalizing exemptions and focusing on effective rates. So the ripple effect of this would be that our domestic manufacturing sector would be strengthened and our exports would improve. So customs today are moving towards trust-based, digitally AI-assisted framework, marking a significant stride towards ease of doing business. So the targeted exemptions, sir, and process reforms, they aim at reducing the input costs that would improve certainty for long gestation and capital incentive projects. So manufacturing is a central pillar of our Indian economic growth, and its contribution to the GDP is around 16 to 17%. So it is much lower than what many of the other countries, for example, China has. However, sir, the duty-free imports for leather and footwear industry, the extension of export obligation period under the advance authorization scheme from 6 months to 1 year, the announcement of the scheme to support production of high-value
value, technologically advanced construction and infra components, and for the MSMEs, the removal of the rupees 10 lakh per consignment cap on courier exports would not only improve our access to foreign markets, but would also strengthen our local manufacturing sector as well. So in the health sector, the customs duty exemption on 17 additional drugs, so this is over and above the exemption that was given for the cancer drugs earlier in her earlier budget, and medicines as well as on key diagnostic components. It only indicates the commitment of the NDA government to the well-being of its citizens. So this reduction in customs duty would provide immediate relief to patients who are suffering with cancer and rare diseases, signaling a policy towards affordable health care. So this is alongside the Ayushman Bharat, the Jan Aushadhi Kendras, which are already in place in our country. So the PLI allocation for the auto sector has been increased, which is a very welcome measure. But I would also appeal to the Honorable FM to reconsider the 45% increase, reduction in the PLI for the lithium ion cells, because this is rather important. So the exclusive economic zones, or the EEZ, they span about 2.3 million kilometers in the Indian Ocean, and making fish caught in the EEZ duty free will not only reduce operational costs, but would also recognize the fish catch as Indian catch, and if it lands on other shores, then it would be considered as exports. Many countries, sir, like US and China, they actually follow this route, and this would actually unlock the economic potential of our country's marine resources. So this would also, beyond boosting deep sea fishing, facilitate harvesting high value fish like tuna, marlin, sailfish and the likes. Presently, sir, Indian fishing vessels, they are not well equipped for long distance operations, and this would actually call for investments in vessels with onboard freezing facilities as well, opening up a sea of opportunity for our fisher folk. So the limit for duty free imports on specified inputs used for processing seafoods has been increased from 1% to 3%, sir, over the previous year's export turnover, and this would actually ease the pressure on the marine sector by bringing down the cost of production at a time when one of our largest export earners is actually facing a crisis of the high US tariffs, which have now been, of course, reduced. Sir, the budget thrust on high-value farm produce and allied sectors. So this would also help in reducing our import cost dependency, modernize agricultural practices, and also improve farm incomes. So production of coconut oil has reduced drastically in the past 1 decade. So the production of coconuts in our country is around 600,000 tons, and coconut oil is around 450 tons. So oil production has now reduced to 4 lakh tons, and this, one of the reasons, if not the sole reason, one of the reasons is that our plantations are aging and we need to replace them. Therefore, the Honorable Finance Minister coming forward, shouldering the coconut farmers and assuring them that their trees would be replaced by new saplings, sir, is a welcome measure. Sir, export on coconuts have actually risen to 1.88 lakh tons in 2025 as against the 1.76 lakh tons in 2024, which is a 7% hike. Sir, none of us have actually forgotten the success story of Araku coffee. So when it was initiated, there were many people who did not believe that it would succeed. But today, Araku coffee has become a global brand. So riding on the success of Araku coffee, to emulate it in cashew nuts and coconuts, sir, this would actually reduce our dependency on imports. So exports of coconut and cocoa and related products, sir, they have increased 26%, sir, touching 4.54 lakh tons in 2025, up from
36.86 lakh tons. So therefore, I think this is a very welcome measure. Sandalwood is an integral part of our culture. Therefore, the support that is being given to sandalwood farming as well as post-harvest processing would only help us in restoring the past glory of sandalwood. Alongside this, sir, the AI initiative called the Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources of Vistar, sir, would educate the farmers in every detail of agriculture economics, sir. And this is very important for us because 80% of our farmers are small and marginal farmers who have land holdings which are less than 5 acres, sir. Therefore, this technical assistance would help farmers in innovative practices, thereby enhancing their incomes. Sir, India's 7.4 million MSMEs, they would stand to benefit from the 10,000 crore SME growth fund that has been allocated. This is over and above the 2,000 crore self-reliant India fund that has already been allocated, sir. And this provides access to risk capital for MSMEs. Sir, MSMEs largely supply to PSUs and other large houses, but payments are quite often delayed, which leads to financial crunch and thereby the ill health of the MSME. Therefore, TREDs are being made mandatory, where the invoice has to be settled via the platform with no excuses, sir, is a big help for the MSMEs. The chronic problem that MSMEs face, sir, which even our economic survey has emphasized, is that their lack of accessibility to capital. Therefore, these initiatives, sir, would surely enhance the proximity to capital for the MSMEs, who are one of the largest employment generators after agriculture. So, urbanization is happening at a great speed, and the focus on Tier 2 and Tier 3 and temple cities, sir, is a welcome measure, because it is here the infrastructure would definitely be upgraded and modernized, making life for migrants who actually come into these cities much better, safer, and they would not have to live in deplorable conditions as they are doing now. So today, recognizing cities and towns as growth hubs is the need of the hour. Therefore, I would surely like to welcome this measure. Sir, having said that, a nation's progress, sir, is impossible without the empowerment of its women. Building on the success of Lakpati Didi, the most important initiative that has been, sir, just 5 minutes, sir, that has been introduced in the budget is the establishment of the self-help entrepreneur marts, or the She Marts, sir, which will provide women entrepreneurs direct market access and business opportunities. In addition, sir, credit-linked support for women-led fisheries and aquaculture enterprises encourages economic independence in coastal and rural regions. So these initiatives are designed to convert small-scale participation into scalable enterprise. Another landmark initiative, sir, in this budget is the establishment of one hostel for girls in every district, especially near the STEM institutions. So this step ensures that talented young women from rural and semi-urban areas would not have to discontinue education for lack of accommodation barriers. So these initiatives collectively strengthen financial inclusion, education access, and entrepreneurial growth for women, converting empowerment into leadership. Beyond economic and educational support, sir, the budget also gives a strong social message that women are partners in nation building and not mere beneficiaries of welfare. Therefore, it is no longer women's development, sir, but it is now, the new story is women-led development. Sir, having said that, I would only like to conclude by saying that the budget has been crafted and presented amidst unique circumstances in an increasingly turbulent world. In such circumstances, sir, this budget is a coherent framework that laid emphasis on financial prudence, infrastructure-led growth, and human development, preparing India for the Viksit Bharat of 2047 in a volatile and an unpredictable world. Thank you, sir. Thank you very much. You didn't take 5 minutes further. Next speaker, Sri Y.S. Avinash Reddy ji. Sir, thank you, sir. Sir, I congratulate Honorable Finance Minister for presenting the budget 9th consecutive time, sir.
Sir, and we appreciate the central government for enhancing the capex budget for the year 2026-27 to 12,21,821 crores, sir. 11.5% higher allocation than the revised budget for the current financial year 2025-26, sir. Sir, coming to the allocations for our state, Andhra Pradesh, sir, we all know that Polavaram is a national project with 194 TMC storage capacity, 45.72 meters height and an estimated cost of 55,000 crores, sir, which has to be spent by way of 100% central grants, sir. Sir, in the 2026-27 budget, an amount of 3,320 crores is allocated. There is a specific mention in the budget presentation that the revised cost of project is 30,436 crores for completion up to MDDL of 41.15 meters, and the balance central grant for the project is limited to 12,157 crores. Sir, at 41.15 meters, only 75 TMC of water can be stored. The objectives envisaged cannot be achieved if the project is restricted only to 41.15 meters height with only 75 TMC storage, sir. Sir, we on behalf of ISRCP bring to the notice of Government of India that this national project should be constructed up to 45.72 meters height, 194 storage capacity, 194 TMC storage capacity with an estimated and sanctioned amount of 55,000 crores, sir. Any change, any reduction to the sanctioned amount will severely affect the interests of crores of farmers across the state, sir. And we also request the Government of India to revisit and issue environmental clearance to Rayalaseema lift irrigation scheme. Earlier in March 2025, it was rejected. EC was rejected due to lack of persuasion by the present state government, sir. Sir, I seek to draw your attention regarding the borrowings of our state Andhra Pradesh, sir. During 2019 to 2024, YSRCP tenure, considering all forms of liabilities, an amount of 3,32,000 crores was borrowed, sir. Whereas in the present tenure, in a span of just 20 months, an amount of 3,20,000 crores is contracted for borrowing so far, sir. Sir, generally all kinds of borrowing put together should not exceed 3.5% of state's GDP, sir. For instance, during 2014 to 19, the then state government borrowed 17,000 crores beyond their limit, and this excess borrowing was deducted from the borrowing limit of the next government during 2019 to 2024, sir. Sir, if the present pace of borrowing is continued, just like the President stated above, the borrowing limits of the next government will be deducted due to the present government's over excess borrowings, sir. The next government will not be in a position to pay even salaries and pensions if this abnormal pace of borrowings is permitted. Sir, our state government is raising off-budget borrowings, sir. In May 2025, an amount of 9,000 crores was borrowed by way of APMDC NCD issuances. The worst part here is private lender was given direct access to draw his servicing amount from the Consolidated Fund of Andhra Pradesh, sir, which is highly unconstitutional and unprecedented, sir. Sir, in December 2025, 5,750 crores was borrowed by way of APSBCL bonds. Sir, and recently, State Cabinet cleared a borrowing of additional 11,850 crores by way of APSBCL NCD issuances, sir. Sir, during financial year 2022 and 23, when the previous government tried for similar off-budget borrowing through APSBCL NCD issuances, the central government objected such borrowings, and the Ministry of Finance, it has issued circular, sir. Ministry of Finance has issued circular, wrote a letter to the Special CS of Andhra Pradesh Finance Department dated 27th March 2023 and stopped the state from taking such an off-budget borrowing. Sir, this kind of off-budget borrowings will have long-lasting ramifications. The next governments will have to pay their entire budget amount for repaying the interest, duly sacrificing salaries and pensions for employees and welfare schemes for the poor people. I request the Honorable FM to give clarity on this issue during her reply, sir. Sir, as I mentioned above,
our state in a span of just 20 months borrowed 3,20,000 crores, but it could not allocate mere 5,000 crores for completing the 10 medical colleges out of the 17 new medical colleges taken up during the tenure of Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu. Sir, bids are called for privatization the government medical colleges and hospitals, which will directly impact the poor, as they will not be in a position to afford costly treatment in these privatized hospitals, sir. Sir, an allocation of 96,000 crores is made for VBG Ramji scheme, which is new MGNREGS scheme, sir. Sir, state share is increased from 10% to 40%, because of which it is highly unlikely that the allocated amount is completely spent in the year 2026-27. We request the Government of India to implement the new scheme VBG Ramji with 90:10 ratio for our state Andhra Pradesh, on par with other northeastern states, as our state's financial condition is very, very weak, sir. So we request the Government of India to set up steel plant at Kadapa, which is part of assurance given to the Andhra Pradesh as part of AP Bifurcation Act 2014, sir. We brought this issue to the notice of this August House several times, and we once again request government to fulfill its promise, sir. Sir, we request the Government of India to stop privatization of Vizag steel plant, and also request to allocate grant to clear the present dues of Vizag steel plant, sir. Sir, Kadapa to Bangalore railway line was sanctioned in 2010 with an outlay of 2,700 crores, sir. Sir, till date only 10% of the work is completed, sir. We request the Government of India to allocate sufficient funds for completion of this project. Initially, this project was sanctioned on 50:50 cost sharing basis between central and state governments, sir. Sir, post bifurcation, AP is not in a position to contribute its 50% share, sir. So AP government has already requested the Government of India to complete this project with 100% central funds. Sir, we request the Government of India to consider the same and expedite construction of this new railway line between Kadapa to Bangalore, sir. With these submissions, I conclude my speech on discussion on union budget. Thank you, sir. Thank you very much. Next speaker, Sri Lalji Vamaji. धन्यवाद मान्यवर, आपने अवसर दिया सामान्य चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने 9वां बजट प्रस्तुत किया। हम लोगों की अपेक्षा थी कि देश और प्रदेशों के लिए बहुत कुछ इस बजट में आएगा, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मान्यवर, ये बजट माननीय मंत्री जी ने बताया विकासोन्मुख, समावेशी और भविष्यवादी बता रही हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई से यह है कि यह बजट महंगाई से त्रस्त जनता को राहत नहीं देता, बेरोजगार युवाओं को आशा नहीं देता, किसानों को सुरक्षा नहीं देता और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मूल क्षेत्रों में निवेश से कतराता है। यह बजट आंकड़ों की बाजीगरी है, जनता की जरूरतों का समाधान नहीं है। माननीय मंत्री जी ने सुधार एक्सप्रेस कहा, सुधार एक्सप्रेस नहीं, उधार एक्सप्रेस है। ब्याज पर 26.25% इस बजट का 53,47,315 करोड़ में से करीब 26.25% केवल ब्याज पर खर्च किया जा रहा है। मान्यवर, बजट पहले बड़ा बनाया जाता है और फिर खर्च नहीं हो पाता। अभी 9 महीने बीत गए, 41% से ज्यादा पिछले इस वित्तीय वर्ष का बजट का खर्च नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष जो संशोधित बजट है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। दूसरे मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दूसरी बात का जो जिक्र किया है कि ये विकसित भारत का सबका साथ सबका विकास का बजट है, परंतु ये बजट सबका साथ नहीं देता। मान्यवर, इस प्रदेश में, इस देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी का है, एसटी एससी का है, एसटी का। उसके हितों को अनदेखी करने का काम इस बजट में करने का काम किया गया है। आज रोजगार देने का सवाल है। देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 38 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सवर्ण है, एससी एसटी का उसमें नहीं दिया है। सारे जो केंद्रीय संस्थान है उसमें 80 से 64% पद
पिछड़े और दलितों के खाली हैं, लगभग 10 लाख पद खाली है, उसके भर्ती का कोई इसमें खाका देने का काम इस बजट में नहीं किया गया है। माननीय, इसके साथ साथ आज देश की जो सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की है। गरीब आदमी बीमार होता है, हृदय रोग से बीमार होता है, कैंसर से बीमार होता है, उसके लिए धन की व्यवस्था जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें भी कोई एक पैसे की इजाफा करने का काम नहीं किया गया है, उसमें भी खर्च कम हुआ है। पिछला जितना बजट था उसमें भी खर्च करने का काम कम किया गया। दूसरी तरफ माननीय, इसी तरह से पिछड़े वर्गों का जो किसान है, किसान के ऊपर इस बजट का जहां 70% लगभग कृषि से संबंधित लोग गांव में हैं, उस पे केवल 3.04% बजट है। शिक्षा पर 2.60% बजट है। स्वास्थ्य पर केवल 1.95% टोटल बजट का हिस्सा आता है। हमने एक संकल्प लिया था कि जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य का बजट होगा, लेकिन ये बजट 0.5% भी जीडीपी का नहीं है स्वास्थ्य पर, जिसके कारण देश के तमाम लोग बीमारी के शिकार होते हैं, उनका इलाज नहीं होता, उनका घर बार भी बिकने का काम होता है। इसी तरह से किसान का जब समय आता है बुआई का, खाद की जरूरत पड़ती है, तो उस खाद में उसके उर्वरक की जरूरत है। उस उर्वरक के बजट में पिछले बार जो खर्च किया था, जो संशोधित बजट है, उससे 7.5% कम इस बार माननीय मंत्री जी ने रसायन और उर्वरक पर रखने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये किसान के हितों को संरक्षित नहीं करता। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि आज अमेरिका से डील हुआ, हमारा मार्केट अमेरिका कैप्चर करेगा, किसान और तबाह होगा। हमें उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का देने की आवश्यकता थी, उस पर भी ये बजट मौन है, उनको भी गारंटी देने का काम नहीं करता। माननीय, हम लोगों ने बड़ी अपेक्षा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये अयोध्या के नाम पर बनाने का काम किया गया और उस अयोध्या के इस बजट में पूरी तरह से उपेक्षा किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश की उपेक्षा किया गया। अयोध्या के लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां पर कम से कम एक एम्स तो बना दीजिए, जिससे आपका उनके साथ जो भेदभाव है उससे छुटकारा मिलने का काम हो सके। दूसरे पिछड़ी जातियों का माननीय, सबका साथ सबका विकास, ये कैसा सबका साथ है कि परीक्षा में जहां भर्ती होती है, प्रवक्ता अंग्रेजी का अनरिजर्व्ड का कट ऑफ है 64 और ओबीसी का कट ऑफ है 87, उसको उसमें माइग्रेट नहीं करने का काम किया। जबकि माननीय हमारे नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस फैसले के आधार पर अगर पिछड़ी जात का व्यक्ति किसी लाभ को नहीं लिया है, न उम्र में न अटेम्प्ट में, तो निश्चित रूप से उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर उसका मार्क ज्यादा है तो उसको शामिल किया जाना चाहिए। इसमें वो शामिल करने का काम नहीं किया गया। इस माइग्रेशन न होने के कारण तमाम मान्यवर इसमें तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो मेरी ये मांग है कि माइग्रेशन को करके सबका साथ जो सबका विकास का नारा है उस पर धरातल पर लाने का प्रयास करें। दूसरा माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों की बड़ी अपेक्षा थी, महंगाई बढ़ रही है 6-7% से ज्यादा, ये बजट 5.5% का पिछले बार के बजट से वृद्धि है, महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई, यानी बजट पिछले बार से भी समझिए कम है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी अपेक्षाएं थी कि माननीय मंत्री जी नवा बजट प्रस्तुत कर रही हैं, विकास मुखी बजट होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना के लिए ज्यादा धन दिया जाएगा, उसके लिए स्कीमें जो बनाने का है, जो उसका मानक तय किया गया है, उस मानक में सुधार किया जाएगा। हर विधानसभा हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद के प्रस्ताव पर सड़कें ली जाएगी, उसका कोई इसमें समाधान नहीं है।
दूसरी तरफ जो सांसद निधि है, सारे सांसदों को मानवर 5 करोड़ लंबे समय से चली आ रही, महंगाई 10 गुना बढ़ गया, निधि 5 करोड़ है, 1 किलोमीटर सड़क बनने में 1 करोड़ रुपया लगता है। हमारी ये मांग है माननीय मंत्री जी, अगर आप विकास के तरफ जाना चाहती हैं, सभी क्षेत्रों को आप विकास के तरफ ले जाना चाहते हैं, तो सांसद निधि कम से कम 25 करोड़ रुपया अनिवार्य रूप से करने का काम किया जाए। हम लोगों की अपेक्षा थी कि इसमें किया जाए। दूसरा हमारी मांग है, मान्यवर गरीब आदमी कैंसर से बीमार होता है। मेरा आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम और बीमारियों को छोड़ दें, कैंसर जैसी बीमारी को पूरी तरह से फ्री कर दें। सरकार उसके लिए संपूर्ण धन देने का काम करे, जिससे आम नागरिक की सुरक्षा हो सके, ऐसा मेरा आपके माध्यम से मांग है। मान्यवर एक निवेदन और करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मान्यवर महंगाई, ये बजट महंगाई से राहत नहीं देता, रोजगार की गारंटी नहीं देता। रोजगार कहा, आउटसोर्सिंग को रोजगार माना है। इसी तरह से स्वास्थ्य शिक्षा में परिवार निवेश नहीं करता, सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं करता। बैठे Now it is already 6. If the House agrees, we will extend the House till 8 p.m. Yes, House is extended up to 8 p.m. Now please conclude the last sentence. जीडीपी का कम से कम 2.5% हो, रोजगार के लिए स्पष्ट भर्ती कैलेंडर किया जाए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, शिक्षा स्वास्थ्य में वास्तविक निवेश हो। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, जिससे और सांसद निधि 25 करोड़ कम से कम किया जाए, ये मेरा आपसे निवेदन। Thank you, sir. At the outset, I'd like to congratulate the Finance Minister for presenting 9 consecutive budgets. It's not a mean feat, Valthakal. Especially it's commendable because she represents a party which draws its inspiration and its genesis from an all-male organization. In that background, Finance Minister, a lady from my state, presenting 9 budgets is remarkable. Meendum Valthakal. Sir, this budget is in the backdrop of the much touted trade deal. To my understanding, this trade deal is nothing but to borrow the words of Winston Churchill, a riddle wrapped in a mystery and inside an enigma. I hope the Finance Minister, when she addresses the House, will shed some light into this trade deal. Whether India is obligated to buy $500 billion worth of goods from the United States? Are we allowed to buy oil from our long-standing friend Russia? Are we allowed to buy oil from Iran, with whom we have a long-standing relationship? Will these decisions be taken sovereignly in India, or will it be taken by the White House? Are we obligated to buy oil from the new colony of America, Venezuela? And most importantly, are we going to allow agricultural products of America into India in zero tariff? If so, what products? The Finance Minister must tell the House and the nation, because we are none the wiser from the statement of the Commerce Minister, because every time he comes and says it's only, he points the finger at the Foreign Minister, the Foreign Minister is pointing the finger back to him, and the Agriculture Minister is completely absent. I hope the Finance Minister will fill this gap and answer on behalf of her cabinet and all her colleagues on what this trade deal actually means. Sir, that if you look at the attendance here in the House, it's quite sparse. This is quite indicative of the mood about a budget. Budgets are losing relevance, sir. People are losing interest in budgets. And this is a reflection of that. And if members are not interested, it also means that their constituents are less interested. There is a reason for this, sir. Before I get into the specifics of this budget, I'd like to go down memory lane and recollect some of the landmark schemes our Honorable Finance Minister has announced in the last 9 years. Amrut, Sankalp, DigiGon, National Nutrition Mission, National Infrastructure Pipelines, Startup India, Seed Fund,
PM Garib Kalyan Package, PM Internship Scheme, MISTI, National Monetization Pipeline, Operation Greens, Deep Ocean Mission. All these, when they were announced, were greatly lauded by the newspapers and the media. But if you actually look at the details to see where the implementation of all these schemes are, you will be very distressed. I hope the finance minister in her address will go back to the 9 years and recollect the scheme she has announced and give us a status report of each and every scheme and where it stands today. I will give a few examples, sir. In 2021, the government launched the PM Formalization of Micro Food Processing Enterprise Scheme, PMFME, allocating 10,000 crores to supposedly to support 2 lakh micro food enterprises. But after 5 years, sir, only 60% of the funds are spent. Then we have the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, which announced 15,000 crore for dairy and meat infrastructure. But after all these years, only 30% is utilized. Then we have the PM Mitra Parks, 7 mega textile parks with 4,445 crores was announced. But after 5 years, we only have 15% of the work done. I hope our officers are taking notes and they will give us the status reports of all these schemes which they announced in such great fanfare before. And in the same budget, they announced the PM, sir, these are all tongue twisters, sir. Atan Nirbhar Swasth Bharat Yojana. தமிழ்ல ஏதாவது ஒரு 2-3 பேரை வைங்கம்மா. ஏன்னா ஒன் வாயிலே நுழைய மாட்டேங்குது, எல்லாம் ஹிந்தியிலே வைக்கிற பேர்ல. ஏதாவது ஒரு பேரா தமிழ்ல வைங்க. வரும்போது நடக்குதோ நடக்கலையோ தமிழ்ல ஒரு பேர் வச்சிருங்க. 64,000 crores, 64,180 crores has been announced to strengthen healthcare. But only construction is going on in most of these places, including AIIMS in Tamil Nadu. But there is no manpower in most of the places. There are no trained doctors, no trained nurses. So again, this is all bombastic announcements without actual implementation, anything on the ground. Then we have in 2020-23, they announced the PM Divine for the Northeast. 6,600 crores was allotted. But the fund utilization is not even 18% till date, sir. Then we have the Desh Stack e-portal. I mean, I don't even know what this portal does, which allotted 400 crores for skilling and job discovery. Failed dismally. The portal exists, but nobody trusts the portal. Then in 2023-24, through the Govardhan scheme, 10,000 crores was allocated for 500 compressed biogas plants, out of which only 40 have been operational till now. In this, sir, the target was 500. If it is going to transform the entire landscape of employment for young people in India. So then the PM Surya Ghar rooftop solar for 1 crore households, where only 24% of the target is still achieved, sir. Sir, again in 25-26, Urban Challenge Fund allotted 1 lakh crore to reform cities, but utilization stands at 2%. Then the PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, 1.44 lakh crores over 6 years, sir, but still farmer support, whatever they were promised, is not got, sir. So if people are losing interest in budgets, it's because only bombastic announcements are made and nothing is implemented, so nobody takes it seriously. It's a clear reflection. Parliamentarians don't take it seriously and the public don't trust any of these announcements made because there's hardly any implementation of these schemes. Sir, I will tell you another very shocking fact, sir. Last budget, Madam announced 100 crores for a Makara board establishment. I do not know which state was going for election. They announced this 100 crores. Bihar. Not 1 rupee has been spent till date, sir. Not 1 rupee in that. Where is this board? Who have you even formed it? This is the status of all these schemes, sir. So coming back to this year's budget, sir, she has announced integrated textile program with 5 subparts. Then when they renamed Manrega to VB G Ramji, there was a lot of pushback because they removed the name of Mahatma Gandhi. Now they have come up with another scheme in the name of Mahatma Gandhi called Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative. Then there is an infrastructure risk guarantee fund.
Then they have announced 20 new national waterways. They have allocated 20,000 crores for city economic regions, dedicated rare earth corridors in Orissa, Kerala and Tamil Nadu, allied health professional institutions to be set up among countless others. So all these announcements, if you look at it 1 or 2 years later, will only be there on paper and nothing would have been implemented. Yes. This is the reason why budgets are becoming irrelevant and the announcements made in budgets are only bombastic and have no meaning at all, sir. Sir, forget about these bombastic announcements, sir. What hurts me the most about this budget, sir, it always lacks empathy. And again, the finance minister has shown the true colors of this government, sir. Disability pension, which the armed forces veterans were getting, was tax exempt. And in this budget, they have brought it under tax, sir. For soldiers who have laid their lives for India, for soldiers who had become disabled in fighting war. This government hides behind national security and patriotism all the time. But when it comes to action, this is a reality, sir. Thank you. They don't respect our soldiers. They are now going to tax disability pension. People who have been getting this pension for years will have to start paying income tax on it, sir. I wish the finance minister withdraws it, and when she replies, I hope she gives an account of all the grand schemes she has announced in the 9 years and show where the status of this is, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Govt. Very good, sir. Next speaker, Sri Jagadish Tarji. Thank you, Chairman, sir. Giving me opportunity to speak on the budget. And I'm very much happy to congratulate our Honorable Finance Minister for her consecutive 9th budget presented. And according to me, it is a matured budget and perfect budget for the strongest base, creating a strongest base for the Vikasita Bharat. What Narendra Modi ji is a dream. And one thing, this was a budget of a mature economy. For an economically stable country and by a government that is confidently looking beyond today, Union Budget 26-27 signals a shift from crisis management to long-term nation building. Aligning with Prime Minister Narendra Modi's vision of developed India by 2047. Rather than announcing flashy grave, as the government has focused on strengthening core systems, healthcare, education, manufacturing, infrastructure, and now explicitly energy security and cutting-edge technologies, including AI, it leaps to the eye that the Modi government is preparing India for sustained growth, for a march towards becoming a developed economy. What does it mean? It clearly signals faster connectivity between major economic centers alongside city economic regions, new freight corridors, inland waterways, coastal cargo promotion, and support to the states. The Modi government is now thinking in terms of agglomeration economics. Cities, especially Tier 2, Tier 3, are being positioned as growth engines rather than mere population magnets. Manufacturing policy has been sharpened further. Semiconductor mission to biopharma, Shakti, rare earth magnets, container manufacturing, textile cluster revival, clinical parks, electronics, components and construction equipment upgrades point to a deliberate effort to rebuild India's industrial base. These are not isolated announcements. And one thing that to this end, the government has brought about several structural reforms
the introduction of goods and service tax, the insolvency and bankruptcy code, the historic corporate tax cut 2019, the provisioning of massive subsidies in the form of production-linked incentive schemes. Logistic inefficiency is another major focus, with the plans for east-west dedicated freight corridors, the operationalization of 20 national waterways over 5 years, and the development of 7 high-speed rail corridors connecting major cities. The emphasis on urban development with a budget of 25,000 crore over 5 years acknowledges the economic power of agglomeration and the role of cities play as an engine of growth. The establishment of 5 regional medical hubs will not only boost medical tourism but also domestic health care capacity, complemented by plans to train 1.5 lakhs caregivers and 1 lakh allied health professionals over the next 5 years. And one thing, the proposal to create 5 inner city townships near industrial and logistic corridors is timely and strategic. If supplemented with an outreach to talented Indians abroad, particularly in the US, it could catalyze a reverse brain drain, an essential ingredient for true Atmanirbhar self-reliance. AI has been a focus, and cloud services data centers have been provided with a 22-year tax holiday. All these, so many things that is highlighted in the budget. I am not going to go details about it. And one thing that regarding this 7 high-speed rails corridors, Honorable Prime Minister declared, and I humbly request Honorable Finance Minister to declare another important railway corridor. Mr. Somanath ji also here, Railway Minister, and Vaishnavi ji also declare. I request high-speed rail corridor from Bengaluru to Bombay. It will cover most of the part of the Karnataka. So I request humbly to announce 8th corridor also. This will help to the Karnataka. And regarding another important thing is, my chairman, that defense cluster to be established in the Belagavi, because it is a military base, Belagavi, and 1,000 acres of land is available. So defense cluster has to be declared. And another important thing, Kalsa Banduri drinking water project. Already Mahadevi Tribunal has awarded 3.5 to more than 3.5 TMC water for drinking water purpose. So it is implemented. Definitely it will help for the development of that area is concerned. And 2-3 minutes, sir. And one thing, Chairman Saab, that regarding this Madai issue is concerned, Environment Department and the Forest Department, it is pending. If the concerned ministers take an interest and even convince the Goa people, Goa government also, that will be case. What is happened to the Karnataka? 1,000 lakhs together railway project has been announced. National highways has been announced. I want to say that Karnataka CM has not at all taken interest for the land acquisition for railway projects and national highway. Because of non-land acquisition, all the projects have held up last 5 to 6 years. Every time you are insisting, and unnecessarily he is criticizing the union government. And regarding looking into the budget, all the projects is concerned, if it is implemented, definitely it will help for the Karnataka, because Bengaluru regarding this is reflects Prime Minister Modi's strategic vision for the Karnataka. This vision priorities several key areas, including high-speed connectivity, frontier technologies, MSME liquidity support, green tourism development, agriculture renewal, and human capital.
Union budget positions Karnataka as a national growth engine in semiconductors, biotech, IT, aerospace, clean energy, advanced manufacturing, tourism and innovation with 12.2 lakhs crore potential capex sectoral mission, exercising 2 lakh crore and policy. Certainly the Modi government is scaling Karnataka's strengths into a global leadership. He has to understand, Karnataka people, government has to understand. So he has to clear all the projects, acquisition has to be completed. Then see the Karnataka, what is the development will happen, what are the projects. Vande Bharat trains, definitely it will help to so many people in Karnataka, Vande Bharat. And Udan scheme, it is a very popular scheme. Because of Udan scheme implementation, Modi's dream that Tier 2, Tier 3 cities, airports have been developed. So many air connection to so many cities because of Udan. I request Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister that Udana scheme is only for the 3 years. After completion of 3 years, all the airlines, they are withdrawing. Even it is economically viable, they are withdrawing the airlines, air flights. So, for example, Belgavi has 16 air connections to so many cities. Now, after Udana period is completed, they withdraw, they shifted to other side, even economically. Now only having 6 connections to some cities, only 6 airlines. So, for that purpose, some action has to be taken. No, please. And Please at least it has to be extended to 5 years or 10 years, definitely it will be helpful. For that purpose, thank you. Lastly, I conclude that this budget, the union budget, firmly positions Karnataka as a core engine of India's growth under the Modi government. The budget does not impose a one-size-fits-all approach. Instead, it builds directly on Karnataka's proven strength, electronics and semiconductors, biotechnology and pharma aerospace. By strengthening infrastructure, clean energy, leadership innovation and export, the Modi government is ensuring that Karnataka remains globally competitive while delivering inclusive growth of home. This budget enforces a clear message. Under the PM Modi, entire India, Karnataka is a growth engine of Vikasita Bharat. Thank you. Where innovation meets infrastructure and heritage meets high technology. Thank you very much. Thank you. Thank you. Next speaker, Sri Abhay Kumar Singhal. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने 9वां बजट पेश किया और हमें याद है महोदय कि जब ये सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि पुरानी सोच बदलेगी, प्राथमिकताएं बदलेगी और आम आदमी के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आएगा। महोदय, यह 2026-27 के बजट को देखकर प्रश्न उठता है, क्या बदला और किसके लिए बदला? इस बजट में जहां एक ओर बड़े बड़े पूंजीगत आंकड़े दिखाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आपदा, ग्रामीण विकास, राज्यों और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी अहम मदों में कटौती की गई है। केंद्रीय बजट 2026-27 के दस्तावेज बताते हैं कि बदलाव नहीं बल्कि कटौती, ठहराव और कुप्रबंधन हुआ है और इसका सबसे बड़ा नुकसान महोदय हमारे बिहार जैसे राज्यों को उठाना पड़ता है। यह बजट विकास का विजन नहीं है बल्कि बिहार के युवाओं, किसानों, श्रमिकों और छात्रों के लिए निराशा का दस्तावेज है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, बिहार के लिए अमृत काल कहां गए महोदय? मैं जानना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले चुनाव संपन्न हुई बिहार में, डबल इंजन की सरकार डबल डिजिट में, डबल सेंचुरी में 203 सीट पर जीत के आती है और जब
चुनावी घोषणा में जब उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो जातीय गणना हम कराएंगे, और इस बजट में जातीय गणना पर किसी प्रकार का कोई भी बजट प्रस्तुत नहीं करना, यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है महोदया। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार जिसे आप कहते हैं, ये बिहार पर सबसे बड़ा असर, इस तरह के बजट से सबसे बड़ा असर बिहार जैसे राज्यों पर पड़ता है। और बिहार मैं बता दे रहा हूं, गरीबी में नंबर 1 बिहार, बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार, पलायन में नंबर 1 बिहार, अपराध में नंबर 1 बिहार, स्कूल ड्रॉप आउट में नंबर 1 बिहार, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार, देश में सबसे कम उद्योग धंधे बिहार में, देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में, छात्र छात्राओं के उत्पीड़न में नंबर 1 बिहार, हत्या और बलात्कार में नंबर 1 बिहार। ये है डबल इंजन की सरकार। ताज्जुब की बात यह है महोदया, एक 2 पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं महोदया। केंद्र सरकार ने स्वयं एथेनॉल उत्पादन नीति लाई थी बिहार के लिए। उसके बाद क्या हुआ महोदया? सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी, एथेनॉल उत्पादन नीति लाई थी केंद्र ने बिहार के लिए, और हुआ क्या? बोले थे उद्योग लगेंगे, रोजगार पैदा होंगे और पलायन रुकेगा। बड़े पैमाने पर 2025-26 में बजट में तेल विपणन कंपनियों द्वारा बिहार की एथेनॉल इकाइयों का खरीद आवंटन लगभग 50% घटा दिया गया महोदया, जिससे 17 संयंत्र बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और कुछ ने उत्पादन भी रोक दिया है। परिणाम स्वरूप 25,000 से अधिक श्रमिकों की नौकरी खतरे में है और 15 लाख मक्का किसानों को मिला सुनिश्चित बाजार टूट चुका है। इस तरह की नीति से ये केंद्र सरकार की बजट चलती है महोदय। मैं जरूर कहना चाहूंगा, बेरोजगारी की बात आती है। ये जब 2017-2014 में पहली बार सत्ता में आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम महंगाई को खत्म करेंगे, आप हमें सत्ता में लाओ। और सत्ता में जब देश की जनता ने लाई तो बेरोजगारी तो छोड़ दीजिए, महंगाई भी चरम सीमा पार कर गई। हमें याद है 2014 में जब 386 रुपये सिलेंडर था, 386 रुपये सिलेंडर था, उस समय सत्ता पक्ष के ही तरफ से एक माननीय मंत्री हुआ करती थी, वो सिलेंडर माथे पे रख करके डांस किया करती थी। और इसी सरकार में 1100 रुपये सिलेंडर हुआ। सत्ता पक्ष के लोग कोई किसी प्रकार का उनके कान पर कोई जू नहीं रहेगा। ऐसे बहुत आंकड़े हैं महोदय, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। सभापति महोदय, स्वास्थ्य के बारे में मैं एक थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा की 2024 की रिपोर्ट बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता को उजागर करती है। कैग के अनुसार राज्य में WHO मानकों की तुलना में 53% डॉक्टरों की कमी है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 60% पद खाली हैं। अधिकांश जिला अस्पताल और CHC विशेषज्ञ डॉक्टरों के बिना संचालित हो रहे हैं, जबकि कई जगह ICU, ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक जैसे मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। पूरे मगध क्षेत्र का भार मगध मेडिकल कॉलेज पर रहता है महोदय, लेकिन वहां भी PG स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया अभी तक के धीमी चल रही है। हम एक 2 बातों का और जिक्र करना चाहेंगे महोदय। माननीय वित्त मंत्री महोदया जी ने कहा कि हम 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके लाए हैं। वो आंकड़े कहां है महोदय? कैसे आप उठा करके लाए? आप पिछले बजट में आपने कहा कि 75 से 80 करोड़ BPL धारी परिवार को हम 5 किलो अनाज देने का काम करते हैं, और इस बार आप एक साल में
25 करोड़ बीपीएल धारी परिवार को आप ऊपर उठा करके लाए हैं, तो मैं तो कहूंगा कि राज्यभाई इसका आंकड़ा भी पूरी तरह से प्रस्तुत आपको करना चाहिए महोदय। मैं तो जरूर कहना चाहिए, 1 मिनट महोदय, मैं एक मांग आपसे करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय जी, आप जिन्हें बीपीएल को 5 किलो अनाज जो आप फ्री में आप देते हैं, आपके यहाँ डाटा है, वैसे परिवारों से जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग हैं, उनसे जीएसटी टैक्स लेने का इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है। उस परिवार को जीएसटी फ्री का एक आप कार्ड निर्गत कर दीजिए। रियल में आप गरीबी उन्मूलन की अगर बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें जीएसटी फ्री का एक उन गरीब परिवारों को एक कार्ड निर्गत कर दीजिए। ये गरीबी उन्मूलन की बात होगी। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं समाप्त कीजिए। एक सेकंड महोदय, एक इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले वित्तीय वर्ष में भी इस पर चर्चा हुई थी। सुलभ और सुरक्षित यात्रा के लिए, सुलभ सुरक्षित यात्रा के लिए माननीय रेल मंत्री जी ने भी कहा कि जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें जनरल बोगी कम से कम 4-5 बढ़ाई जाए, और हुआ भी था कि बढ़ाने की प्रक्रिया होगी, लेकिन अभी उस पर किसी प्रकार का इस बजट में भी सरकार के तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये इनकी गरीबी उन्मूलन है। हमारे देश के भी गरीब चाहते हैं कि सुलभ और सुरक्षित यात्रा हम कर सके। हमने कहा कि समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में थे तो गरीब रथ चलाने का काम किया था, और गरीब गुरुआ भी एसी में सफर करने का काम करते थे। इसलिए हम माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से एक आग्रह और करना चाहेंगे। ये हमारे सत्ता विपक्ष की ही आग्रह नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के भी सभी माननीय सांसदों का अंदर से समर्थन है कि कम से कम लोकसभा में एमपी लैंड तो मैडम इस बार बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। इतनी महंगाई में बहुत बहुत धन्यवाद। मियां अल्ताफ अहमद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑनरेबल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं कि इतने बड़े देश की जिस बेहतर तरीके से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही हैं, सिस्टम को चला रही हैं, उसके लिए हम इनकी सराहना भी करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, और इस वक्त ख़ास तौर पे इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी का है। और इस बजट में जो इन्होंने पेश यहाँ पे किया उसमें बेरोज़गारी के हवाले से कोई रोड मैप लोगों के सामने नहीं आया। अगर आज बेचैनी है, अगर आज हमारे बच्चों में डिप्रेशन है, अगर वो आज नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उन सब की बेसिक वजह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। आज यूनिवर्सिटियाँ खोली जा रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो लोग वहाँ से डिग्री करके निकल रहे हैं उनके लिए कोई रोड मैप नहीं है। इतना बड़ा पैसा उस सेक्टर पे खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ से आ रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनके रोजगार का, उनके फ्यूचर का, उनके काम का, उसके लिए कोई चीज़ जो है वो बजट में नहीं है। तो उन इंस्टीट्यूशंस को खोलने का, उन यूनिवर्सिटियों को खोलने का, उन कॉलेजेस को खोलने का क्या फ़ायदा है अगर उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार के हवाले से मनरेगा की एक अच्छी स्कीम थी, और ये बदकिस्मती की बात है कि उस स्कीम को डाइवर्ट किया गया। बल्कि ये है कि अब वो स्कीम आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो जाएगी। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप ये कहें कि एक स्टेट जो है वो 40% उसके लिए देगी, या यूनियन टेरिटरी जो है वो अपने बजट में से कुछ हिस्सा देगी। जो काम के दिन थे उसमें कम किया गया,
तो वो एक रोजगार का जरिया जो गांव में था, गरीब लोगों के लिए था, उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और मैं तवक्का रखता था कि जो इसमें चेंज की गई उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा लोगों के जज्बात देख के, पॉलिटिशियंस के, पार्लियामेंटेरियंस का जवाब देख के, वो जो रिजेंटमेंट उस कानून के खिलाफ थी वो इस बजट में उसको रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन उस सिलसिले में भी कुछ नहीं हुआ। बैंक से एक दूसरा जरिया है बेरोजगारों के लिए, लेकिन अब बैंकों का ये हो रहा है कि वो सरमायादारों के लिए हैं, बिजनेसमैन के लिए हैं। जब कोई बेरोजगार इंजीनियर, डॉक्टर डिग्री लेके जाता है बैंकों में, कोई टेक्निकल हैंड जो है वो बैंकों में जाता है, तो वहाँ इतनी बड़ी तवालतें हैं, वहाँ इतनी बड़ी रिश्वत ली जाती है कि वो जो पहले एक बैंक से लोगों को ये लगता था कि ये लोग जो हैं ये बेरोजगारों को उनको प्रायोरिटी पे लोन दे देंगे, दफ्तरी तवालतें कम होंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लेकिन बैंक भी वो मकसद इस वक्त पूरा नहीं कर रही है। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर बैंक की हालत ये है कि उस बैंक में अब स्टाफ रहा ही नहीं है। वहाँ गार्डनर जो है वो क्लर्क का काम करता है और क्लास फोर्स जो है वो कैशियर का काम करता है, और लोग इतने बेरोजगार हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, पोस्टें पूरी वैकेंट हैं, लेकिन उनको फिलअप करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसी तरह दूर दराज के इलाकों में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचें खोलनी है, लेकिन मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि जिस पे किसी का कंट्रोल रहा ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट, सर मुझे 2 मिनट तो चाहिए, मुझे बोलना है। मैं तो अभी तो मैं टूरिज्म सेक्टर पे आया नहीं, तो उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर बैंक से लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उनकी ब्रांच जो है वो रूरल एरियाज में नहीं खुल रही हैं, तो उससे कोई फायदा हमें नहीं है। जहाँ तक हमारा टूरिज्म सेक्टर है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में, तो टूरिज्म सेक्टर का इस बजट में भी जिक्र किया गया है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर की जो आमदनी बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उसकी इस देश को आमदनी है, हमारी रियासत को उसकी आमदनी है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा है। इसमें इन्होंने जिक्र किया है इसमें अपने बजट में कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी जो है उसको ये बना रहे हैं। नहीं सर, अभी मुझे बोलना है। वन मोर स्पीकर फ्रॉम योर पार्टी। नहीं सर पार्टी की बात है, लेकिन आप सबको आपने टाइम दिया, 2 मिनट टाइम दे दिए, मैं करूंगा फिर। लेकिन वो अगर इतना बड़ा एक सेक्टर है टूरिज्म का जो जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है हिंदुस्तान में। जिस तरह इन्होंने एक इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, यहाँ दर्जनों होने चाहिए, और नॉर्थ में भी होने चाहिए, साउथ में भी होने चाहिए, कश्मीर जैसी जगह में भी होने चाहिए, तब जाके लोगों को उनका फायदा पहुंचेगा। यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का जिक्र किया है, शीप का जिक्र किया, एनिमल हस्बेंड्री का किया। हमारे कश्मीर में हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो है, सेब जो है, या शीप की बात है, एनिमल हस्बेंड्री की बात है, जब तक उसको इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं होगी, खासतौर पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तब तक उस इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे जब भी कभी आंधी आती है, तूफान आता है, तो लोगों के लाखों रुपए के तबाह हो जाते हैं। इसी तरह एनिमल और शीप हस्बेंड्री का सर एक मिनट, एनिमल और शीप, गरीब लोगों की बात करने दीजिए, जो उनके लिए उस लाइफ स्टॉक को इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए। गरीब लोग जो हैं उनका गुजारा इसी पे है, अमीर के लिए नहीं। सर सौगत राय जी, लास्ट सेंटेंस देखिए, हम दिन में इसीलिए बैठे रहे यहाँ पे, हमें 2 मिनट नहीं, आप मुझे बोलने ही नहीं देते तो मैं क्या कहूँ। सौगत राय जी प्लीज। थैंक यू सर। सर मैं आपको सर इनको बैठेंगे, मैं तो जब 1 मिनट से कंक्लूड करो। आपने कंक्लूड करूंगा ना, मैं कंक्लूड करूंगा। 1 मिनट से कंक्लूड करो। मैं कंक्लूड करूंगा, मुझे कंक्लूड करने दीजिए, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। एक हमारा गुलमर्ग टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत फेमस स्पॉट, वहाँ लीज का मसला है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। ट्राइबल्स का बड़ा जिक्र किया गया है इस बजट में, लेकिन ट्राइबल्स के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है।
कोई प्लानिंग नहीं है, उस पैसे की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है जो हिंदुस्तान में ट्राइबल को दिया जा रहा है। उसके कंट्रोल करने के लिए, उसको स्पेंड करने के लिए कोई तरीकेकार नहीं है। ये मैं आपकी नोटिस में भी लाना चाहता हूँ। वो सिर्फ पब्लिसिटी की हद तक है। इसके अलावा इसके अलावा सर, I rise to speak on the budget. अभिषेक बनर्जी has already, भाई अभी तो रुकिए, बहुत एक मिनट तो बहुत बार दीजिए। नो, आप सौगत राय जी प्लीज, सौगत राय जी प्लीज। सर, I rise to speak on the budget. Abhishek Banerjee has already spoken on behalf of our party on the budget. Without repeating him, I want to point out that this budget shows that the finance minister is cruel towards West Bengal. I remember last year when Bihar elections were there, she gave all the projects to Bihar and then to Andhra Pradesh. This time, the budget does not find mention of West Bengal at all, excepting about a freight corridor that is to happen from Dankuni to Gujarat. I strongly oppose this. The finance minister has been practically cruel on Bengal. 1,90,000 crores of money due to West Bengal has been held up, both on the behalf of MG NRGA and the Prime Minister Abbas Goswami. I demand again that the Prime Minister, the Finance Minister, revise her position in this matter and do proper justice to Bengal. Sir, speaking on this budget, I feel ashamed as an Indian because this budget is not made by the government of India. It is made by Mr. Donald Trump, President of the United States. 2 days after the budget, we had this so-called Indo-US trade agreement. How? Our tariffs were reduced to 18%. But our exports were made free by America. This is the cruelest blow on Indian agriculturists who are our bread givers. This government always speaks that we have done mother of all agreements with European Union, though the contours of the same are not clear. And on the Indo-US agreement, where they have allowed free exports by United States to India, it is not clear what are the other contours of the Indo-US trade agreement. There is apparently a difference of opinion between the Commerce and Industry Minister and the Foreign Minister, External Affairs Minister and the Commerce Industry Minister. Sir, it is shameful that India, which has the potential to be a great country, is subject to the vagaries of the opinion of a whimsical American president. And our Prime Minister is reported to have said, "Sir, may I come and see you?" What is this? Maybe you have poverty, but we are a country with a great tradition, Gandhi's country. We cannot bow down our head like this. I don't know why the BJP people are keeping quiet when the Prime Minister's head is being lowered, when the surrender Modi slogan is renting the air. Sir, I would not speak for very long, but I want to point out that this budget seems like the finance minister was told by the Prime Minister that do not make too many announcements. He has given no projects to Bengal. So Prime Minister must have told her that if any announcements are to be made, I'll make it. In Tamil Nadu, Kerala,
or West Bengal. That's why this is not a budget, this is tinkering. Just playing around with a few small things, small changes. I'm quite ashamed that the budget is like this. No major changes in the budget on income tax rate slabs. Implementation of new IT Act will be from April 2026. Only small tinkering, doubling of electronic manufacturing outlay to be by 10,000 crores. The 17 cancer drugs are waived duties. Sir, 1.34 lakh crores for education, which is almost the same as last year. So what is this budget for? You could have kept every figure the same. Sir, you'll notice only for defense there is a 15% jump and some mention of high-speed rail. When they will be implemented, nobody knows. Sir, you will be surprised. You are from Kerala, you know. Kerala has got nothing from this budget, not even in the matter of national waterways. Sir, subsidy for food, fertilizer and fuel will decline by 4.47%. Only textile, leather, seafood will gain has received a boost from budget proposal that cuts customs duty on scores of inputs. Sir, Indian IT, India's 7.4 million MSMEs will soon be beneficiaries of 10,000 crores advance. So deficit is pegged at 4.3% against 4.4% last year. But center has to borrow 17.2 lakh crores in FY27 to bridge fiscal deficit. The state share remains at 41% after the Finance Commission recommendations have come. Budget fails test of economic strategy. Sir, impact of US tariffs on exporters has to be declared by the government. Protracted global trade deficit is an important factor. China has forbidden export of rare earths to India. They are not allowing tunnel boring machines into India. So they are at loggerheads with US and the China. Where is our foreign policy? We are losing on every count. Sir, the widening trade deficit with China is a big problem. Sir, there is low gross fixed capital formation of around 30%. The worst is this government is a great champion of the private sector. It's called Adani Ambani government. Now, the private sector is not investing at all. What is the proposal to the industry from the finance minister? Sir, there is distress among MSMEs. Their widespread closures are taking place. Unemployment among youth is a big problem. Deteriorating urban infrastructure amid rapid urbanization is a big problem for the country. Sir, government every year announces new schemes. There are 24 such schemes which have not been seen the light of the day. Now, instead of announcing so many schemes, the finance minister could have tried to complete the existing schemes. They did not. So today we face youth without jobs.
failing manufacturing, investors not putting out capital, tax exempted, only one human step, tax exempted for motor accident compensation. The budget totally ignores both unemployment and social security. The allocation for the Union Labour Ministry is the same as in the last budget. No scheme to increase job opportunity. Total central outlay for urban development, where the cities are supposed to be engines of growth, has fallen from 96,700 crores to 85,000 crores. Shrinkage of 11.6%. Yes, Govt. Sir, in 2 minutes, I'll complete. India's long-term economic security arrangement with Russia has gone. Russia has been our friend. Now on Trump's say-so, on Trump threatening India, we have said that we will not buy Russian oil anymore. Is this the way independent countries should function? India's long-term economic security arrangement with Russia are not there. Another European Union के साथ, mother of all unions, nobody knows what that European Union free trade agreement holds. So there is a difference between the foreign minister and the commerce and industry minister. So the finance minister is saying deregulate, simplify and reduce business friction. Some foreign companies that are providing cloud services are being exempted from duty till 47. Now, Govt, please. So this is no budget, sir. We cannot even get a tunnel boring machine from China. Yes. No rare earth from China. And lastly, I must say that the finance minister should admit, but finance minister is not here. His minister of state is constantly conversing on Uttar Pradesh politics with his friends. Yes. So what to speak to him? So he is not listening. He is not interested. He will go back to. So three signal. Yes, Govt, please. Projects of the government. Now the time to conclude. You are not concerned. He is. Yes, Govt. Last sentence. Make in India has failed. Atmanirbhar Bharat has failed. Production-linked incentive scheme has failed. Yes. India Sri Captain needs to Viricho encourage Fernandez. investment. Sir, this is a bad budget. 1 second. Minister has presented the budget with her hands tied behind their back. On the one hand, Trump is pulling at her hand. On the other hand, Modi is pulling at her hand. I am ashamed. Thank you. Thank you. Mr. Captain. Thank you, Chairman, sir. Thank you for allowing me to speak on the budget session. I heard the entire speech of the Honorable Finance Minister, and like a small child who used to wait during Christmas for Santa Claus to come and put some gifts in the stocking, I waited and waited, but finally was greatly disappointed. Not because Goa did not get anything, also not because the Honorable Minister did not even take the name of my beloved state of Goa, but because in the last 11 years, you have taken away everything from Goa, be it our land, our rivers, our forest, our agricultural land, everything, including 10 plus 8, 18 MLAs in wholesale, without GST, without any taxes, lock, stock and barrel. तुमका दिसलंय की तुम्ही आमका लाचार करतले म्हण विसरते खबरो आम्ही वररात गोयकार. We are people with great heart. We know to fight a battle. Now coming to the budget, sir, the government has run out of ideas.
Budget 2026 looks like a swinging a cricket bat in total darkness. Lag gaya to lag gaya, and does not provide a single solution to India's many economic, social and political challenges. In the last 11 years, we kept hearing mission this, mission that, and this 14 point has become a huge challenge to the nation with neither any policy vision nor any political will. Today, with not much details of trade with USA, the deep and committed love for the two crony capitalists, including Adani, close friend of Vishwaguru, it has resulted in the betrayal of Annadatas of our country. We have backstabbed Annadata farmers who still await meaningful welfare support or an income security. In the 1960s, the Congress government gave the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. But this government has backstabbed both a Jawan and a Kisan. When it comes to defense, today we have taxed the pension drawn by the disability Jawans or officers, which is a sad thing because he got injured during combat operation or during conflict. There is a delay in disbursement of funds for the ECHS, and that has affected the treatment of our veterans and their families. Inequality has surpassed the level seen under the British Raj, but the budget does not even mention it or provide any support to SC, ST, OBC, EWS and minority communities. Yesterday, after 43 days of chain hunger strike, Amche Warrat Goinkar, belonging to the ST community, won a battle of opposing the construction of a mall close to the tribal land and a hotspot of diversity. As far as health is concerned, the South Goa District Hospital is having shortage of doctors, nurses, equipments, and most cases are shifted to GMC, putting a huge burden on the doctors and staff of Goa Medical College. There is need to equip our primary health centers. There are funds needed to augment the water requirement, but the government is only giving approval for mega projects with swimming pools. The money bags from Delhi have marginalized Amche Goinkarang. Faulty infrastructure and corruption has led to repeated expenditure by the state government. The job scam of massive proportion has shattered the dreams of the Goan youth. The emerging scam in handing over garbage handling plants to favored corporates, be it in Chikalim or Sankwald, has led to wastage of public money with no desired results. This requires an investigation by the central government. Today, Goa government is known as the event management government by spending crores and crores and has led to a loan of over 35,000 crores. Aaj je burge goyan zalman eta te apnache takler almost 2 lakh loan given zalman eta for no fault of the child. I feel sad to state that today Goa has turned into a crime capital of the country, a drug capital, unemployment capital. Arpara tragedy which has just happened, sir, has resulted in the loss of life of 25 innocent tourists and staff. There were no licenses of the excise department, no fire clearances. There's a total law and order failure. The only focus of center is to turn Goa into a coal hub with double tracking, expansion of roads and other destructive projects meant to help Adani, who is transporting coal from Goa to other states. There is a drop in the budget for education, with implementation of NEP suffering badly. Teachers are on contract or lecture basis. Today, the exams of the 12th standard have commenced in Goa, sir. The teachers who are on contract or lecture basis, they are not sure that after this academic year, whether they will get a renewal of their contract. Kindly conclude, please. Sir, I have just started, sir. You have taken 5 minutes. The 12th standard, even staff working in various departments are having temporary jobs. The then Congress government in Goa had given Balrad buses to ensure that poor students from remote areas come to the school. Today those buses need replacement. I have been trying to meet the requirement through MP-led funds, sir. Please as far as make it brief. There are I'm concluding, sir. The Finance Commission, which had visited Goa, is living in bliss, providing absolutely no relief to Goa, which is under severe financial stress due to faulty policies. There are no jobs for the youth, employment of a youth or increasing participation of women in workforce. What is the outcome of internship or skill development scheme, sir?
poor and middle class, there is no relief from inflation, saving and falling, rising debt. Instead of focusing on actual infrastructure in Goa, we are demolishing religious places. Shri Vijay Kumar Hansdagi. Sir, I'm concluding. Last word. Sir, we need a special status for Goa for a sustainable development council. This is the only solution for my beloved Goa. नाले आमचे गोय जे वडिलांनी सांभाळून दवरला ते काबार जातले सर. कोण दूरचेला गोयकार काबार जातलो. जय हिंद, जय गोवा. श्री विजय कुमार हंसदागी. धन्यवाद चेयरमैन सर. बजट पे बोलने के लिए मुझे मौका अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से देने के लिए धन्यवाद. झारखंड बजट में हमेशा थोड़ा सा पीछे रहता है क्योंकि जो जीएसटी इनपुट के साथ साथ आपका जाकर के जो हमारे यहाँ माइनिंग की रॉयल्टीज वगैरह सब वो समय पे नहीं मिलने पे बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं. सरकार के इस बजट में स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन और सस्टेन्ड ग्रोथ की बात की गई. कॉन्ट्ररी उसके अगर हम देखें जो इन्फ्लेशन अभी आया है, ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से रुपया का जो भाव गिरा है आपका जाकर के, और गवर्नमेंट अपनी गलतियों को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है. वो लगातार फेलियर्स पे भी अपने पीठ थपथपा रही है. डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस्ड क्रिटिकल इंपोर्ट, ये सब बड़े बड़े शब्द यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं. इन 12 सालों में कितने आपके छोटे और बड़े उद्योग जो है बंद हुए, कितने आपके जो है मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हमारे देश को छोड़ के चले गए, कितने जॉब्स आपके जो है लोगों ने खोया, और उन जॉब्स ना होने की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान दी. ये सभी चीजों पे कोई भी डाटा आपका जाके सरकार पेश नहीं कर रही है. और जिस तरह से इंपोर्ट कम करने की बात हो रही है, लेकिन यूएसए ट्रेड डील के बाद जो दिख रहा है कि सरकार पूरी तरह से घुटने टेक दे रही है. पुराने साथियों से संबंध खराब कर और यूएसए के साथ जो संबंध बढ़ाने के चक्कर में जितने भी हमारे यहाँ के उद्योग अगर होंगे, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो भुट्टा का जो बाय प्रोडक्ट हो, उन सबको लेने के बाद यहाँ के फार्मर्स की क्या स्थिति होगी, उस पर कहीं कोई क्लियर इंटेंशन दिख नहीं रहा है. और जिस तरह से जो बाहर के कंपनीज यहाँ पे प्रोडक्ट डंप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि दूसरे देशों में बंद रहते हैं वो यहाँ पे हमारे देश में यूज किए जाते हैं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए हानिकारक है, खतरनाक है. हाई ग्रोथ ऑफ 7% और पॉवर्टी रिडक्शन की बात की गई है, जबकि मैं कह सकता हूं ये पूरी तरह से असत्य है. आज जिस तरह से गरीबी है, महंगाई बढ़ी हुई है, और जिस तरह से आपका जाकर के राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो किस तरह से कहा जा सकता है कि आपका जाकर के गरीबी से लोगों को बाहर निकाला गया है. पहले गवर्नमेंट जो है एक बहुत बढ़िया डाटा देती थी कि हमारे मिनिस्ट्रीज ने क्या क्या काम किया और कितना काम किया. अभी डाटा छिपाए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते हैं और लोगों को भ्रम में डाला जाता है. और जिस तरह का हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिस्टम है, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की हम बात नहीं करें, हर एक व्यक्ति इस देश में जो भी चाहे वो छोटा से बड़ा, आपका किसान से लेके गरीब कोई भी है, सबको ये अपना टैक्स देता है हर एक चीज खरीदने पे. जिस तरह से निचोड़ करके लोगों से, और जो सोशल सिक्योरिटी पे आज तक फोकस नहीं है इस गवर्नमेंट की, हेल्थ, आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, फार्मिंग, प्रोडक्शन, जो फोकस गवर्नमेंट की नहीं है, उसे दिग्भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े शब्द सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं. आज बुद्धिस्ट सर्किट की बात हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में. जिस तरह से इस पूरे देश में जो आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, जाति धर्म का जो एक सुंदर माहौल, उसे इस सरकार के लोगों द्वारा लगातार चोट करके जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा है. आज मणिपुर में जो हुआ, और इस सरकार ने जिस तरह से बैकफुट में रह करके वहां पे घटनाओं को आगे बढ़ते रहने दिया, ये यहाँ के सरकार की मनसा को दिखाता है. आज आसाम के टी ट्राइब को, चाहे हिल ट्राइब बोल करके जो वहां के आदिवासी, उनको जो उनका हक नहीं दिया जा रहा, और जिस स्थिति में वो रह रहे हैं, आज आसाम के जो मुख्यमंत्री है उनका जो जिस तरह का विवादास्पद बयान सब आता है, और उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं, बोलने दिया जाए, जिस तरह का विवादास्पद बयान आता है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के विरोध में हो, चाहे वो आपका जाकर के दूसरे दल के नेताओं के लोग के बारे में हो. विजय जी, आप भारत की पार्लियामेंट में देश के बजट पे चर्चा कर रहे हैं. सर, बजट के साथ उनके शब्दों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं. इनको तकलीफ बहुत हो रही है क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूं मैं, झारखंड की चर्चा, क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूं मैं. आप झारखंड, मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर जिस तरह से अगर
जो ट्राइब्स के ऊपर से अत्याचार हो रहा है वो बिल्कुल आपका मैं कह सकता हूं अपराध है। एक मिनट, क्या है पॉइंट आउट? जो यहाँ पे सर लोग आज विरोध कर रहे हैं, मैं सर और ज्यादा लंबा समय नहीं है हमारा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूं। 353 सर, चलिए क्या है व्यवस्था? वो ये कहता है कि जो भी इस सदन के सदस्य नहीं है या अपने को डिफेंड करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इसीलिए असम के मुख्यमंत्री के बारे में जितनी बातें कही हैं उसको एक्सपंज करिए सर। ये कृपया जो नियम 353 है सर, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है आप बैठ जाइए, जो स्टेटमेंट इंडिया के लोगों के सामने उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। एक बात सुन लीजिए, आप यहाँ पे एक बात सुन करके बात हम इस पे व्यवस्था दे दे, जो निशिकांत जी ने उठाया। सर मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। हम ठीक है, कृपया जिस व्यक्ति को सर आप लोग की बात को पूरी तरह से सुन रहा हूं, जिस व्यक्ति को सफाई देने का अवसर यहाँ नहीं है उसका कृपया नाम या उसको लेकर नहीं। मैंने नाम बिल्कुल नहीं लिया सर। अपनी चर्चा समाप्त करें। और लगातार इस देश की जो व्यवस्था खराब होती चली जा रही है, मैं यहाँ के सदन के नेता की ही बात करूंगा जो शायद डिफेंड कर सकते हैं कि हमारे चौकीदार की तरफ से हमने सुना था कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठा करके लेके चले जाएंगे। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि उनके फकीरी के चक्कर में ये देश पूरा फकीर होने के राह पे चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बीरेन्द्र सिंह जी, श्री बीरेन्द्र सिंह जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट सामान्य चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस वर्ष 26-27 में करीब 53,57,000 साढ़े 53 लाख के करीब 1,000 करोड़ के